Dr. Dobivili presents Medic Medicare IGCA 2024 Season 1, powered by Star Walker. Purana Swagata sir. Thank you so much. Our team sir, our pura team owner sir, IPL player, and players sir, I like the request sir. Our formation so we start with the first team. So, starting with the first. Let's cheer for CC Super Kings.
अरे काय कॉल कर दो अभी चालू मत
टाइम लगेगा, तैयारी करो, दिखाएगा चले लगेगा। इकडे जाणार आणि हात दाखव त्याला. अरे मग बोल काय स्विच करायला पाहिजे. दाखव तरी काय हॅलो हॅलो अरे ऑडियन्स दुकान आहे का ऑडियन्स दुकान आहे चेहरा हा तू चल ना अभी लो कुमार ऐसे कुमार एक मिनट गोल फिरा माझ्यासमोर. लगे मंदिर लगे बंद मोनी
रिसीव करेगा। जा गणेश का मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बात करता रहे हमारे टूर्नामेंट हमारे चीफ द्वारा करवाते हैं। एक इनिंग में पूरा मैच में नहीं मालूम है लिखा है पूरा टीम है एक पूरा टीम ऐकून घेऊ का? 70 टीम है, 2 रिप्रेझेंटेटिव्ह ओनर और आयकन प्लेयर्स पूरा टीम है, 2 रिप्रेझेंटेटिव्ह एक रूल्स टूर्नामेंट शूट रूल्स क्लियर केला ग्रुप व्हॉट्सअप ग्रुप आहे त्याला कसं नाही डाऊट असतं क्वेश्चन असतं ते आपण क्लॅरिफाय केलं आहे। टूर्नामेंट चालू असताना कसं नाही आपल्याला नाही आम्ही टाइम वेस्ट करणार नाही त्याच्यावर प्रति टीम 2 रिप्रेझेंटेटिव्ह होगा ओनर्स म्हणजे ओनर प्लस आयकन प्लेयर सो डिफाइन 2 रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम ईच टीम ताका वापस करणार आपल्याला असं म्हणजे पूरा टीम वाला स्टँड ला उचलून मिळेल एक्सेप्ट फॉर डोबिवली आणि ते आणि सगळे डाटा केला प्रकाश दा आहे ना तिथे यार मला तुमचा मराठी तुला चिपकवलाय बरोबर आहे ना हे दाखवतो थोडं ते
पहिल्या मॅचसाठी आम्ही ऍडजस्ट करू फक्त तुम्ही नियम सांगा ना आम्हाला काय या ना. Firstly, we have for tournament manage course खातीर न्यूट्रल अंपायर्स अपॉइंट केलेले आसा. श्री अमित डांगरे, श्री अभय पातोले, श्री सुदीप आंबावणे आणि श्री बाला एकारी. अंपायर येईल आसाची दोन रिप्रेझेंटेटिव्ह आवटू तांकांय रुल्स एक मंथ एक्सप्लेन केल्ली म्हूण जाल्यार आमगेल्या फुल टुर्नामेंट स्मूथ जाता. सब टीम का है? दो दो कौन नहीं आया? टीवी नहीं आया. नहीं जाएगा तो घर नहीं जा पाएगा. IGCL 2024 सीझन 1 मनोहर मामान फर्स्ट बॉल केलेला आसा. साईड सांगा न्ही गे मनोहर माम तुवें वय नो न्ही तुका नेट दिला नो बॉल काउंट करनी नाजाल्यार फ्री हिट जाता न्हू. पळय माम बॉलिंग टू कामत माम. Why man? Why ball? यस. बोलो भाई, जेपी सुन रहा हूँ. एक मिनट पहले अंपायर्स के साथ रूल्स एक्सप्लेन कर देते हैं. सारे टीम के रिप्रेजेंटेटिव उसके बाद टॉस करवा देंगे. नागेन कम इन. नागेन पिक्चर लगी हो प्लीज. पूरा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसाचे आनी टॉस एक करूया. एम्पायर आसा. अंपायर्स आसाचे. Requesting the captains of Dombivli Dorcas 7 and Nuru Supernaturals to please come ahead for the toss. Dombivli आणि NDD टीमाचे कॅप्टन्स मुखार येवका आमी टॉस करून घेवया आनी वरलेली पुरा टीमाची दोन दोन रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आसाची अलॉंग विथ दी अंपायर तांकां आमी सकयल रुल्स एक फावटी एक्सप्लेन करपाची. हांगा करूया. अंपायर्स आसाचे. अंपायर आपण सर आपण पहिल्या मॅचचं टॉस करून घेऊया. नंतर ते हां हां. गणेश माम खंय वचनाचे का गणेश मामा सांग टॉस. ये कोण करता टॉस? आदित्य असं कसं झालं? आदित्य असो 15 मिनट. आदित्य आणि लोकेश लोकेश क्या हाँ उसको वो चाहिए बॉलिंग कौन करना. अच्छा तो हाँ ओके है ना यार दिखना नहीं चाहिए ऐसा करना चाहिए. Heads is the call. Heads it is. So Andheri have won the toss.
रिप्रेझेंटेटिव्ह साईड हां 2 मिनिटं स्टार्ट करू 2 मिनिटं द्या फक्त नियम सांगा नहीं ते नियमच हाँ हाँ रूल्स बताने के टाइम पे उन लोगों का नाम हम लोग रूल्स बताएं हाँ हो जाएगा ना नियम ॲक्च्युली सांगायला ते 2 रिप्रेझेंटेटिव्हला पण बोलवले कारण इकडे 9 रन आहे मग तुम्ही बॉल पकडून बाउंड्री लाईनला टच केलं तरी रन आहे तर ते एक होऊन जाईल ऑटो कैप्टन को और हम लोग बाहर रहेगा थोड़ा इनको लेके ओके हाँ टीम रिप्रेजेंटेटिव 8 लोग सिर्फ 8 लोग. So, Andheri have won the toss and elected to bowl first. IGCL 24 Season 1 first match Dombivli Dorcas 7 versus Andheri Supernaturals. Andheri toss win झाला bowling करताना सचिन म्हणाले Dombivli is going to bat. पूरा टीमाचे representatives and हंदमुखा रेवका along with the umpires. 2 मिनट अभी हाँ लेके जाने का लेके सकल representatives हंदमुखा रेवका म्हणून विनंती along with the umpires एक पेटी पूरा जना round explain करता. खंची टीम ना अंगा DB Strikers शिवाजी पार्क किंग सर्कल एक को बैक से हाँ चालू ही है पूरा टीम रिप्रेझेंटेटिव्ह हांका रूल्स एक्सप्लेन करताना तुमगेल पूरा जाणा खातीर ऑडियन्सा खातीर एक सरप्राईज प्रोग्राम आसा हांगा बाय डोंबिवली यूथ विंग. हेलो पहला मास्क किसका जा तुम लोग गया नहीं है डीवी स्ट्राइकर का कोई जा ना भाई उधर जल्दी जा भाग के मैंडी जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनिट. डीबी स्ट्राइकर रिप्रेझेंटेटिव्ह आ रहे हैं. मैंडी जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनिट आणि खंयच्या टीम नाम म्हणजला त्यांनी वचू का म्हणून विनंती प्लीज. हां डोंबिवली यूथ विंग रेडी है डोंबिवली यूथ विंग हां सो गुड इवनिंग एवरीवन. यूथ विंग रेडी है क्या डांस के लिए आ जाओ चलो आ जाओ रेडी है ना आ गए ना सब लोग कम लेट्स चलेगा ले So the first match between Dombivli Dorcas 7 versus Andheri Supernaturals. So good evening everyone. Welcome everyone. And those who are watching on YouTube, welcome to them also. डांस परफॉर्मेंस बिफोर द फर्स्ट मैच एक डांस परफॉर्मेंस है बिफोर द फर्स्ट मैच चलो डोंबिवली यूथ विंग कम ऑन यूथ विंग फर्स्ट मॅच स्टार्ट जावची पुढे प्रत्येक टीमाचे 2 रिप्रेझेंटेटिव्स आणि अंपायर्स हांका ऑर्गनायझर्स पुरो रूल्स एक्सप्लेन करतले आसाची आणि तेंच वेळारी आमगेल सकडाल खातीर एक सरप्राईज एंट्री बाय नन अदर दॅन डोंबिवली यूथ विंग. सो कॅन वी हियर फॉर डोंबिवली यूथ विंग. थँक यू. यहाँ से ले लो एक बैट एंड बॉल गुरु एक बैट और बॉल देना 2 मिनट के लिए इन लोगों का डांस के लिए चाहिए लाके देता हूँ वापस कोई भी दे दे मतलब कोई खंचा बैट दे आणि एक बॉल दे बस बॉल उनको दे देखो भाई सबको है क्या नीला बॉल का यस बॉल भाई गो बॉल मेरी तो बॉल है चलो बोलो बॉल है जल्दी हाँ दे दे हाँ ठीक है बट वो डीजे कौन मैनेज कर रहा है मतलब साउंड कौन देख रहा है ना चलना
लवकर जा. Even before the first ball is bowled, we have a surprise. None other than Youth Wing Dombivli. Requesting Dombivli Youth Wing to please start. पूरा जन वेट करते रह सची. All of us are eagerly waiting for your performance.
जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे मुझे लगाए ताल मारा। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े वक्त मजा देखना। आज डांस करेंगे यारो, चाहे बजे सुबह के 4, चलो शर्म को गोली मारो, हर दिन को की रफ्तार। आज डांस करेंगे यारो, चाहे बजे सुबह के 4, चलो शर्म को गोली मारो, हर दिन को की रफ्तार। मजे नहीं वाली कटी की जवानी टेंशन लेगा कौन, मजे नहीं वाली कटी की जवानी टेंशन लेगा कौन। होली है राजा बाहों में आजा, जल्दी भागा बिन्नी डोर। होली है राजा बाहों में आजा, जल्दी आजा बिन्नी डोर। थोड़ा रंग घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के, कुकू में पिलाई लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, पूछो तो थोड़ा रंग घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। रजनी रजनी गड्डी लेके मैं निकला, वो गड्डी लेके, और रास्ते पर वो सड़क में एक मोड़ आया, मैं दुख दिल छोड़ आया, मोड़ आया, मैं दुख दिल छोड़ आया।
सुटका भाशिंग बांधलं तुझ्या नावाचं मी शर्यतीतून गोंधळ आता उत्तावीर झालो सुटका भाशिंग बांधलं तुझ्या नावाचं मी शर्यतीतून गोंधळ हात भरून आलो या हात भरून आलो या लई दुरून आलो या आणि करून भारी भारी परतून मारून आलो या आज संध्या परत लई जोरात रंगत आलो या संध्या गावाला झाली माझ्या लग्नाची घाई कधी बनणार तू राणी माझ्या लेकराची आई Thank you so much youth wing डोंबिवली एक पटी वापस जोरान ताळी जावका youth wing गतीरे आणि चेल्डुवाल गतीरे खास करून तो तांबडी टी शर्ट घालून आमची चेल्ले लोट म्हाका पर्सनली एक सेल्फी घेवचे आसा ओके आमगेले फर्स्ट मॅच स्टार्ट जाता डोंबिवली वर्सेस अंधेरी सुपरनॅचरल्स टॉस विन जावन फिल्डिंग लेग केलेले सर डोंबिवली बॅट्समॅन रेडी आसाची आणि ह्या एक्साइटिंग मॅचाक एक्साइटिंग कॉमेंट्री जावका ताचे खातीर आय एम पासिंग इट ऑन टू संदीप भाई एंड सुरेश भाई थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद और आर यू गाइस रेडी द फर्स्ट मैच बिटवीन डोंबिवली वर्सेस अंधेरी हियर विथ मी इन द कमेंट्री बॉक्स सुरेश भाई इज विथ मी अच्छा okay so I would request 2 extra players to be in the commentary box जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है वो कमेंट्री बॉक्स में आएंगे जी हर मैच के लिए हर इनिंग करके नहीं हर मैच में हर टीम के 2 रिप्रेजेंटेटिव को आपके पास रखें सो दैट प्लेयर का नाम वगैरह जानने के लिए जो भी स्कोर बोर्ड लिख रहे हैं उनके लिए दिक्कत ना हो धन्यवाद ओके तो दोनों टीम के खिलाड़ी एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आपको तुरंत ही आना है मैच की शुरुआत भी होने जा रही है और कमाल का परफॉर्मेंस हमने देखा कमाल का डांस देखा इनॉग्रेशन सेरेमनी भी अभी हुआ जबरदस्त मजा आया तो अभी यहां पर मैच की शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहला मुकाबला होने जा रहा है शुरू और अंपायर्स भी हमारे तैयार है अभय पाटोले सर और उनका अमित डांगरे अंपायर की भूमिका में हम देखेंगे तो दोनों टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए डोंबिवली के एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पर आ चुके हैं अंधेरी के जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी होंगे प्लीज आइए यहां पर सो वेलकम अगेन IGCL 2024 शेख हल थोड़ा सा हल्का शेख हल टेस तो हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है सूरज जी वेलकम सूरज जी Medicare IGCL 2024 Season 1 powered by Star Walker GSB टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट तुम सगळे काही स्वागत करतोस टायटन स्टेडियम डोंबिवलीच्या या एक सुंदर जवळ आशिल्ल्या स्टेडियमांतू 2 दिसाच्या टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट चलतरस 8 टीम्सां मध्ये जावच्या एक क्रिकेट बॅटल खंयची टीम या एक टूर्नामेंटाचे चॅम्पियन्स जावन IGCL ट्रॉफी 2024 लिफ्ट करता म्हणून पळोवका लायक एक अद्भुत जावन आशिल्लो दीस सुंदर जावन आशिल्लो ग्राउंड पिचय तितले लायक आस कंडिशनय लायक आस क्रिकेटाक एक अनुकूल वातावरण सृष्टी जाला म्हणून म्हाका दिसता पळोवया फर्स्ट मॅच स्टार्ट जावचे थोडे वेळ आस Dombivli Dorcas will play against Andheri Supernaturals
in the very first match of IGCL 2024. So या एक टूर्नामेंट वॉच करते असते सक्कड विवर्सक वापस एक मिनिट वेलकम करते असती तशीची यूथ ऑफ GSB यूट्यूब चॅनल अंतुई तुम्ही आज नेर प्रसार पळवत तंतुई वॉच करते असल्या सक्कड विवर्सक आमगेल्या GSB मंडल डोंबिवली रजिस्टर्ड अंगल तर्फे हार्दिक जवनशिला स्वागत सुस्वागत। फिर से सभी का हार्दिक स्वागत। तो डोंबिवली के टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पर आ चुके हैं, तो मैं अंधेरी टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज आप आइए कम बॉक्स में। मैच की शुरुआत होगी, बहुत ही जबरदस्त ये आयोजन, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अंधेरी के टीम के प्लीज एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपको कम बॉक्स में आना है प्लीज। Andheri Supernaturals team on chair, 12th man, you are requested to come to the commentator's box to assist our scorer. Your presence is required here urgently, so wherever you please come to the commentator's box as early as possible. GSB Mandal Dombivli registered presence IGCL 2024 Season 1. The cricket battle is going to start now. The very first match of the tournament will be between Dombivli Durkes versus Andheri Supernaturals. The news from the center is Andheri Supernaturals have won the toss and they have decided to field first here. So I request the players of Andheri Supernaturals to enter into the ground immediately. The umpires are ready. And also, Andheri 12th player, you are requested to come to the commentator's box immediately. We are waiting for you. So wherever you please come to the commentator's box. The two umpires officiating for this match will be Abhay Patole versus Amit Jangre. They are going to officiate the first match of the tournament. Andheri Supernaturals, let us not waste the time. We request you once again to enter into the ground to set your field placement. We are already delayed by 2 hours, so we don't want to waste the time unnecessarily. So all your cooperation is very much appreciated here. IGCL 2024 Season 1 title sponsor जाऊन Medet Medicare, and this tournament is powered by Star Walker. Ground चार सुते colorful advertising boards तुमका पोचे मिळतेस. या एक advertising board देऊन सहकार दिलेला आहे. सक्कड donors and sponsors आमगेला GSB मंडल डोंबिवली रजिस्टर्ड हाजी हृदयपूर्वक हार्टफेल्ट थैंक्स संचक इच्छिपोतसती. मैच स्टार्ट जाता. डोंबिवली दुर्केस will be playing against Andheri Supernaturals now. Last call for the Andheri team. Andheri Supernatural team, please send your representative into come box. Both the batters are on the ground, Pratik and Pratik Prabhu. तो
तो स्ट्राइक पर रहेंगे प्रतीक। देखो जल्दी मैच स्टार्ट करका. So everything seems to be ready here. We are all set to witness the first match of the day number 1 of this Medicare IGCL 2024 season 1 powered by Star Walker. Inter GSB Cricket League Season 1 प्रारंभ जते से first over first match first tournament at first match Dombivli Durkes 7 will be playing against Andheri Supernaturals. So match start जते से IGCL 2024 अच्छे first match at first ball गलो का bowler ready जल्ला तशीची अम्यलोटो commentary box से सती Sandeep Bagul who will be the Hindi commentator who is going to start the commentary in Hindi language. Very warm welcome to you sir. Thank you. तो यहाँ पर गेंदबाज अपने गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है आदित्य और उनका सामना करेंगे तो यस शुरुआत होने जा रही है और ओवर टू टीजी. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So here we go. गेंदबाजी मार्ग पर आदित्य और उनका सामना करेंगे प्रतीक प्रभु. पहली गेंद और बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल लिया है सीधा. बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक. 6 रन. कमाल का स्ट्रोक. स्ट्रोक. बहुत ही जबरदस्त छक्का लगा दिया मिड विकेट के ऊपर से और ये गेंद इतनी ऊंची गई जिसे एयर हॉर्सेस भी हाथ लगा सकती थी. कमाल का स्ट्रोक.
पहले ही गेंद पर छक्का लगा दिया है और सिक्सर के साथ शुरुआत की है, यानी कि खाना परोसने से पहले ही स्वीट डिश आ गई। क्या बात है। गेंदबाज फिर से अपने गेंदबाजी मार्ग पर। अगली गेंद इस बार बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं आई, लेकिन मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है और रनआउट का मौका मिल सकता है और ये बच गए। बहुत ही जबरदस्त थ्रो किया था, स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज काफी आगे आए थे, लेकिन तुरंत पीछे मुड़े। विकेट कीपर हाथ में नहीं ले पाए उस गेंद को और सम पर नहीं लगा पाए, बच गए, भाग्यशाली रहे। और कॉलिंग जरूरी होता है रनिंग बिटवीन द विकेट में। यस, नो एंड वेट, these three things are very important while running between the wicket. इस बार ये गेंद थोड़ी सी दीप गति की आई, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। एक्स्ट्रा के तौर पर रन मिलता हुआ और इस समय स्कोर इस एक्स्ट्रा की मदद से पहुंच चुका है 7 पर। 7 रन बन चुके हैं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, बहुत ही जबरदस्त निर्णय अंपायर द्वारा। इस बार तो गेंद को खेल दिया है, हमारे गेंद है, क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक टपक खाती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा पार, बहुत ही बढ़िया चौका। वाह, क्या स्टार्ट है। यहां पर शुरुआत जबरदस्त की है इस बल्लेबाज ने। पहली गेंद पर छक्का लगाया, उसके बाद जो है थोड़ा वक्त लिया, उसके बाद खेल दिया इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। एक तगड़ी शुरुआत यहां पर कहनी होगी। निश्चित तौर पर अभी बल्लेबाज काफी आत्मविश्वास में नजर आते हुए। आदित्य फिर से एक बार अपने गेंदबाजी मार्ग पर। इसके बाद ये कमाल की उछाल थी, अनइवन बाउंस। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर एक बार अंपायर ने वार्न किया है। उछाल बहुत बढ़िया थी वहां पर, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए और दोनों बल्लेबाज इस समय अपने आप से बातचीत करते हुए। और एक अच्छी गेंद, डॉट बॉल। पहला ओवर ये प्रगति पथ पर है। इसी बीच अगली गेंद फिर से एक बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, चूके बीट हुए और ये जो कमाल की गेंद फेंकी थी बिल्कुल स्टंप के ऊपर से विकेट कीपर के हाथ में गई और मौका नहीं दिया। फिर से एक बार बीट किया बल्लेबाज को। पहले ओवर के बाद टोटल कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर।
तो गेंदबाजी के लिए अभी विक्रांत आ चुके हैं। आदित्य ने पहले ओवर में 11 रन खर्च किए हैं। देखना होगा विक्रांत किस प्रकार से यहां पर गेंद फेंकेंगे। और स्ट्राइक पर है प्रतीक। हालांकि दोनों बल्लेबाज का नाम सेम है। नर की पहली गेंद कलाइयों के सारे मोड़ दिया स्क्वायर की ओर और एक रन लेने का मौका मिला है। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। पहली ही गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। चाहिए वैसे बल्ले पर नहीं आई, लेकिन अच्छी फील्डिंग द्वारा वहां पर गेंद को रोका गया और एक रन प्राप्त हुआ है। बिल्कुल एक एक दो रन से कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा स्ट्रोक खेलने नहीं दिया जाएगा गेंदबाज द्वारा। स्ट्राइक को रोटेट करने के बाद प्रतीक, जिन्होंने पहले ओवर में कमाल की शुरुआत करके दी थी, इसी बीच ये देखिए बैकफुट पर जाकर खेल दिया है, लेकिन एक रन लेने का मौका मिला है। काफी बढ़िया लाइन और लेंथ इनके पास है। गुड लेंथ पर पिच करने के बाद गेंद को बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक पर। ये देखिए उछालती और हवा में गेंद है, लेकिन पॉइंट पर खिलाड़ी जो एक टिप के साथ गेंद को रोका गया और फिर से एक बार मौका मिला है एक रन बनाने का। अच्छी गेंदबाजी करते हुए ये विक्रांत माफ कीजिएगा, अच्छी लाइन और लेंथ है। इसी बीच गेंद हवा में है, क्या ये खिलाड़ी ले पाएंगे कैच को? ओ माय गॉड, ये क्या छूटा है? सपना टूटा दिल टूटा। ओहो हो, ये क्या छूटा? हवा में गेंद थी, काफी देर तक नहीं जज कर पाए और जीवन दान मिलता हुआ। वाकई में एक आसान सा मौका गवा दिया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये ओ माय गॉड, ये तो गेंद वही है ऑल द वे फॉर द बाउंड्री। बिल्कुल ये ना चौल बे, क्या कमाल का ये स्ट्रोक था। रोकना आसान था, लेकिन एक हाथ से नहीं रोक पाए गेंद को और गेंद गया है चौके के लिए। 4 रन। इससे पहले कैच छूटा और इस बार चौका छूटा। इस बीच ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये शायद मौका है रन आउट का और ये पहले विकेट का पतन। कमाल का थ्रो और ये आउट। दीजिए। My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Hey, rise up, don't falling down again. Rise up, long time I broke the chains. I tried to fly a while so high, direction sky. Hey. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Hey. दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इस समय स्कोर हो चुका है, कुल मिलाकर स्कोर हमारे अपडेट करेंगे। 19 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में आदित्य ने 11 रन खर्च किए थे।
तो दूसरे ओवर में 8 रन आए हैं, कमाल का ओवर रहा और साथ ही साथ विकेट भी यहां पर मिला है रन आउट के तौर पर। बहुत जबरदस्त ये गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा विक्रांत द्वारा। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, रोहित गेंदबाजी के लिए। लोकेश के लिए गेंद और ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने इशारा करते हुए इसे वाइड घोषित किया है। एक्स्ट्रा के तौर पर रन, अब तक 2 वाइड गेंदें फेंकी है, 2 एक्स्ट्रा रन प्राप्त हुए हैं। इसे भी उछाल थी और लेकिन देखना होगा, हुक करने का प्रयास था, विकेट कीपर तुरंत वहां पर आए, गेंद पर झपटे और 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इस 1 रन के मदद से स्कोर में बढ़ोतरी और इस समय स्कोर हो चुका है 21। फील्डिंग की जमावड़ी को बदलते हुए 4 खिलाड़ी रखे गए हैं ऑफ साइड पर। प्रतीक के लिए अगली गेंद, ये देखिए, पावरफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल, एंजॉयफुल, 2 रन। मिर्ची, हाँ मिर्ची, मिर्ची मिर्ची मिर्ची, नजर तिरछी, शक्ल फिल्मी, हरकत फिल्मी, गर्ल यू फिल्मी, तेरा भी तो हाल है, हर गली में स्टार है, पूरा बवाल है, शक्ल पे स्टार है, दिल में से प्यार है, कॉल 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 जरा कॉल कॉल, वो लाइन पे, ओ माय गॉड। तो 2 रन प्राप्त हुए हैं। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, डिक्लेयर जोन में गेंद गई और इन 2 रनों के मदद से 23 स्कोर हो चुका है। इस बार ये गेंद हवा में और ये बहुत ही जबरदस्त कैच, दूसरे विकेट का पतन। गड्डियां उच्चियां रखियां नोरा वो जट दे पिछे पर तू मैनू बाली जचदी लक ते गुच्ची दा बेल्ट तू पाया जट्टा ने कोड़ तन बस पाया वे अलगी टोर हुंदी साडी ओ गड्डियां उच्चियां रखियां नोरा वो जट दे पिछे पर तू मैनू बाली जचदी लक ते गुच्ची दा बेल्ट तू पाया जट्टा ने कोड़ तन बस पाया वे अलगी टोर हुंदी साडी बहुत बढ़िया गेंदबाजी होती हुई यहां पर खेलने के लिए मजबूर किया था प्रतीक को और प्रतीक ने वहां पर प्रहार करने का प्रयास हवा में खेल दिया और कमाल का कैच लिया। आदित्य भट्ट ने बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा है। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर गुरुदास आ चुके हैं। बला उठाया था, प्रहार करने का प्रयास, चूके बीट हुए। कमाल की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी हो रही इस समय, कंजूस गेंदबाजी और महंगाई के जमाने में ऐसी गेंदबाजी बहुत बढ़िया। क्या वाकई में कमाल की गेंदबाजी करते हुए ये गेंदबाज मौका नहीं दे रहे हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। पूरी तरीके से बीट किया, फिर से एक बार सही जगह पर पिच करवा रहे इस समय। ये हल्के हाथों से ढकेल दिया, देखना होगा। ऑन साइड पर तेजी के साथ 1 रन को पूरा किया है और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। कमाल का ओवर रहा है इस गेंदबाज द्वारा और टोटल स्कोर
स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर के बाद। पहले ओवर में 11 रन आदित्य ने खर्च किए थे, उसके बाद विक्रांत ने 8 रन खर्च किए और इस समय अभी केवल 5 रन इस ओवर में आए। रोहित द्वारा केवल 5 रन आए और उन्होंने विकेट भी चटकाया। आदित्य ने बहुत ही जबरदस्त कैच प्राप्त लिया था। तो कमाल का ओवर ये रहा। 3 ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर 24 2 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर अभी गुरु है और गुरु को होना होगा शुरू। बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे। राकेश की पहली गेंद और ये देखिए बहुत अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, बल्ले पर नहीं ले पाए और सही जगह पर इस समय पिच करवाया गेंदबाज ने। पहली ही गेंद डॉट के साथ शुरुआत की इस गेंद ने। बैकफुट पर जाकर खेल दिया स्क्वेयर के ओर और तेजी के साथ 1 रन बाकर पूरा किया है। टोटल स्कोर हो चुका है अभी 25 रन। ओके, चेक करेंगे और आपको बताएंगे। नो बॉल, ये नो बॉल थी। और अगली गेंद होने वाली है फ्री हिट।
तो अगली गेंद होगी फ्री हिट और फ्री हिट का सामना करेंगे बल्लेबाज। तो आने वाली गेंद होगी फ्री हिट और देखना होगा कि बल्लेबाज इस फ्री हिट का फायदा उठाते कि नहीं। चलिए गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। तो आदित्य भट्ट यहां पर गेंदबाजी करेंगे। फ्री हिट का सामना करने के लिए तैयार। हो ये फ्री हिट वाइड गेंद है तो फ्री हिट का सिलसिला जारी रहेगा। यस, फ्री हिट विल बी कंटिन्यूइंग। Request captains of Thane Titans and Sirsi Super Kings to please come near the DJ console. Thane Titans आणि Sirsi Super Kings चे captains टॉसा गतीला DJ console वाला पे तरह से। तो फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए, बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद तो नहीं आई। कमाल की गेंद फेंकी आदित्य ने और केवल एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। टोटल स्कोर 28 हो चुका है। अभी भी 4 गेंदें बची है इस ओवर की। स्ट्राइक पर इस समय है गुरु। ये देखिए, ओहो, ये गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। थैंक यू। कमाल का चक्का लगा दिया। बेबी को बेस पसंद है और गुरु को सिक्सर पसंद है। क्या बात है, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला। फोटोग्राफर इस बीच फिर से एक बार उठा कर खेलने का प्रयास, लेकिन अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। तो फोटोग्राफर जहां पर भी होंगे प्लीज ट्रॉफी के पास आइए। ये तो गेंद चली गई है बाहर, आउट ऑफ द पार्क, डिक्लेयर जोन में। 2 रन मिलेंगे 2। गुरु का व्यक्तिगत स्कोर हो चुका है अभी 10। इस ओवर की आखिरी गेंद। और ये बहुत ही कमाल का ओवर रहा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 4 और 36 रन हो चुके हैं। 36 आफ्टर 4 overs with the loss of 2 wickets।
जैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी खाली सी जोड़ियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लड़ी कोइयां केसरिया तेरा इंडिया पिया लग जाऊं जब मैं हाथ लगाऊं हिंदी से सारा तेरी फिक्र में मैं सारी तेरी खैर बनाऊं केसरिया तेरा इंडिया पिया लग जाऊं Second match between Thane Titans and Sirsi Super Kings. Toss Jalela sir. Sirsi Super Kings have won the toss, elected to bowl first. Thane Titans will be batting first. Thank you, Sandeep. So, hello and welcome back to this Palawa Titan Stadium here at Dombivli. So, you are watching the first match of this IGCL 2024. 4 overs gone, runs on the scoreboard is 36. Aditya Sakardande is a new bowler, ball is in the air, it could be out of the field, it is underneath it, and my goodness, has put down that catch. The ball has slipped away from the hands of the fielder there. The batsman wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. As a result, the ball was quite high in there for a while, and there was a long chase for the fielder. Unfortunately, he was not able to take that catch. Fortunately, the batsman survives here. We come back to Aditya Sakardande. The ball takes the leading edge of the bat, and wicket keeper Vinod Nayak, Dr. Vinod Nayak makes no mistake, caught it beautifully. One more wicket has gone down for team Dombivli, Durke 7. ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਾਇਓ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਨਾਇਓ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਬਸ ਚਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ So Aditya Sakardande is a very, very successful bowler there who has picked up the important wicket of Lokesh. Aditya Sakardande is an experienced all-rounder cricketer, the captain of the team under the Supernaturals. Aditya Sakardande, the captain, after winning the toss, he had decided to field first here. And meanwhile, Dombivli Durkes are batting first, and they have scored 38 runs with 3 wickets down. We are in the 5th over of the innings. Once again, the bowler Aditya Sakardande is going to continue the over from the pavilion edge. And the new man in is Vinayak Paik, another technically sound batsman. Vinayak Paik is joining with Gurudat Shanai. They need to go for big hits now in order to exert their score, because we are in the 5th over of the innings. Aditya Sakardande is making some change in the field placement here. We come back to Aditya. Left arm round wicket passes the umpire. Batsman gently pushing the ball to the onside, just giving the touch and going for a cheeky single before the wicket keeper comes across and collects the ball. There is ample time for the batter Vinayak Paik to pick up an easy single here. So with that single, Vinayak is straight away off the mark. He opened his account, and Gurudas Shanai will take the strike now. Gurudas Shanai is batting on 10 runs after facing 9 balls. And as I mentioned earlier, they need to go for big hits now. Goes for a switch hit here, but he has not found a complete success in playing that one. Not from the middle of the bat.
Before the fielder collects the ball, these two batters were very quick and they have taken a single comfortably here without any problem. A good running between the wicket here. One more single has been added to the total of team Dombivli Dorke 7, which takes their full score to 40 on the board. 40 for the loss of 3 wickets. 2 more balls to go of this over now. Left-hander is on strike. Vinayak punched the ball onto the onside. Will they get second run? No. A good piece of fielding there. Very, very good piece of fielding there by the fielder. There was no chance of going for the second run for the batter here. So the batter Vinayak Pai will have to satisfy with just a single here. One more single has been added to the total of team Dombivli Dorke 7, and their score now moves on to 41 on the board. Aditya Sakardande is bowling with good line and length. He's not going for, he's not giving any room for the batters to play here. There could be a chance of run out. Will out to wait. Direct hit, and direct hits are always dangerous. The batsman was looking for a single here. That was a risky run, and very good presence of mind of the fielder there. He was a very quick, brilliant piece of fielding there by the fielder. He threw the ball quickly to the bowler's end, and direct hit has happened, and team Dombivli Dorke 7 have lost another wicket here. G minor. Humbo truck ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਕੋਫੇ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਠੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ ਆਹ ਦੇਸੀ ਜੇ ਗੀਤਾ ਟਰੈਪ ਜੀ ਬੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਢ ਗੱਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਨ ਮੁੰਡੇ So that's a pretty good over there by the bowler Aditya. That over has come to an end. Okay, now 5th over is going to start. A 6th over, I think it's a challenge over. So special 50-50 over rule has been added here. This is going to give an exciting twist to the matches. The challenge score is 10 runs. The batting team has aimed to get 10 runs in this over. Meanwhile, they lost their first wicket in the form of run out in the very first ball of that over. The batting team has aimed to score 10 runs in this over. That was a challenge score. Meanwhile, in the very first ball, they lost their wicket in the form of run out. So batting team can choose either the 5th or 6th over as their 50-50 over, and the batting team may wait to see which bowler is selected before calling for 50-50 over. Meanwhile, that was a very, very risky run. Finally, fortunately, the direct hit has not happened here. Batsman is well home. They have taken only 1 run here. 4 more balls are remaining in this challenging over. They were able to score only 1 run so far in this over. 10 runs they will have to score. That is, they are going to aim to take 10 runs at least. That means 9 more runs required for them to complete that challenge score. Meanwhile, that's a very, very fine delivery there which beats the batter here. The ball went straight to the hands of the wicket keeper Aditya Sakardande. The ball pitching on the off stump and batsman not getting the line of the ball.
On that occasion, wicketkeeper Aditya collects the ball behind the stumps, so no runs taken. Dot delivery there by the bowler. We come back to Vikrant Prabhu now. Right arm OT passes the umpire. That's again a very good delivery, flighted delivery, and uneven bounce there. The batsman beaten comprehensively. The pace deceives the batsman. Ball betrays the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage here. So far, everything is good going for the fielding side here. The bowler Vikrant is doing an excellent job in this challenge over. Meanwhile, ball is in the air. It could be out of the fielder is underneath it, and he's out. The batsman wanted to pull the ball onto the onside, but not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands. There was not much of power behind the shot. As a result, the man standing at mid-wicket region makes no mistake. Caught it beautifully. DJ. असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। So as per this 50-50 challenge over rule, if the batting team achieves the challenge, 50% of the challenge score plus the run scored in that over will be added to their total. Meanwhile, the bowler is bowling with a very good line and length. He's not giving any room for the batter here, and that's a dot delivery to end the over. Be the last one standing, or show me you could be the one. So very successful over has come to an end now. Umpires, please wait for a while. We need some clarification. Umpires, please wait for a while. We need some clarification regarding the number of runs scored in this over and the total score. So some kind of discussion is going on here. The score on the runs on the scoreboard is now 42 for the loss of 5 wickets. We can continue the match. Yes, we can proceed. Thank you. Yes, everything is sorted out now. Score is 42 for the loss of 2 wickets. So here is the last delivery, last over of the innings now. The final over of this match. It's a 7 overs game. By signal there by the umpire. The two umpires officiating for this match are Abhay Patole and Amit Dhangre, very experienced umpires from Mumbai. They are officiating for this first match of this IGCL tournament. Dr. Vinod Nayak for the second time in this over. Batsman goes for a big one. I think it is going to be out. Simple lollipop catch. Vignesh Shonai, the man standing at long origin, makes no mistake. So Dr. Vinod Nayak has given a breakthrough here. He has picked up that important wicket in this last over. You just want love.
थोड़ा संकी करो मन की बेबी गाना लगा दे थोड़ा फंकी नहीं मन की नहीं धन की ये बात है तेरे तन की पागल हो जाऊं जब तो हो रूबरू ना लंबा ऊंचा So after 6.2 overs, 43 runs for the loss of 7 wickets, we come back to Dr. Vinod Nayak, one of the senior most player in the history of GSB tennis ball cricket. An all-rounder cricketer. Again the ball is in the air and Dr. Vinod Nayak himself takes the catch. Second wicket for him and he's on hat-trick now. Thank you, DJ. So 2 consecutive wickets for Dr. Vinod Nayak. He's on hat-trick now. Let's see whether he will be able to take the hat-trick wicket in this final over of the innings. He's a magical bowler. Whenever Dr. Vinod Nayak comes in, something different will happen. Well, the ball takes the edge of the bat and Dr. Vinod Nayak has picked up the 3rd wicket here. First wicket, first hat-trick wicket in this IGCL 2024 presented by Dombivli, GSB Mandal Dombivli. तेरी मम्मी की जय क्या चीज बनाई दूध पे जैसे आई हो मलाई चिटी चिटी बैंग बैंग चिटी कलाई तेरी आग लगा दे जैसे दिया सलाई मैं इंटरनेशनल. So Dr. Vinod Nayak, he is the first man to pick up the hat-trick wicket and that too in the very first match of this tournament. Straight to the field, there could be chance of run out and I think that's all over for the batsman. One more wicket has gone down. What an over for team Andheri Supernaturals. That's a brilliant piece of fielding there by the fielder. Collected the ball and threw it very quickly to the wicketkeeper, and wicketkeeper Aditya Sakardande made no mistake in taking off the base. The batsman was short of his ground, and team Dombivli Dorkes are losing their wickets in the regular intervals. Wickets are falling like pack of cards for Dombivli Dorkes here. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो गाना चला दो गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो गाना चला दो गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो गाना चला दो गाना चला दो डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे थोड़ी वॉल्यूम So that's the end of the innings of Dombivli Dorkes 7. After putting into bat first, Dombivli Dorkes have now scored 43 runs. That means 44 is the victory target for Andheri Supernaturals to win this match in 7 overs. This is not a difficult target for the team because they've got a very good batting lineup. But only thing is the opener batsmen will have to play with cool mind. They can't afford to lose any more wickets early in the innings. They must keep their wicket intact. And as far as Dombivli Dorkes is concerned, the bowlers must be very, very smart. They should bowl very hard. And if they can pick up 1 or 2 wickets early in the innings, definitely they can come back into this game and they can put the pressure on Andheri Supernaturals team. Let's see who is going to win this match. And I would like to really appreciate Dr. Vinod Nayak in that final over. He just conceded 1 run and he's picked up wickets also, and that too an hat-trick wicket. And he has made a record in the history of IGCL by taking that hat-trick wicket in the very first match of this
tournament. So 44 is the target. Before the next inning starts, it's time for us to change the commentary language. I got Mr. Sandeep Baguli is here with me in the commentary box, who is once again joining in the commentary box. Over to you, sir. थैंक यू सतीश जी. सुरेश जी माफ कीजिएगा. अंधेरी सुपर नॅचरल्स तुमगेले ओपनर्स जल्तीतले बगी ग्राउंडाका एंटर जावका दयकोर्नु लेट कोरनाकती जल्तीतले बगी मैच प्रारंभ कोरका. ओपनर बैट्समैन प्लीज एंटर इनटू द ग्राउंड इमीडिएटली. फिर जल्द से जल्द दोनों बल्लेबाज मैदान पर आइए प्लीज. 44 रनों की चुनौती यहाँ पर रखी गई है और देखना होगा यहाँ पर बल्लेबाज पहले ओवर में किस प्रकार से शुरुआत करेंगे. लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि जो हैट्रिक आज लिया है इस टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में, कमाल का ये गेंदबाजी का प्रदर्शन. चलिए प्लीज बैट्समैन, आपके पास केवल 1 मिनट है अभी. आपको तुरंत ही मैदान पर आना है प्लीज. प्लीज कोऑपरेटर्स एज फार एज टाइमिंग कंसर्न. दोनों बल्लेबाज से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपको तुरंत ही मैदान पर आना है. अंधेरी सुपर नेचुरल के लिए यहां पर चुनौती है 44 रनों की. द टारगेट हैज सेट 44. So both the batters are heading towards the crease. Aditya and Rakesh, both the batters have already arrived, the opening pair, and it will be very interesting to see this match. The target in front of them is 44, and it will be very interesting to see the initial overs. Well, we had seen in the previous inning, the last over, Dr. Vinod has claimed the hat-trick, and that is the first hat-trick of this tournament. So fielding already they have set, and a batter is getting ready on strike now. Aditya will be on strike. Along with him, Rakesh will be on the non-striker end. Guru Das is going to introduce. So for Aditya, there are 3 fielders are placed on offside. Here we go. The first ball of the over in the air, and that's, oh my God, that's taken. What a start! The first wicket on its very first ball of the over. मेरे दिल दे इशारे, oh my God, oh लगती हारी, मैनू भी ओ कर गई नारी, पर किल करना उसकी हॉबी. Madly searching for this fine shorty, in my world the #1 hottie, everywhere she make him go crazy, पर किल करना उसकी हॉबी.
new batsman. This is gentle push on offside. Will be going for the. Oh, could be a close. Directly to have been a very close, but that didn't happen. He aimed on the stumps, but he is very lucky. The man was running at danger in, survives, and he is very lucky. 1 for 1. What a throw, but it was not on the stumps. Just missing the stumps. Rotating the strike, and now Rakesh will be on strike. This is really a great start. That was edge, and oh my God, wicket keeper. That was quite difficult for the wicket keeper, but it's really a great credit goes to the bowler. The way he is bowling right now, it's superb. Both the batters are having word with each other. Somebody has to hang around because the target is of 44. And what a start here for the bowler. This one again wanted to hit and not able to connect. Beats the batter, and once again a dot ball. So he is producing them some dot deliveries right now, and that is going to be a very, very difficult for the team. That's in the air, but that goes in the declare zone, and the umpire says it's 2-1. So the 2 runs will be added, and the score moves up to 3. Please get the new ball. Score moves up to 3. And there is Supernaturals. They have lost 1 wicket on the very first ball of the over. Once again pitching in the right area, and that is the right area where the batters are getting problem. That's the first end of the first over, and what a start, what a great start for the team Dombivli, Dorcas 7. Its total score is 3 for 1. Next match, match number 2 is going to be between Titans versus CC Super Kings. तो इस बार ये शुरुआत है वाइड के साथ की है. लेग स्टंप से काफी बाहर थी और अंपायर ने इसे घोषित किया वाइड. एक्स्ट्रा के तौर पर रन आता हुआ. 44 रनों की चुनौती का पीछा करते हुए अंधेरी सुपर नेचुरल्स की टीम 1 विकेट उन्होंने गंवा दिया है. यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की अपेक्षा है. इसी बीच ये बहुत ही कमाल की गेंद थी. ये बिल्कुल बल्लेबाज चौंक गए. चौंकाने वाली गेंद थी. बिल्कुल सही जगह पर गेंद को पिच करवाया इन्होंने और मौका नहीं दे रहे फिलहाल इस बार बड़े स्लो खेलने का, रन बनाने का.
यहां पे गेंद, क्या कैच होगा? बहुत ही बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच और विकेट का पतन, 2 नंबर का विकेट। अरे यार कोई एसी चला दो यार। सही है सही है। बाकी सारी फेक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी, पास आऊं तो सेक लगे। अरे इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। कैसी गुंडागर्दी है, बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है। कमाल का कैच लिया है, खेलने के लिए मजबूर किया और कैच लिया वहां पर। अभिषेक ने कमाल का कैच लिया। दूसरे विकेट का पतन, पहले ओवर में 1 विकेट, दूसरे ओवर में और 1 विकेट। इसी पीछे हवा में गेंद, क्या ये कैच होगा? ओ माय गॉड, ओ बहुत ही जबरदस्त कैच, विकेट नंबर 3 गिरता हुआ, कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग और तीसरे विकेट का पतन। तीसरे विकेट का पतन, कमाल का कैच, डॉक्टर विनोद को भेज दिया डगआउट की ओर। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर आ रहे हैं और उनका नाम है, नए बल्लेबाज मैदान पर। काफी कमाल की ये गेंदबाजी का प्रदर्शन, एक के बाद एक विकेट चलता जा रहा है, तू चल में आया। प्रथमेश नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर। कमाल की गेंद, जबरदस्त गेंद, उछाल थी, अनइवन बाउंस और बल्लेबाज ने उस गेंद पर कोई स्ट्रोक नहीं खेला। लाइन और लेंथ कमाल की है, मौका नहीं दिया जा रहा है बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। वाकई में यहां पर प्रसाद जो है जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए प्रभावित किया उन्होंने अपने गेंदबाजी से। ये कट किया लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं है। कमाल की फील्डिंग, वाकई में फील्डिंग तो जबरदस्त है, रन लेने का कोई मौका नहीं। ये दूसरा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, अब तक केवल स्कोर हो चुका है 4 और विकेट गिर चुके हैं 3। ये समझ में नहीं आ रहा है रन विकेट का पीछा कर रहे हैं कि विकेट रनों का पीछा कर रही है। इसी बीच लॉक होल में गेंद, फिर से एक बार हवा में गेंद, क्या ये कैच होगा? देखना जरूर। और ये चौका, हक्का बक्का चौका, कमाल का स्ट्रोक। टीजे अंपायर, वो चौका था या छक्का था? अंपायर, चौका था ये? ओके, चौका। अंपायर, ये गेंद बाहर गई थी। ओके, चौका।
ओके, उसके ऊपर से गया तो छक्का हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही छक्के चौके लगाकर मैच को जिताना होगा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है और इनमें काबिलियत है, ये कर सकते हैं, ये करके दिखा सकते हैं। ओ माय गॉड, कमाल की गेंद और विकेट का पतन। क्या जबरदस्त टर्न किया है इन्होंने और बेस गिर गया है और एक विकेट का पतन। आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। ओ नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले। एवें करी ना की, एवें करी ना की, ओ एवें करी ना किसी दे नाल प्यार। मुंडिया तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुंडियार। मुंडिया तो बच के रही, तू हुणे हुणे होई मुंडियार। मुंडिया तो बच के रही। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, गौरांग को भी सफलता मिली है। कमाल का टर्न किया उन्होंने, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और बेल्स गिरा दिया, क्लीन बोल्ड करवा दिया। नए बल्लेबाज इस समय विघ्नेश। विघ्नेश हार्ड हिटर, इनमें काबिलियत है, ये बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। आज तो कमाल करके दिखाना होगा विघ्नेश को। इस बीच हल्के हाथों से धकेल दिया है, पॉइंट की ओर देखना होगा। तेजी के साथ एक रन को पूरा किया, कमाल का थ्रो किया, लेकिन तब तक पहुंच चुके थे नॉन स्ट्राइक खेल पर विघ्नेश। एक रन प्राप्त हुआ है, 28 गेंदें बची है, 35 रनों की आवश्यकता है। यह मुमकिन अभी भी है, यह बन सकती है बात, इस मैच को अभी भी जीता जा सकता है। केवल 28 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। एक एक दो रन भी आते हैं तो यह वाकई में जीत सकते मैच को। इस बार रुक करने का प्रयास देखना होगा, रन लेने का मौका, नॉन स्ट्राइक गेंद पर डायरेक्ट हिट होती यदि तो करीबी मामला बन सकता था। इस बीच अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइस के तौर पर रन। इस बीच रन आना काफी जरूरी है, फिर वो लेग बाइस से आए और या तो बल्ले से आए, रन बनाना काफी आवश्यक है। दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जामवन ने हनुमान जी को कान मंत्र दिया था, उन्होंने लंका का डंका बजा दिया था। क्या ये बल्लेबाज लंका का डंका बजा देंगे, देखना जरूरी है। ये देखिए आड़े बल्ले से हवा में गेंद, विकेट कीपर नीचे उसके और सही जगह पर थ्रो करना आवश्यक था। कोई बात नहीं, लेकिन एक एक ही दो रन आ रहे हैं। इस समय मौका नहीं दे रहे छक्का चौका लगाने का, लेकिन एक एक भी दो रन भी काफी मायने रखते हैं इस क्रिकेट मैच में। प्रथमेश की अगली गेंद हवा में, क्या ये कैच होगा, कैच के नीचे, ओ माय गॉड, ये कैच भी छूटा है और दूसरा रन भी मिला है। 3 खिलाड़ी वहां पर थे कैच लेने के लिए, कैच भी छूटा और रन भी प्राप्त हुआ। ये विकेट मिल सकता था, इतना कठिन कैच नहीं था ये, लेकिन जीवन दान मिला और इस जीवन दान का फायदा उठाना होगा बल्लेबाज को। इस समय 13 रन बन चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे फिर से एक बार प्रथमेश। ये देखिए, ये जरूर दाल में कुछ काला है। यस, ये बहाना है, जो बात बतानी थी वो बता दे गए। यस, इस रुमाल में कुछ जादू तो नहीं, कान मंत्र दिया है भाई, अभी देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बढ़िया गेंद, प्रहार करने का प्रयास, ओवर की समाप्ति और इस समय ओवर पूरे हो चुके हैं 3, स्कोर हो चुका है 13।
4 विकेटों के नुकसान पर। तो गेंदें अभी भी बची है 24, 31 रनों की आवश्यकता दीजिए। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोने। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। प्रसाद आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। 24 गेंदे 31 रन। इसी बीच ये देखिए, ये प्रहार, ये तगड़ा प्रहार है। ओहो, ये गेंद आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। चेक कर खब्बे हथ रोली, चेक कर गब्बरू दी बोली, चेक कर अख चो तू लहर, चेक कर किथे किथे लहर, चेक कर पहन कना वैलियां ना यारी, चेक कर रहदा असले ना लैस तू तैयारी, चेक कर। विघ्नेश के बल्ले से जबरदस्त स्ट्रोक, और ऐसे स्ट्रोक खेलने में माहिर है, ये विस्फोटक बल्लेबाज है। संकट मोचन क्या रहेंगे अपने टीम के लिए विघ्नेश? देखना होगा। विघ्नेश कमाल का स्ट्रोक खेला था उन्होंने। इसे एक बार हवा में गेंद एक हाथ से, ये बहुत अच्छी गेंद फेंकी थी, मजबूर किया था और सही जगह पर फील्डर भी रखा था। एक हाथ से कोशिश की लेकिन बच गए। गेंदें बची है केवल अभी 22 और रनों की जीतने के लिए आवश्यकता है 24। एक छक्के से माहौल पूरा बदल दिया है, रुख बदल दिया है मैच का। विघ्नेश के बल्ले से बहुत जबरदस्त स्ट्रोक था वो। इसी बीच आड़े बल्ले से खेल दिया है, ये टाइमिंग कमाल का है। मिड विकेट पर क्षेत्ररक्षक भी तैनात थे और तुरंत ही थ्रो किया केवल 1 रन के लिए। प्रत्येक गेंद पर रन बनाने की कोशिश इस समय जारी है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। विघ्नेश को स्ट्राइक पर रहना जरूरी है काफी इस समय। ये उछाल थी, फिर से पुल करने का प्रयास, 1 रन। तेजी के साथ भागकर पूरा किया, थ्रो किया, काफी लंबा था। लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर इस समय, और 1 ही रन से संतुष्ट। 22 रन हो चुके हैं प्रथमेश के साथ, विघ्नेश के 9। बॉल में गेंद, यॉर्क करने का प्रयास। ऐसी गेंदों पर शोक लगाना काफी मुश्किल होता है, और कमाल की ये गेंद थी, सटीक लाइन और लेंथ। डॉट गेंदों से निश्चित तौर पर प्रेशर बढ़ने वाला है बल्लेबाजों का। इस समय विकेट को बचाकर खेलना होगा, और दोनों बल्लेबाज को यह पता है कि अपने विकेट का महत्व कितना है। फिर से एक बार बहुत अच्छी गेंद, ये गेंद लुक गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई है, और इस समय 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 18 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है, और क्या कुछ होगा आगे का आंखों देखा हाल हमें माइक्रोफोन पर बताएंगे, वर्णन करेंगे सुरेश जी भट्ट। ओवर टू हिम। Carnival, the last ride, King,
तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनिए सोनिए तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी सोनिए. Thank you, Sandeep ji. GSB मंडल डोंबिवली रजिस्टर्ड अन्य प्रेजेंट करते असचे मेडिकेअर IGCL 2024 सीजन 1 पावर्ड बाय स्टार वॉकर क्रिकेट टूर्नामेंट पळयते असचे सक्कड विवर्सक वापस एक पेटी वेलकम बैक पलावा टाइटन स्टेडियम डोंबिवली तो एक टूर्नामेंटाचे फर्स्ट मैच जतरस डोंबिवली दొరికే 7 वर्सेस अंधेरी सुपर नॅचरल्स टॉस विन जाऊन त्यांनी फील्डिंग चूज केलेला आता 5 ओव्हर चॅलेंजिंग ओव्हर झाला 50-50 ओव्हर. व्हॉट इज द स्कोर दे आर गोइंग टू एम 10 रन्स ओके ಚಾಲೆಂಜ್ ಓವರ್ एक कंचिन मन ट्विस्ट इत्त या मैच अंत पळक बौलर रेडी जाला बौलिंग करूक पविलियन एंड आदोकुनु लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाऊन करार बॉल विघ्नेशन ऑन साइड मार्च प्रयत्न केला बट बॉल ऑफ साइड गेला फिल्डरान येऊन बॉल फील्ड कोच पुढे 1 रन कंप्लीट केला विघ्नेशन 1 रन काढो नॉन स्ट्राइकर कंगा स्ट्राइक दिला पळवा भरलेला 5 बॉलांत त्यांनी कसं करतात म्हणून 44 टार्गेट मिळाले अंगा टीम अंधेरी सुपर नॅचरल्स अगेन्स्ट डोंबिवली दोरकेस फील्डिंग थोड़े चेंजेस करते हैं विकेट कीपर वापस सेकंड बॉल गलुक पेविलियन नडदुकुनु बौलर अंपायर क्रॉस स्कोर करार बॉल लाइक एक बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप पड़ाल बॉल बैट्समैन कंप्लीटली बीट जाला बैट आणि बॉल मध्ये कंचे कनेक्शन ना सो बॉल सीधा गेला विकेट कीपर हातात वरलाल काम विकेट कीपर केलेला बॉल लाइक कोर गॅदर कोरनो वापस केला अंगा बौलराक बॉल वापस बौलर हातास गौरंग बौलिंग गलतस चॅलेंज ओव्हर 50-50 ओव्हर अंतु मस्त एक लाइक कोन बौलिंग बैट्समैन रिस्ट्रिक्ट करतस प्रत्येक डॉट बॉल या संदर्भात बॅट्समॅन वैरी मोर अँड मोर प्रेशर क्रिएट करता तसं एक बॉलिंग परफॉर्मन्स सांगत दाखवतस फ्लाइटेड डिलिव्हरी जेवण आशिल्ल्या बाउन्सर जेवण येईल बॉल बॅट्समॅन त्या बॉल रीड करू जायनी नेक्स्ट डिलिव्हरी यापैकी जेंटली पुश केला ऑफ साइडक जस्ट टॅप करून ऑन साइडक मारनो प्रथमेशन 1 रन काढो सिंगल काढो विघ्नेश स्ट्राइक दिला विघ्नेश लायक एक हार्ड हिटर एक विस्फोटक बल्लेबाज म्हणून नाव घेतील एक प्लेयर कंचे संदर्भारी मस्त हार्ड शॉट मार्चित असला कॅलिबर आशिल्लो सामर्थ्य आशिल्लो एक कोस्टल रिजनाचे प्लेयर विघ्नेश या संदर्भात कसं करता पळवा मुखार मार्च प्रयत्न केला बॉल वायर कॅच जो चान्स अज्जोटूची कॅच ड्रॉप झाला विघ्नेशन एक हॉर्ड शॉट मारची प्रयत्न केलेले खंडित जाऊन बॉल बाहेर पेटोवचे प्रयत्न विघ्नेशन केलेले जाल्यार टायमिंग स्थिती लायक नाशिल्ले प्लेसमेंट परफेक्ट आशिल्ले बॉल सीधा फिल्डरान हाता वता आशिल्ले बट थंय आशिल्ले फिल्डरान एक चूक केले एट द लास्ट मोमेंट बॉल has slipped away from the hands of the fielder so एक बिग रिप्रीव म्हणून तो हॉर्ड एक जीवदान मेळ्ळा हांगा विघ्नेशाक तशीची 3 रन ऍड जाला विथ द हेल्प ऑफ those 3 runs प्रथमेश is on strike now गौरंग नेक्स्ट बॉल गलतस क्रीसर वेट करतस प्रथमेश अनेक करावळी भागाचे प्लेयर प्रथमेश आणि विघ्नेश एक लायक पार्टनरशिप येते सांगा या संदर्भारी या एक पार्टनरशिप ब्रेक करका जाता डोंबिवली दोरके 7 टीमाचे प्लेयर्स पळवा कशी नमुने बॉलिंग कशी नमुने स्ट्रॅटेजी तांगेल बॉलर सांगा अडॉप्ट करतात म्हणून लायक एक मैच चलते IGCL 2024 फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट गौरंग नेक्स्ट बॉल प्रथमेशन ऊपर मारला आउट ऑफ द पार्क बॉल गेला सीधा वैरी बाहेरी दूर आणि 6 ऑफ
ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਵੇ ਮੋਰਨੀ ਜੀ ਤੋਰ ਕੁੜੀਏ ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ऑलरेडी चॅलेंजिंग स्कोर अंग त्यांनी क्रॉस केलेला असं दारने एम केलेला बॅटिंग टीम बट इकडे स्कोर केला प्रथमेशानं एक राईट टायमार एक सिक्सर मारलो अंग दे हॅव कम बॅक इन टू दिस गेम म्हणून येतं सो एंड ऑफ दी ओव्हर नंबर 5 सो एक चॅलेंजिंग 50-50 ओव्हर आणतो दारन एम केलेल्या बॅटिंग साइडाच्या बट इकडे स्कोर केला सो 10 + 5 16 रन्स विल बी ॲडेड टू द टोटल आय बेग युअर पार्डन 11 रन स्कोर केला 11 + 5 16 रन्स हॅव बीन ॲडेड टू द टोटल विच टेक्स देअर फुल स्कोर टू 38 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स सो दॅट मीन्स आणि काली सोरन जाऊका वरला 12 बॉल आणतो 2 ओव्हर बाकी ओनली 6 रन्स रिक्वायर्ड फॉर अंधेरी सुपर नॅचरल्स टीम टू विन दिस मॅच अँड टू गेट 2 पॉइंट्स इन देअर पॉइंट्स टेबल खंडित जाऊन एक प्रोडक्टिव्ह ओव्हर मेळ्ळाला अंधेरी सुपर नॅचरल्स लायक एक ट्विस्ट मेळ्ळा 50-50 चॅलेंज ओव्हर आणतो इकडे स्कोर केला तशींची 5 बोनस रन्स ऍड जाऊन 16 रन मेळलो दे आर नाउ स्लोली मार्चिंग टुवर्ड्स द ट्रॅक अँड दे आर स्लोली मार्चिंग टुवर्ड्स द विक्टरी हियर डोंबिवली डरकेस खंडित जाऊन अंगा विकेट कडकची जत्तांनी या एक ओव्हर आणतो एक जो 2 विकेट पडली मळारी ಬಹುಶಃ ತನ್ನಿ एक ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೆತ ಪಳವ ಕೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮನು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪೈ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೌಲ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 6th ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿನಾಯಕ್ ಪೈ या ओव्हर अंतु कसं करतं पळवा विथ द शॉर्ट रन ऑफ बॉलिंग घालतोस अँड क्रीसर वेट करतोस विघ्नेश शडाय फ्रॉम कारखला विघ्नेशन पुल केला ऑन साइड आणि तो बॉल गेला सीधा स्ट्रेट इन द थ्रोट्स ऑफ द फील्डर लॉंग ऑन आशु फील्डर आणि कंचे चूक करनी विघ्नेश इज आउट Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Waiting till the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live 1,000 million lives. My patience is waning. Is this entertaining? Our patience is waning. Is this entertaining? Got this feeling, yeah, you know, where I'm losing all control. 'Cause this magic in my bones. Got this feeling in my soul. Go ahead and throw your stones. 'Cause this magic in my bones. सो टीमाच्या स्टार प्लेयर विघ्नेश शनाय आउट झाला आणि सरण जावका वरल्याल इकडे बॉल आणतो विक्रांत प्रभू आणि प्रथमेश क्रीसर असती नवे बॅटर जाऊन विक्रांत आयला सरण जावका ओनली 6 रन्स रिक्वायर्ड 11 बॉल्स टू गो फर्स्ट बॉल आणतो एक विकेट काढला अंगा बॉलरानं विनायक पैनं एक सक्सेसफुल बॉलर म्हणून येतं लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाऊन गेला बॉल नवे बॅटरानं जेंटली पुश केला ऑफ साइड आणतो जस्ट टॅप करून विकेट फिल्डर आणि ಅವನು बॉल फील्डिंग करते पुढे 1 रन धावून कंप्लीट केला तशीची स्ट्राइक मिळतेस अनेक ऑलराउंडर प्लेयर प्रथमेश टेक्निकली साउंड बॅट्समॅन तांगे टीमाचे एक की प्लेयर म्हणून येतो यापटे रिस्की रन जाऊन आशिल्ले खंडित जाऊन और जावका बॅट्समॅन इज आउट या रन काडची आवश्यकता दा आशिल्ले बॉल सीधा फिल्डरान हाता वत्ते आशिल्ले बट प्रथमेशानं 1 रन काडका म्हणून धावला तशें जावन नॉन स्ट्रायकरान काडच्या रन प्रयत्न केला बट आउटसाइड द क्रीज मस्त भायर आशिल्लो फिल्डरानं वोगी बॉल थ्रो केला विकेट कीपरान खंयचे चूक करनी सो 1 more विकेट हॅज गॉन डावन नाव
पण येते ती मेडिक मेडिकेअर लिमिटेड प्रेझेंट्स IGCL 2024 powered by Star Walker first match of IGCL 2024 लाइक एक फाइट मैच जते से 9 बॉल बाकी से 5 रन जाऊ का कौन मैच विन जता पड़का बौलर ने खंडित जाऊन अंगा मैजिकल बॉलिंग दाखो का जता 9 बॉल अंतो 5 रन जाई विकेट से गेला खाली 4 विकेट से आणि खंडित जाऊन विकेट करून घ्यायचे नजंगा बॅटिंग टीम अंधेरी सुपर नॅचरल्स वापस एक विकेट पडली म्हणजे मस्त एक ट्रबल आणि त्या बॉल वारे रशील बट इन टू दी वेकेंट रिजन दोन फिल्डर मध्ये पडलं बॉल फ्लिक करचे प्रयत्न केलेला बॅटरानं ऑन साइड आणतो बट बॅटाच्या एज लागून चिक्की वेळ वारे रशील बट फॉर्च्युनेटली the ball has safely landed into the vacant region दोन फिल्डर मध्ये पडला मित्र कंचे डॅमेज जायनी एक रन मिळाला that means only 4 runs required now in the remaining 8 balls यापटी रनांचे चान्सेस असतील माय गुडनेस बहुशः डायरेक्ट हिट जलाय प्रथमेश खंडित काय आउट जात असेल but luckily direct hit has not happened so Prathamesh is safe वापस एक डॉट बॉल जल्ला 7 बॉल बाकी से खड़े बॉल ओवराचे लास्ट बॉल लाइक एक बॉल मस्त लो जाऊन आयला बट आउटसाइड द ऑफ स्टंप फार अवे फ्रॉम द ऑफ स्टंप आशिल्ला ऑफ स्टंप मस्त बाहेर आशिल मित्र अंपायरान वाइड मोनो डिक्लेअर केला सो एक रन एक्स्ट्रा रुपारी ऍड जातस या वाइड रन ऍड जातची ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ ರನ್ಸ್ ದಕ್ಕೈತಸ್ 41 ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ खाली 3 रन जाऊ का वरलेला 7 बॉल आणतो 7 बॉल बाकी 3 रन जाऊ का अंधेरी सुपर नॅचरल्स का ए मॅच विन जाऊ शकतो वापस तसले एक बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइक एक बॉल बैट्समैन कंप्लीटली बीट जल्ला बैट आणि बॉल मध्ये कंचे कनेक्शन ना टच जाऊन डॉट बॉल जल्ला डॉट बॉल टू एंड द ओवर दैट मीन्स 3 runs required in the final over I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. So we go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. So after 6 overs runs जल्ला 41 खड़े ओवर बाकी 3 रन जाऊ का अंधेरी सुपर नॅचरल्स का ए मॅच विन जाऊ चेक अगेंस्ट डोंबिवली दरकेस 7 लाइक एक रोचक रोमांचकारी जाऊन असेल मैच मस्त इंटरेस्टिंग जाऊन चलते कौन विन जाता पड़ा का फर्स्ट मैच बहुशः एक विकेट अनेक विकेट पडली म्हणजे I would say Dombili Durkes will come back into the track. अभिषेक भट्ट बौलिंग गलुक आयला फायनल ओवर गलुक पळवा अभिषेक भट्ट खंचुमनाच्या मॅजिकल बौलिंग परफॉर्म करता म्हणून बॉल वारे रशिला बट एक रन मिळला अंगा बैटिंग टीम अंधेरी सुपर नॅचरल्स अंधेरी सुपर नॅचरल्स कॅप्टन आदित्य सकरदंडीने सुरुवेक या मॅच अंत टॉस विन जाऊन फील्डिंग चूज केलेल्या तक रिप्लाय जाऊन डोंबिवली दरकेसाच्या टीमाच्या 43 रन स्कोर केलेला आता 44 चे टार्गेट रीच करचा प्रयत्न करतस सुपर अंधेरी नॅचरल्स टीमाच्या खाली 2 रन जाऊ का वरलेल्या 5 बॉल आणतो फॉर टीम अंधेरी सुपर नॅचरल्स प्रथमेश मस्त लाईक पण करतोय संघ
लायक एक बॉल मस्त नेलार येईल बॉल लो जाऊन येईल बॅट्समॅन प्रथमेशाक कशी खेळची म्हणून कळणी कम्प्लिटली बीट झाला बॅट आणि बॉलामध्ये कंचे कनेक्शन ना सो डॉट बॉल झाला ईच अँड एव्हरी डॉट बॉल बॅटरावरी मस्त प्रेशर क्रिएट करता या एक संदर्भरी इथे मला प्रत्येक रनच इम्पॉर्टंट जाऊन असता 2 रन जाऊ का वरलेल्या 4 बॉल आणतो अभिषेक भट बॉलिंग का लुक तैयार प्रथमेश राइट आर्म ओवर द विकेट जाऊन पेविलियन एंड दक्कुनु वापस एक लायक एक बॉलिंग तई डायरेक्टेड चला डायरेक्टेड and he's out. What is happening here? Andheri Supernaturals have lost their important wicket in the form of run out in this crucial stage. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put him heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. तीन बॉल बाकी से 2 रन जाऊ का for team Andheri Supernaturals. Anything may happen here. We cannot say कंची team म्हणजे तमर संग जायना 50-50 situation, must win situation, rather a do or die situation म्हणून तो दोन टीमांकडे to get 2 points in their points table. मस्त एक ट्विस्ट म्हणला या एक ओव्हर आणतो बॉलर लायकन बॉलिंग घालतास विकेट पडला that means 7th wicket has gone down for team Andheri Supernaturals now. Need 2 runs in the remaining 3 balls. नवी बॅटर क्रिसास यापटी वापस हुगूर ऑन साइड टॅप केला फील्डर आशिल्लो बट फील्डरान येवन बॉल फील्ड करचपेश पूड मस्त क्विकली जावन 1 रन कंप्लीट केला लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट खंडित जावन एप्रिशिएट करका एंड दिस इज द काइंड ऑफ रनिंग बिटवीन द विकेट तंक जावका असल संदर्भेरी सो स्कोर्स आर लेवल नाउ 43 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड दुश्मनताना खाली 1 रन जावका वरलेल्या 2 बॉलांतू 2 balls to go, just a single required to win this match. दोन बॉल बाकी से पंचा बॉल गलुक बॉलर तैयार जते से अभिषेक बट वापस फील्डिंग का थोड़ा चेंज स्कोर लो प्रथमेशान कवर सबरला over the head of the fielder and the ball has gone to the boundary for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball, and with that team Andheri Supernaturals have won the match. What an amazing, magnificent and deserving victory for the team. They have pulled a sensational victory over Dombivli Dorke 7 team and they have got 2 points in the points table, and we would like to appreciate Prathamesh who played an astonishing knock with full responsibility, and with the help of batting performance of Prathamesh, Andheri Supernaturals have pulled a great victory in the very first match of this IGCL 2024 season 1 presented by Medicare Limited, powered by Star Walker, and this tournament is very well organized by GSB Mandal Dombivli Dorke Dombivli registered, and within a short while from now we are going to come to the second match. The second match of this tournament is going to start, and I would like to once again invite Mr. Sandeep to come to the commentary box to join with us. थँक यू सो मच संदीप जी आणि भटमा मस्त धन्यवाद कितली इंटरेस्टिंग मॅच असते ताच्याकरता चड इंटरेस्टिंग कॉमेंट्रीशी दिसता सर थँक यू फॉर ॲडिंग सो मच ऑफ फ्लेवर टू द क्रिकेट ओके एक सन अनाउन्समेंट above 40 men's cricket
खेळची खातीर अबाव 40 कोण आसची तांणी कोणा पार्टिसिपेट करचें आसा मेन्स मात्र तांणी थंय एक टर्फ आसा थंय मंदार मांडी थंय रेडी आसा 2 टीम करच्यो आसा आमकां अबाव 40 कोणा खेळचे आसा तांणी थंय येवका म्हूण विनंती अबाव 40 मेन्स ओनली विमेन्सान येवेत प्रोत्साहन करच्याक खेळच्या मात्र मेळना तितलेंची संदीप जी ओवर टू यू थैंक यू हेलो 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 नागेंद्र डीजे कंसोलाला येऊ का नागेंद्र हेलो 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 तो दूसरा मैच और दूसरे मैच की शुरुआत होने जा रही है सिरसी सुपर किंग्स उडपी वर्सेस थाने टाइटंस मैच की शुरुआत करेंगे चलिए बल्लेबाज आपको तुरंत ही भेजने हैं मैदान पर सिरसी सुपर किंग्स ओन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है मेरे को क्या लगा और दोनों बल्लेबाज इस समय आ चुके हैं स्ट्राइक पर रहेंगे सिद्धेश और नॉन स्ट्राइक गेंद पर हिमांशु उनका साथ निभाएंगे और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अभी आ चुके हैं पहली गेंद पर उठाकर खेल दिया कमाल का स्ट्रोक गेंद जाएगी सीधी 6 रनों के लिए बहुत ही कमाल का छक्का दोनों मैच का पहला बॉल ठीक है क्या बात है पहले मैच की शुरुआत भी छक्के के साथ हुई थी और दूसरे मैच की भी शुरुआत सिक्सर के साथ हो चुकी है इसी बीच गेंद को हल्के हाथों से ढकेल दिया है ऑन साइड पर 1 रन लेने का मौका कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ा स्ट्रोक खेलने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया और स्कोर हो चुका है 7 इस समय स्ट्राइक पर अभी आ चुके हैं हिमांशु अतुल गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज स्ट्राइक पर शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर खेलेगा प्रयास और यह अपील क्या कुछ हुआ है निश्चित तौर पर अंपायर स्क्वेयर अंपायर से बातचीत करेंगे उसके बाद निर्णय देंगे चर्चा करेंगे और इस विषय में चर्चा तो होनी ही चाहिए जरूर संदीप जी क्षमा चाहता हूं 2 मिनट के लिए हम गेले फर्स्ट मैच मैन ऑफ द मैच अनाउंस करता रसाची फर्स्ट मैच प्लेड बिटवीन डोंबिवली दॉर्के 7 एंड अंधेरी सुपरनॅचरल कसं एक फॅन्टॅस्टिक मॅच नव्हे म्हळ्यार केन्नाय खंयचे टुर्नामेंट सिजनाचे ओपनिंग अशी जावका सो द फर्स्ट मॅच ताचे मॅन ऑफ द मॅच आसाची डॉक्टर विनोद नायक डॉक्टर मामाक हांव हांगा मंचार आमंत्रीत करता जोरान थाळी वाजोवन तांगेले स्वागत करता फर्स्ट मॅचान तू ब्युटिफुल बॉलिंग हॅट्रिक घेतिल्लो आसा द फर्स्ट हॅट्रिक ऑफ द सीजन आनी आमकां पुरो जाणां गोत आसा डॉक्टर मामा इज लायक मॅजिशियन
तांगेला प्रायवेटची म्हणून ना नवे सम नवे he is kind of he raises the bar for everyone all डॉक्टर माम above 40 टूर्नामेंट जाता रस्ते जला डॉक्टर माम हंग खेळता रस्त्याची थंय चमकला रे मिगल लेक्का डॉक्टर माम एक साइड आणि वर्लेल टीम आनंद एक साइड खेळता सो विथ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेट्स वेलकम डॉक्टर विनोद नाईक. डॉक्टर माम डॉक्टर विनोद नाईक प्लीज ट्रॉफी लगी येऊ का तुमगेले मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट करूच खातीर. चलिए गेंदबाज नए बल्लेबाज आ चुके हैं, पहले विकेट का पतन हो चुका है, चरण आ चुके हैं इस समय मैदान पर. ये बढ़िया गेंद थी, इस समय ऑन साइड पर खेल दिया स्क्वायर की ओर, एक रन तेजी के साथ पूरा किया है. बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, अंपायर का लेग बाइस का इशारा आता हुआ. इस एक रन की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, 8 रन हो चुके इस समय. ये मैच नंबर दूसरा चलता हुआ सिरसी सुपर किंग्स वर्सेस थाने टाइटंस. सिरसी टॉस जीतकर गेंदबाजी का करने का निर्णय लिया है, आमंत्रित किया है थाने टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए और इस वक्त स्कोर 8. इसी बीच ये गेंद निश्चित तौर पर लेग स्टंप से बाहर है और अंपायर ने इसे वाइड घोषित किया है. एक्स्ट्रा के तौर पर रन आता हुआ. लाइन और लेंथ पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, एकाग्र होकर गेंदबाजी करनी होगी. लेकिन जो विकेट भी प्राप्त किया उन्होंने कमाल का. इसी बीच ये हल्के हाथों से ढकेल दिया, विकेट कीपर ने तुरंत ही गेंद को रोक लिया और तुरंत ही थ्रो किया नॉन स्ट्राइक एंड पर. कोई रन नहीं, रन लेने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है इस समय. 5 गेंदें 9 रन अब तक हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर. Okay, Migalwattu amgela first match IGCL 2024 season 1 ताजे मॅन ऑफ द मॅच आयिल्ले आसाची डॉक्टर विनोद नाईक मम. जोरान ताळी वाजून तांकां मस्त मस्त अभिनंदन दिवंक एंड आय वूड रिक्वेस्ट अनमोल टू प्लीज प्रेजेंट द मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी. थँक्यू, कॉंग्रॅच्युलेशन्स डॉक्टर मॅम. 2 मिनिटं चढ वेळ घ्या ना. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि एक 2 उत्तर तुमगेले अबाउट द ऑर्गनायझिंग आणि पिच्ची कशें आसा अँड वॉट यू थिंक, आय मीन हाऊ इज इट गोईंग? I think it's a wonderful event, very nicely organized and मस्त चंद जाता पळोवच्याक. आनी खेळतना प्रॉब्ली एक मॅच जावका पूरा प्लेयर्स हांकां सेट जावचें, इवन हांगा खेळटल्यांक समेत प्रॉब्ली सेल्फ सेट जावचें एक मॅच जावका जातलें. म्हळ्यार ते पिच एस्ट्रोटर्फ जाल्यार लिमीट, इट इज नॉट विंगड पिच्चा खेळाल म्हणके जायना. इवन तुका ओवर पिच मेळल बॉल समेत तूं मारच्या वतन बॅट ಸ್ವಲ್ಪ गुंलाल म्हणके जावन इट्स नॉट दॅट इजी टू प्ले. जस्ट वचून खेळता म्हणल्यार तूं जायना, यू नीड अ कपल ऑफ बॉल्स टू गेट यूज टू इट. सो आय थिंक नेक्स्ट मॅचान तूं आमी केलेले मिस्टेक्स रिपीट करचे नात जमे. शूड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड नॉट रिपीट इट. Otherwise, amazing. Every time in Mumbai when they organize it so nicely. We've known it. Last 2 tournaments also. It's the 3rd one and it's also going very nicely till now. I'm sure it will be a great event to play. Thank you. Thank you so much. Congratulations once again and all the best for your next matches. Sandeep ji, over to you. Thank you very much. गेंदबाजी के लिए श्रीधर आ चुके हैं और श्रीधर ने पहले गेंद पर डॉट गेंद फेंकी और उसके बाद सिंगल आया. चरण स्ट्राइक पर. इस बीच ये कट करने का प्रयास, तेज कर्रार गेंद थी लेकिन संपर्क नहीं कर पाए. बहुत ही तेज कर्रार गेंद थी. बल्ला भी उठाया था, प्रहार करने का प्रयास छू के.
इस बार हवा में गेंद, लेकिन डिक्लेयर जोन में रन मिलेंगे 2। कट किया, कमाल का, अच्छी फील्डिंग, सीधे फील्डर के हाथों में खेल दिया था और रन लेने का इस बार कोई मौका नहीं। तेज करार गेंद, फिर से एक बार उसी जगह खेलने का प्रयास था, लेकिन एक अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा। 2 ओवर के बाद 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। अब तक 2 एक्स्ट्रा रन आए हैं। ये ओवर काफी कमाल का था। इस ओवर में केवल रन आए हैं 3 रन इस ओवर में आए और जबरदस्त ये ओवर रहा। कम से कम रन देने का प्रयास गेंदबाजी के लिए भी देखेंगे गेंदबाज कौन आते हैं इस समय, लेकिन कमाल का आयोजन है ये IGCL 2024। आप सभी का हार्दिक स्वागत। यूट्यूब के माध्यम से भी काफी जन इस मैच का मजा ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत। आज का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ सीरीज सुपर किंग्स वर्सेस थाने टाइटंस के बीच। सीरीज से टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और ये सही निर्णय साबित होता हुआ। 2 ओवर में केवल 13 रन आए हैं, एक विकेट भी चटकाया है। 6.5 के हिसाब से रन बने हैं, माफ कीजिएगा। तो रन रेट तो काफी कमाल का है, लेकिन यहां से जो रन बनाने की गति है वो बढ़ानी होगी, स्कोर को बढ़ाना होगा। लिमिटेड ओवर्स में आपके रनों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। 5 ओवर शेष है, देखना होगा इन 5 ओवर में कितने रन बना पाएगी ये टीम। इसी बीच फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास बारंबार हो रहा है, लेकिन गेंदबाज भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और फिर से एक बार बीट किया बल्लेबाज को। गेंद को टैप किया और फॉलो थ्रू में रोकने में कामयाब रहे। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। संघर्ष करना होगा रन बनाने के लिए इस समय। फिर से एक बार आड़े बल्ले से, लेकिन विकेट कीपर ने तुरंत ही गेंद को जैसे ही हाथ में लिया विकेटों को लगा दिया। तीनों की तीनों गेंदें डॉट पे की है। यहां पर वेंकटेश कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि प्रभावित किया है उन्होंने अपने गेंदबाजी से। बल्लेबाज काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, डॉट गेंदें खेलने के बाद थोड़ा प्रेशर निश्चित तौर पर बढ़ता है और बड़ा स्ट्रोक खेलने में चूक करते हैं। ये देखिए, कट किया बिल्कुल जगह पर, उसी स्थान पर खिलाड़ी है और चारों गेंदें डॉट पे की है। क्या ये मिडन ओवर होने जा रहा है इस पूरे टूर्नामेंट का पहला? ये देखना जरूरी है। क्या 2 गेंदें डॉट कर पाएंगे गेंदबाज या तो बल्लेबाज रन ले पाएंगे? ये देखना जरूरी है।
ऑन द राइज खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, ऑन साइड पर तुरंत ही थ्रो और केवल एक ही रन। बिल्कुल 1-2 रन से कोई यहां पर दिक्कत नहीं है गेंदबाज को। सुंदर लाइव टेलीकास्ट इस समय चलता हुआ। उठाकर खेल दिया, हवा में कट किया था, डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है और तुरंत ही गेंद पर झपटे। अच्छा थ्रो भी किया उन्होंने। 3 ओवर की समाप्ति, 15 रन। इस ओवर में केवल रन आए हैं केवल 2 रन। अच्छा ओवर रहा, इससे पहले वाले ओवर में केवल 3 रन आए थे। तो गेंदबाजी एक कमाल की हो रही है। डीजे Another devastation when we step into the place, and better believe that you can see we're gonna rock and never stop it. Here we go again, hit you with the flow again, pick it up the second time around, we bring it on again, shout it out. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got blood on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Sing it. We will rock you. About a little something, get you in the mood. Know what I mean? Watch your back. We got Queen on this track. Bring the feedback and let it drop. As long as 5 bring the funk, Queen bring the rock, and it don't stop. Buddy, you're a young man, hard man, shutting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Sridhar has brought into attack after 3 overs 15 runs with the loss of 1 wicket. And this is really a great piece of bowling from every bowler. In the previous over, only 3 runs had come. First ball of the over, and wicket keeper is very quick. And what a stumping there! But I think the batter was safe. Wanted to play big stroke, not able to connect. And the first ball of the Sridhar is dot ball. We have seen many dot ball in this inning. (16 run with the loss of 1 wicket. This is over number 4th in progress. Well, the batter was not ready, and because of lights, wanted to hit again, not able to connect, and really this is the change of pace worked for the bowler. Line and length is quite superb, and only 16 runs on board right now. That's again wanted to hit. Square leg fielder is very quick, but it's good running between the wicket. Only single, and satisfied with the single run. That takes single to 17. Last 3 balls are left of the over. That's again, but will they go for single? Yes, they have gone. Once again a single. At least the batters should take run on every ball. Three balls are still there in this over. Charan will be on strike now. And that was a nig, I think. That was good effort made by the wicket keeper, but it was very quick and quite difficult for the wicket keeper.
And still 2 balls to go now. What a bowling from Sridhar. That's in the air. Will it be taken? Let's see. Oh, what a effort there made by the fielder, but could not stop, and that's gone for a 6. What a stroke! That's high in the air, and that's gone for a maximum 6er. All we need is somebody to lean on. So that was outstanding stroke over the mid-wicket side. That 6er takes to 24. That's once again in that same area, and this time he clears the distance, and that's gone once again for a maximum 6er. Y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene. Hago música que entretiene. Mi música lo tiene fuerte, bailando se baila así. So it was before, after 3 overs 15, now after 4 overs 30 runs. So 15 runs in the earlier over, and that was quite expensive over. Back to back 2 6ers from the Charan's bat, and really that was really great stroke. So 30 runs after 4 overs, and change in the commentary box. I would request on microphone Suresh Bhatt will be on the microphone. Over to him. Thank you very much, Mr. Sandeep Bagul, for your excellent commentary. Once again, welcome back to this Palava Titan Stadium here at Dombivli. Second match of this IGCL 2024 is going on here. Ball is in the air. There is a fielder. Will he be able to take that catch? And what a great piece of fielding there by the fielder. He kept his eyes on the ball. That was not an easy catch, especially when you are looking, when you are running backwards. It is difficult to judge these kinds of catch, and we will have to really appreciate the presence of mind of the fielder here. He kept his eyes on the ball and converted that into an amazing catch. So the team has lost a wicket here in the very first ball of the over. Thane Titans have lost their wicket here. Wicket number 2 is down. Runs on the scoreboard is 30 runs. Shirsi Super Kings captain, after winning the toss, he had decided to field first here. First 3 overs were very good, but that 4th over of Sridhar Mendo was bit of an expensive over, which made the team Thane Titans to come back to this game. So they have scored 30 runs. Now they have lost their wicket here. Second wicket is down. Successful bowler continues here. Ball pitching right in the block hole, and the batsman played it defensively forward, giving full respect to their delivery. But before the fielder collects the ball, these 2 batsmen have ample through for a cheeky single here. Good running between the wicket here. Aggressive running between the wicket. Single has been taken. Score moves up to 31. Score slowly moves on to 31 now. We are in the 5th over of the innings. It's a 7 overs game.
Venkatesh continues. Ball chipped up in the air but into the vacant region. Just falling short of man standing at mid-off region. Singles are coming more easily for the batters here. They are not going for big hits because they lost 2 wickets early in the innings. Now they need to go for big hits because they need to exit their score. Let's see how many runs they will score in the remaining overs here. Venkatesh once again, ball is in the hands of the bowler Venkatesh now from the pavilion edge with a long run up, making some change in the field placement here, and the man on strike is Nandan Prabhu, who is batting on 1 run. Straight down the ground he played in between the 2 fielders, and we'll have to wait for umpire decision here whether it's a boundary or 6. Okay, boundary signal from the umpire. 1 bounce over the boundary for 4 runs. Welcome boundary for Thane Titans. And this super boundary is brought to you by Star Walker. Straight to the fielder there. Good piece of fielding by the fielder. He was very quick, collects the ball and throws it back to the wicket keeper. Meanwhile, no runs taken. Score still remains on 36. After 4.5 overs, 36 with 2 wickets down. Last ball to go now. Venkatesh for the last time in this over. Man on strike is Nandan Prabhu. At the non-striker's end, we have got Charan Kamath, who is batting on 17. Steers it down to 3rd man region, angling the pace of the bat. He just realized that there is no slip, so cuts it off down to the 3rd man, and before the fielder catches the ball, they get a single here. So single in the last ball of the over to keep it to the strike. There's the end of the over number 5. 5 overs gone. Thane Titans are now 37 for the loss of 2 wickets in 5 overs. So fantastic cricket tournament is going on here in Palava Titan Stadium, Dombivli. This tournament is very well organized by GSB Mandal registered Dombivli. Okay, this is going to be a challenging over now. Challenge 50-50 over. 10 runs. 10 runs, okay. The batting team have aimed to score 10 runs in this challenge over. Let's see whether they will be able to score 10 runs at least in this over. This over is going to give a twist for this match. Who is the new bowler? Okay, Deepak Badal is going to continue the over. I mean, this is a 6th over. Batting team Thane Titans had not asked for challenge over in the 5th over. That's the reason now the 6th over has automatically become a challenge 50-50 over. First ball. Straight down the ground he played, but there is a protection. The fielder comes across and collects the ball. Meanwhile, the batter gets a single easily without any problem. There was no chance of going for the 2nd run, so he need to satisfy with just a single here. For the 2nd chance, Deepak Badal, an all-rounder player who used to play for Mumbai Paltans, and not only that, he has played for Alpha Troopers Mumbai also. Very experienced cricketer. Ball is in the air. Straight in the throats of the bowler Deepak Badal without making any mistake. Caught it beautifully. Simple lollipop catch to him. And Thane Titans have lost their 3rd wicket. It's kind of funny how life can change. 180 in a matter of days.
terrific atmosphere here today at Palawa Titans football ground. Cricket tournament is going on here. We can expect a huge crowd. Crowd will come in large number tomorrow to witness this match. Meanwhile, Mr. Prashant Puranik Mam is here with us in the commentary box. Very warm welcome to you, sir. After a long time I've been meeting you. So it's nice to meet you once again. Ball is in the air, but into the vacant region. Will they get 2 runs? The fielder comes across and catches the ball. And that's an outstanding fielding performance by the fielder. Just a single has been added to the total. So second match of this IGCL 2024 is going on here. Medicare are the title sponsors. And the tournament is co-powered by Star Walker. Very well organized cricket tournament by GSB Mandal Dombivli. For the first time they have been organizing such a wonderful cricket tournament. The tournament is not only for the cricket players from Mumbai, but also all the players from different part of the country, especially from coastal Karnataka, Mangalore, Udupi region are also taking part in this tournament. This is an auction based cricket tournament. Well, I think here the decision has gone to the upstairs. It has gone to the third umpire. Third umpire is reviewing the decision. You can see a beautiful LED display, digital screen on the left corner, which is just in front of the commentary box. Not a decision from the third umpire. The batsman is safe. Two more balls to go of this over now. Deepak Badal continues. In the right arm round wicket fashion, he goes, ball is in the air. 3 fielders are in a row, and finally the ball has slipped away from the hands of the fielder. The batter wanted to go for a big hitch, but didn't get the line of the ball properly, not from the middle of the bat, not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands. There was not much of power behind the shot. As a result, the ball was quite high in there for a while, but unfortunately, the fielder has dropped this catch, and this is a big reprieve for the batter here. Two runs have been taken here. And the last ball to go of this challenge 50-50 over. Deepak Badal for the one last time in this over. Is he bowling in the right arm round wicket fashion with a short run up, passing umpire. Outside the off-stump delivery, batsman steers it down to third man region, cuts it down to third man. There is a fielder. So they get only a single here. There is the end of the challenge 50-50 over. So our statisticians are working on it. Within a short while from now, we are going to announce what is the total score. Six overs gone, 40 runs on the scoreboard. So 40 runs after 6 overs. Now last over to go. Let's see how many more runs will come in the remaining 6 balls. In the first match, the batting team, Dombivli, their case, had given a target of 44 runs. They were able to score 43 runs in the allotted 7 overs. Now the team Thane Titans have already scored 40 runs in 6 overs. And I'm sure definitely
they can score at least 6 runs in this over, because they got plenty of wickets in hand, and meanwhile they need to look for big hits here in order to accelerate their score. First ball of the last over. Vijay Kumar Gaitonde is going to bowl the final over of the innings. He has been introduced here to bowl the last over from the Palava end. Dilip is on strike. Dilip goes for a big one, and the ball is rushing towards the boundary ropes, and 2 runs have been taken here. Very good piece of running between the wicket, aggressive running between the wicket before the fielder collects the ball. These 2 batsmen had ample time in picking up that second run without any problems. They have taken 2 runs here. So with those 2 runs, the scorecard of Team Thane Titans now slowly moves on to 42. Five more balls to go of this over now. Vijay for the second time with a short run up is bowling to Dilip Shanai, who is batting on 4 runs after facing 3 balls. And at the non-striker's end we have got Nandan Prabhu, who is batting on 7 of 7. Vijay bowls. That should be a wide, no doubt about the delivery. The umpire has no hesitation in stretching his arm, turning around and giving a wide signal here. The ball was going far away from the off stump. Straight down the ground he played. There is a fielder, Sridhar Mendo, the tall man, the skipper of Shirsi Super Kings, comes across and corrects the ball, but he cannot prevent the batsman from picking up a comfortable single here. Nandan goes for a big one. Ball is in the air, and the ball has gone over the top of the stadium for a huge 6. And this Super 6 is brought to you by Medic Medicare. What a terrific shot it was. Down the track he comes, picked it up very nicely and hits that one over the top of the stadium for a huge 6. That ball went straight, almost like a tracer bullet. Again goes for a big hit, but this time straight to the hands of the fielder who was standing at deep mid wicket region. So Nandan is out. Nandan has done his job. In the previous ball, he was able to send the ball, dispatch the ball out of the park, and meanwhile the ball has gone straight to the fielder there. Unfortunately, he has to move back to the pavilion here. He has made his intention clear, because this is a final over and you need to go for big hits no matter what the condition is. All they need is runs on the scoreboard. They should reach a target of more than 50 or 50. Already 50 runs have come in the total, 50 for the loss of 4 wickets. And how many balls to go? 2 balls to go. For the 5th time, Deepak Vijay, successful bowler Vijay, is now bowling to the new batter. Aditya Kini is the newcomer. Back to the bowler. Good piece of fielding of his own bowling, followed through and picks up the ball. But before the bowler Vijay comes across and corrects the ball, batsman had ample time in picking up a single. With that single, Aditya is straight off the mark. Hope it is a count. And here is the last delivery of the final over of the innings now. So there's the end of the innings of Thane Titans. After putting into bat first, they have scored 52 runs. Now 53 is the target for Shirsi Super Kings to win this match of 7 overs.
So you are watching IGCL 2024 presented by Medic Medicare Limited, co-powered by Star Walker. GSB Mandal Dombivli registered presents IGCL 2024 Season 1. GSB Mandal Dombivli हन्नी प्रेजेंट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम मुंबई तो IGCL 2024 चलते रहे. Medic Medicare Limited are the title sponsors. The tournament is co-powered by Star Walker. Jersey sponsors Star Walker. We are thankful to all the sponsors, all the donors who have made this tournament a grand success, and we are witnessing a fantastic cricket tournament. Ground at चार सुत्तु तुमका colorful advertising boards, flags पोचे मिलते हैं. So पूरे advertising boards दिल्लाला sponsor केलाला सक्कड़ sponsors ने donors का वापस एक पटी GSB मंडल डोंबिवली तरफे ना sincere thanks. So 53 is the target before the next innings of Shirsi Super Kings starts. It's time for me to hand over the microphone to my co-commentator Mr. Sandeep Bagul, who is going to proceed the further commentary. Thank you very much. Thank you very much, Suresh Bhatt sir. So the target of 53 for the Sirsi Super Kings, and let's see now how they are going to start. Both the openers are heading towards the ground. Well, in the earlier inning, we had seen the previous inning. The start was really great. Bowlers had done a good job, but afterwards, the batters who could put a fighting total on the board, and that is 53. Let's see now how they're going to chase. Sirsi Super Kings, they both batters have arrived, and on strike Gautam, and on the non-strike end along with him Charan will be introducing. Vijay Kumar and Deepak on strike. Yeah, here we go. Umpires are ready. Scorers also ready. Here we go. Here we go. The first ball of the over goes his back foot and played straight to the fielder, but the fielder was very quick, collected ball as soon as, and then threw it at the non-striker end, at the danger end. But the batter who turns back immediately, and he's safe there. This one again cut it away from, but the fielder was there. The ball did not carry. In fact, he was very close there. Batsman wanted to play square cut, not able to connect well. That played straight to the bowler's fielder's hand. Another dot ball. Charan has started well with the 2 dot balls. What a bounce! This time batter wanted to hit. He wanted to hit.
on onside, but not able to connect. The bowling is really superb. A big appeal. There's a big shout from everyone, but the umpire was not interested with that. Umpire refuses immediately because it was missing the stump, and that's why it was not possible. Well, the 4 balls in dots in a row. What a great piece of bowling here from him. Not allowing batter to play any big stroke, even not for a run. Sharan once again. Down the track, in the air, and that's gone maximum. And that's gone maximum for a 6. Wonderful stroke. What a big stroke that was. Over the long on's head. The first 4 ball dot, but on the 5th ball, the batter hits the 6er. That's again in the air, but let's see. Comes on the net and has taken. The first wicket has gone. So end of the first over, 6 runs on the board with the loss of 1 wicket. As he brought into attack and then started with the dot ball. JP, please contact Nagendra Bhatt for the toss. For the toss, I would request both the captain and that's once again dot ball. 2 dot ball back to back. In the previous over we had seen 4 ball dot, but on the 5th ball that was a great stroke played by the batter. No footwork. Without footwork you cannot play, and that's why I always say that network in mobile and footwork in cricket, that's very important. Not able to connect well, and that's
That is another dot ball. 4 consecutive dot ball. Siddesh is doing a good job. Wicketkeeper is very close. Let's see. Could be a close. Well, definitely direct hit could be a very close. But as the bowler took that ball in his hand and touched the stumps, but it was quite late, and then the batsman who reaches safely and survives. So end of the over number. There is 1 ball remaining in this over. Total score is 7. I will request both the team captain for the toss. Shivaji Park's captain and the captain of already he has arrived. Kingsangel Knight Riders captain is already arrived. I would request Shivaji Park captain to come for the toss. This time again wanted to hit, and wicket-keeper takes that ball. Meanwhile, the single has taken. Good running between the wicket, and that umpire is signalling it is a bise. So after 2 overs, 8 runs on board with the loss of 1 wicket. कैप्टन ऑफ शिवाजी पार्क, चलिए टॉस के लिए आपको आना है तुरंत. ऑलरेडी एक कप्तान आ चुके हैं यहां पर. प्लीज शिवाजी पार्क टीम के कप्तान, आपको टॉस के लिए तुरंत ही आना है. शिवाजी पार्क टाइगर्स कॅप्टन जलतितली वगी कमेंट्री बॉक्स लगी येवका तुमको वेट करते सती तुमगर ऑपोजिशन टीम कॅप्टन्स तशींचे ऑर्गनायझर्स लेट कोरनाकती जलतितली वगी टॉस येवका म्हणून तुमगे लगी विनंती. 53 टार्गेट मेळालंगा टीम शिरसी सुपर किंग्स स्कोर जल्ला 8 रन 2 ओवर कंप्लीट जल्ला 1 विकेट लॉस्ट जल्ला. पळबे कोण या मैच विन जाता म्हणून 3 ओवर गलुक नवी बॉलर रेडी जल्ला. संदीप कामत पेविलियन अंडा दोकुनु सैंडी बॉलिंग कलुक तैयार जत्तस मैंगलोर शेख प्लेयर. संदीपन कलर बॉल लाइक एक बॉल outside last temporal ball batsman completely beat जल्ला. बैट नी बॉल मध्ये कंचे कनेक्शन ना सो बॉल सीधा गेले विकेट कीपर हातांतू फर्स्ट बॉल जल्ला डॉट बॉल. तशींची मिडल कमेंट्री बॉक्सात असती संदीप बागुल कशी चलते इस मैच, कौन या मैच विन जाता म्हणून तुमगे प्रेडिक्शंस. निश्चित तौर पर ये मौका है. नो बॉल दिया है लेकिन सिरसी सुपर किंग्स इस मैच को जीतना होगा उनको, और ऐसी लगभग उम्मीदें हैं उनसे. खंडित 54 मराल टार्गेट मस्त ಈಸಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಇತ ಮನೆ ತಾನೇ ಟೈಟನ್ಸ್ ಲಗೆ ಲೈಕ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಸತಿ ಪಕ್ಕನೆ ಯಾವ ಓವರ್ ಅಂತ ಕಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಳ್ಳಿ ಮುಂಜಲರಿ एक लाइक कमबैक मिलता ತಾನೇ ಟೈಟನ್ಸ್ ಟೀಮ್ को वापस लाइक एक बॉल मेलार ಈ बॉल मस्त लो जाऊन ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕತ बॉल कशी रीड ಕೊರ್ಚು म्हणून खेळणी मिस जल्ला कंप्लीटली बीट जल्ला. बॅटनी बॉल मध्ये कंचे कनेक्शन नाशी वरलाल कामंग विकेट कीपरान केलेलस कंचे रेनी अनेक एक बॉल जल्ला डॉट बॉल. सो 3 ओवर चलते संदीप लायकोन बॉलिंग गलतेस. सैंडी म्हणून नाव घेतील प्लेयर संदीप कामत मंगळूरचे प्लेयर आजी ताने टाइटन्स टीम अंतू ऑक्शन अंतू तक घेऊन तन्नी बॉलिंग अंतू इंट्रोड्यूस केला. पळवे वरलाल बॉल सैंडी कशी घालता म्हणून. नेक्स्ट बॉल एक लॉन्ग रन अप घेऊन बॉलिंग घालतेस. अंपायर क्रॉस करून राइट आर्म ओवर द विकेट. उबर मारला बॉल वर असे बॉल हॅज गॉन आउट ऑफ द पार्क. लाइक एक शॉट वेल गेला दूर गेला सिक्स. Un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. 1, 2, 3, un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. थैंक यू डीजे. संदीप जी लाइक एक शॉट एक जबरदस्त 6 रन म्हणत लायकोन पिक केला स्टँड अँड डिलिव्हरी म्हणत कसं म्हणतात तुम्ही या शॉटा बद्दल.
बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला है और ऐसे ही स्ट्रोक्स खेलने होंगे इस मैच को जीतने के लिए और उनमें काबिलियत है, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये करके दिखा सकते हैं. खंडित जाऊन एक राईट टाइमार एक सिक्स आयला. इथं फर्स्ट 2 बॉल डॉट जालेला, त्यानंतर हॉट शॉट मारूकच जाल्ला, तशींची बॉल भायर पडच्यान तो सक्सेस जाल्ला बॅट्समॅन. वापस बॉल संदीपाला तास ऑन हिज वे टू राइट हँडर फ्लिक केलं ऑन साइड तो जेंटली पुश केलं जस्ट टच कोरनु मिड ऑफ आशिल फिल्डर आणि येऊन बॉल फील्डिंग करचे पुढे एक रन इझिली धांवन कंप्लीट केला. ताजेची एक रन ऍड जाताची ಒಟ್ಟು स्कोर बोर्ड आणि दाखयतस 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 3 ओव्हर चलतस सॅन्डीले नेक्स्ट बॉल. यासाठी मुखावर मारचे प्रयत्न केला बट मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जायनी. टायमिंग तितली लायक नाशिल्ले, प्लेसमेंट परफेक्ट नाशिल्ले. बॉल सीधा फिल्डरान हाताक वतशिल्ले, मिड ऑफ आशिल्ले फिल्डरान येवन बॉल फील्ड केले बट रिस्की रन जावन आशिल्ले जाल्यार एक रन धांवन कंप्लीट केला. लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट. सो खंयची डॅमेज जायनी, खाली एक रन मात्र आयला. सो एक रन ऍड जातशी शिरसी सुपर किंग्साचे वोट स्कोर जाल्ले 17 रन जाल्ला, एक विकेट पडला. वापस एक पिडी सँडी लायक एक बॉल स्लोवर डिलिव्हरी बिट ऑफ वेरिएशन म्हणत लास्ट स्लो जावन आयला. सुरवेक फास्ट जावन गेला जाल्यार लास्ट मोमेंट तुजी स्लो जावन आयिल्ली मित्र बॅट्समॅन कन्फ्यूज जालो, मार्च की नाक की म्हणून कन्फ्यूज जावन लास्ट बॉल विकेट कीपर हाताक गेला. लास्ट बॉल हांगा डॉट बॉल जाला. सो 3 ओव्हर कंप्लीट जाला. स्कोर इज 17 विदाउट एनी लॉस. दॅट मीन्स 36 runs required in the remaining 24 balls. So Sandeep ji तुमको पास अपने से 24 balls बाकी से 36 runs जाऊँगा. That means every over they need 9 runs per over. So do you think they will be able to reach this target? Definitely, if they are going to hit some big strokes, it is possible, and I hope that both the batters are having got a potential, and if they are hitting at least 2 big strokes, it is possible. But now it depends on the bowler how they're going to bowl. If they are producing some dot ball, it might be a difficult for chasing team. Let's see now. 9 रन प्रति एक ओव्हर आयोग जाता. हांगा नवी बॉलर इंट्रोड्यूस केला. हू इज द न्यू बॉलर? प्रशांत शेडाय. अनेक एक टॉल मॅन. हाजे नंतर नेक्स्ट मॅच किंग सर्कल नाईट रायडर्स वर्सेस शिवाजी पार्क टायगर्स ह्या दोन टीमांमध्ये चलचर आसा. टॉस ऑलरेडी जाल्ला. किंग सर्कल have won the toss and I think they are going to bowl first. So I request the players of both teams to get ready for the next match. After this match, soon after this match, the match is going to start. प्रशांत शेडाय नेक्स्ट बॉलर ऑन साइड फ्लिक केले. बॉल बाउंड्री लायनाला वतस चिक्के चूक केले. मिसफील्ड हाजी एडवांटेज घेतला बॅट्समॅनान. मिसफील्डाचे एडवांटेज घेवन दोन्ही रन इझिली काडला विदाउट एनी प्रॉब्लेम. नेक्स्ट बॉल आफ्टर द कोण भायर वता आशिल्ले पळोवक खंयची नंबर डिसिशन अंपायराला येता म्हणून. डॉट बॉल जाल्ला खंयचे रन येयली. स्कोर 20 आनी रबला. 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 53 टार्गेट मेळ्ळेले. पलावा टाइटन स्टेडियमांच्या एंट्रन्स गेटारी एक नॅचरल प्रोडक्ट काउंटर आसा. तुम्ही ते विजिट करता म्हणून तुमच्या लागीं रिक्वेस्ट करता ते ऑर्गनायझर्स. एसिडिटी, इंडायजेशन, नॉसिया, हेडेक ड्यू टू हँगओवराक एक लायक एक प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तांगेला मेळटास. तुम्ही ते काउंटराक खंडीत जावन भेट दिवका म्हणून तुमच्या लागीं रिक्वेस्ट.
21 balls बाकी 33 runs जाऊका that is the equation खंडित जाऊन हॉट शॉट हाकंगा प्रयत्न करूकच येता शिर्सी सुपर किंग्स टीमाच्यान हाजे मध्ये थर्ड अंपायर रिव्यू करतास टेलिविजन स्क्रीन अंतू विंगड एंगल एंगल पळयतास सो खंयची डिसिजन येता पळोवया आमगेल्या कमेंट्री बॉक्साच्या एक्झॅक्टली ऑपोजिट म्हळ्यार लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड अंत एक हॉड LED डिस्प्ले आसा तांतू तुम्ही हाजे रिप्ले पळोवत लायक एक दृश्य सुंदर जावन आशिल्लें वातावरणांगा IGCL 2024 अंत पळोवचें मेळटा अद्भुत जावन आशिल्लें 2 दीस तलावाच्या एक टायटन स्टेडियम मस्त छंद जावन दिसता लायक एक पिक्चर तशींची लायक कंडिशन्स बॅटर्सांक आनी बॉलर्सांक क्रिकेटाक एक अनुकूल वातावरण सृष्टि जाला म्हणून कसं म्हणतात तुम्ही संदीप बागुल जी? बहुत ही बढ़िया माहौल है और ये मैदान तो कमाल का है और जिसने देखा होगा इस मैदान को उनकी इच्छा निश्चित तौर पर होगी कि हम भी इस मैदान पर खेलें, मजा लें। कमाल का आयोजन है और ये कमाल का लाइव टेलीकास्ट है, जबरदस्त। खंडित जावन आमी हांगा एप्रिशिएट करूकच येता GSB मंडळ डोंबिवली हांगेले एक ड्रीम चाइल्ड जावन आशिल्लें एक IGCL म्हणाले एक टुर्नामेंट करता म्हणून ताका समजावन तांणी मस्त प्रयत्न केलो आज एक लायक टुर्नामेंट हांगा पळोवचें मेळटा तशींची यूथ ऑफ GSB हाज्या यूट्यूब चॅनलांत हाज्या लायव्ह स्ट्रीमिंग लायव्ह टेलिकास्ट तुमकां पळोवचें मेळटा देश विदेशांत आशिल्ल्या सक्कर जनक पळोवचेक अवकाश मध्ये बॉल मारला कॅच जो चांसेस आसा ना बॉल गेला सीधा बाहेरी सरन बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। दिस सुपर 6 इज ब्रॉट यू बाय मेडिक मेडिकेयर लायक एक शॉट लायक कोण पिक केला चंद करून मुखार येयलो बॉल सीधा पटयला हार्ड टेनिस बॉल आशिल्लो मित्र बॉल इजिली बाय गेला हांगा मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जालेले तशें जावन लायक एक पनिशमेंट दिवन सो इम्पॉर्टंट सो वॅल्युएबल रन्स हांगा ताणें बॅटरान स्कोर केला हाजे मध्ये 1 रन काडला 1 रनान स्कोर बोर्डांत वट्ट स्कोर आता दाखयता 27 53 इज द टार्गेट 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट ओवर नंबर 4 इज इन प्रोग्रेस लायक एक बॉल बाउंसर डिलिव्हरी मस्त वयर जावन and uneven bounce from the flatted delivery batsman completely missed jalo out mumalla umpire finger wide with and team Shirsi Super Kings tangelek hard wicket anpalla Khandit javano this is going to be a big wicket. What do you say, Sandeep ji? Well, this is definitely a big wicket and exactly on the right time. So now it will be a very difficult. The way they were looking for this same wicket and they have got. खंडित एक हॉर्ड ब्लो पडला हांगा शिर्सी सुपर किंग्स टीमाक हे एक प्रेशियस विकेट म्हणत ताने टायटन्स and हे विकेट पडल्यार मित्र ताने टायटन्स आर नाव बॅक ऑन ट्रॅक लायक एक पार्टनरशिप येता आशिल्ल्या दोग सेट बॅट्समॅन मध्ये खेळता आशिल्ली ती ह्या ओवरांत एक 6 पळोवचें मेळ्ळा जाल्यार एक क्रुशियल मोमेंटांत बॉलरान तागे टीमाक एक विकेट काण दिलेलो आसा सो आय वूड से दिस इज ए बिग विकेट फॉर टीम ताने टाइटन्स। बहुत बड़ी सफलता हासिल की है इस समय। अभी गेंदें बची है केवल 18 और आने वाले 18 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 18 बॉल बाकी 26 रन जाऊ का इक्वेशन पळयतना या एक मॅच खंडित काही क्लोज कॉन्टेस्ट जाता म्हणून पळोवचे एक्सपेक्ट करूत। मध्ये अंपायर सिग्नल येता चॅलेंज ओवर म्हणून इज इट 10 रन्स 10 ओके चॅलेंज स्कोर 10 रन स्कोर करता म्हणून एम केला बॅटिंग टीमाच्यान पळोवया चॅलेंज ओवरांत कसो पुरो जाता म्हणून। फर्स्ट बॉल सिद्धेश रमणी हातांत बॉल आसा चॅलेंज ओवराची फर्स्ट बॉल घालूंक सिद्धेश रमणी वापस मागची वता
सिद्धेश रमणी गळ्यात बॉल पेटायला बाहेरी दूर 6 रन्स डीजे सिद्धेश रमणीला फर्स्ट बॉलची बाहेर पेटायच्या तो अद्भुत जाऊन यशस्वी मारला बॅट्समॅनाकंग दोन्ही बॉल डॉट झाला मुकर मारचे प्रयत्न केलेला बट नेला राहील बॉल तेच बॅट्समॅन बीट जाल्लो वरलेल काम विकेट किपरान केलेलो बॉल कलेक्ट करून वापस बॉलराक दिला बॉल सिद्धेश रमणी हातांत सिद्धेश रमणी अनेक एक very very popular cricketer in the history of GSB tennis ball यापटे बॉल कॅच चान्सेस कॅच धरला लाईक एक विकेट सिद्धेश रमणीक चॅलेंज 50-50 ओव्हर अंतू फर्स्ट बॉल एक 6 दिलेला ज्याला ताजे एक लाईक कम बॅक करून एक विकेट काढला सिद्धेश रमणीनं Where do you go, my lovely? Where do you go? I wanna know, my lovely. I wanna know, where do you go? I wanna know, where do you go? इक्वेशन आता टफ आणि टफर जाते 15 बॉल आणि 30 रन जाऊ का 30 रन्स रिक्वायर्ड इन 15 बॉल्स आई बेग योर पार्डन 20 रन्स सॉरी 20 रन जाऊ का 15 बॉल बाकी सिद्धेश रमणी वापस एक पटी यापटी ऑन टू दी ऑफ साइड एक्स्ट्रा कवर रीजन आता लाइव एक शॉट 1 बाउंस ओवर द बाउंड्रीज 4 रन You know you love me, I know you care. Shout whenever, and I'll be there. You want my love. लाइक एक वेलकम बाउंड्री में मिले तो या एक बाउंड्री मारनो बैट्समैन आणि तागेल टीमाक स्वागत दिलेलं फॅन्टास्टिक बाउंड्री ब्रॉट यू बाय स्टार वॉकर यापैकी मुकरण मारचे प्रयत्न केला लाऊड अपील कॉट बिहाइंड कतील अपील करते विकेट कीपर तशीची ऑल दी फील्डर्स आई थिंक फील्डर अंपायर వచ్చి ప్రెషర్ గలి పడైతే సతి సో కంచే అంపాయర్ల పురస్కార్ ఏని సో కంచే డ్యామేజ్ నా సో డాట్ బాల్ జల్ల and Sandeep ji every dot ball will put more and more pressure on the batter at time like bowling गलतेस batsman कसं म्हणतात तुम्ही निश्चितच प्रत्येक डॉट चेंडूवर प्रेशर वाढणार आहे या ठिकाणी फलंदाजांचा आणि निश्चितच अशीच गोलंदाजी अपेक्षित आहे यावेळेला हा चेंडू पुन्हा एकदा परंतु ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर आणि वाईडचा इशारा करतायत अतिरिक्त धाव मिळेल आणि या अतिरिक्त धावेसोबत संघाची धावसंख्या पोहोचते आता 43 धावांवर every runs are very very important and meanwhile the bowler has given a extra run that is not a good point for the team because not only the runs are added but also they should bowl one more extra delivery so bowler must be very very alert now at this time of the game because he should bowl perfectly straight to the wicket to wicket bowling is very much required isn't it निश्चितच आता धाव संख्या झालेली आहे 44 3 गडी 5 आता फक्त 9 धावांची गरज आहे येणाऱ्या 12 चेंडूंवर 2 ओव्हर बाकी 9 रन चौका 9 runs required in 2 overs anything may happen here संदीप जी लायक एक मॅच पडचं म्हणते फर्स्ट मॅच अंतू मस्त इंटरेस्टिंग जाऊन आशिल्ले लायक ट्विस्ट मेळ्ळेले लास्ट ओव्हर अंतू आता अनेक एक लायक मैच अंगा पडचं मिळते IGCL 2024 अंतू 12 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है निश्चित तौर पर यह भी एक मुकाबला जबरदस्त होने जा रहा है यहां पर गेंदबाज पर निर्भर करेगा अगर डॉट गेंदे फेंकेंगे अगर विकेट चटकाएंगे तो यह भी एक जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है
लेकिन अपेक्षा है गेंदबाज से एक लायक विचार शिरसी सुपर किंग्स म्हणा काल 3 विकेट मात्र पडायला असं आणि 7 विकेट तांगे लगे सेफ जाऊन असं तेच जाऊन 9 रन काढच्या 12 बॉलां तो मस्त एक डिफिकल्ट टास्क नहीं बट बॉलर अलवेला तो खंडित जाऊन एक हार्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी असं निश्चित तौर पर देखना होगा। काफी बड़ा रनअप है, तेज करार गेंदबाजी करने में माहिर है। अगली गेंद देखते हैं। कमाल की गेंद हवा में, क्या ये कैच होगा? नहीं, लैंड होगी है सेफली। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाना चाहते थे लेकिन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने तुरंत ही उनको ना कहा। ये एक अच्छी रणनीति है, प्रत्येक गेंद पर रन बनाने की कोशिश जारी है। बॉल बॅटाच्या एडच्या लागून मस्त वेळ वाऱ्या रशिला बट दोन फिल्डर्स मध्य बॉल पडला खंचे फिल्डर वेकेंट रिजन पडला मित्र बॅट्समॅन सेफ जाऊन 1 रन काढला। नेक्स्ट बॉल गलूक बॉलर रेडी जातस दूर दखून धावणे अंपायर क्रॉस करून घालतस यापटी ऑन साइड बारचे प्रयत्न केले बट रनआउट चान्सेस आशिल्ले रिस्की रन आजूबाजू दोन्ही रन प्रयत्न करतात व ना खाली 1 रन मात्र मिळतस चिके रिस्की रन जाऊन आशिल्ले बहुशः चिक्के लेट जाल्यार बॅट्समॅन आउट जे चान्सेस आशिल्ले बट 1 रनान संतुष्ट जावका विथ दैट सिंगल तांगा स्कोर जे लागता 46 ऑन द स्कोर बोर्ड विथ 3 विकेट्स डाउन। व्हाट इज द इक्वेशन नाउ संदीप जी? 10 गेंदें बची है, 7 रनों की आवश्यकता है। अगली गेंद फेंकने के लिए गेंदबाज तैयार। इसी बीच हल्के हाथों से टैकल दिया है, इसको अलग की ओर देखना होगा। बहुत ही कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो था, काफी ऊपर था विकेटों से और ये रन लेने में कामयाब रहे। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है। खंडित जाऊन एक एग्रेसिव्ह रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणत असले रन्स जावका या संदर्भेरी फिल्डर्स आलबैरी तशीच बॉलर आलबैरी प्रेशर घालूक लायक कोण धावन रन काढला दोन जन बॅट्समॅनांना। व्हेरी गुड अंडरस्टँडिंग एंड व्हेरी गुड थिंकिंग। मात्र 6 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए इस मैच को। कुछ कमाल करके दिखाना होगा, चमत्कार करके दिखाना होगा गेंदबाज को। इसी बीच हो ये विकेट महत्वपूर्ण, बड़ी मछली जाल में फंस गई है। डीजे Condition, that's the beauty of the delivery. Fantastic bowling performance by the bowler. Thank you DJ. Body like bowling जाऊन आशिल्ल्या चरण कामतान राईट टायमार विकेट काढलेलो आसा। आत्ता इक्वेशन जेन्ना 8 बॉल बाकी आसा, 6 रन्स रिक्वायर्ड, 6 रन्स रिक्वायर्ड। क्रीज आयला श्रीधर मेंडो, द tall man, the skipper of Shirsi Super Kings, lot of responsibility on the shoulder. हगूर ऑन साइड मारला बट बॉल फिल्डर आशिल थंय जलरी रन धांवली खंडित जाऊन असल रन्स that is a risky run. I don't think these kinds of runs are not necessary for the team because just now they lost a wicket and this is a very risky risk thing what they are taking here. सही एंड पर थ्रो करना चाहिए था लेकिन गलत एंड पर थ्रो किया और उसकी वजह से 1 रन लेने में कामयाब रहे। प्लीज वहां पर जो खड़े हैं वो खिलाड़ी प्लीज वहां से हट जाए या तो नीचे बैठे प्लीज। चलिए अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। 7 गेंदें बची है, 5 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। ये देखना होगा क्या होगा। इसी बीच फुलटॉस के दबाव में हो ये गेंद जो है गैप में जाएगी सीधी सीमा रेखा पार, चौका। This boundary is brought to you by Medic Medicare. Sandeep ji, like एक shot जाऊन आशिल्ले attractive shot crashed over nicely to the covers,
खंयचे फिल्डर ते राबोवची चान्स नाशिल्ले ओवर द हेड ऑफ द फिल्डर खेळाला तशें बॉल सीधा गेले बाउंड्री लायना भायर रन जावची आवश्यकता नाची इतमध्ये टायमिंग्स लायक आशिल्ले प्लेसमेंट परफेक्ट आशिल्ले स्कोर्स लेवल जाला and Shirsi Super Kings are now slowly marching towards the victory here. Definitely, they need only a single run to win. That was quite risky stroke. It was, for a moment, his heart was in his mouth, but that is over. The fielder that's gone all the way for the boundary. And let's see now, just one run required to win. The bowler has brought into attack. His name is Dilip. Dilip is making few changes on the field work right now on strike. His name is Sridhar, captain of the team, captain to captain, making few changes on the field work now. Fielders are very close and it's umbrella fielding. Oh, what a ball, what a turn he has got. With the turn he wanted to play, not able to connect. First ball, that's the dot ball. Just a single required, that's why there is no pressure. But this is the game of cricket, anything can happen. Cricket is a game of glorious uncertainties. Once again, there you can see the three fielders are placed on onside for the captain. This one playing and this single has taken. Congratulations, it's a splendid victory. So Shirsi Super Kings have won the match comfortably against Thane Titans and they have entered into the next round. That means they have got 2 points in their points table. So congratulations Shirsi Super Kings. That's a fantastic victory for their team in the very first match which they have played. And very well played Thane Titans. Few more matches have to be played for your team because it's a league round match, so you don't have to lose your heart. You are not at all out of the tourney. Best of luck for the next game. Meanwhile, we'll go to the DJ. Yes, it's time for DJ to play some melodious song. It's kind of funny how life can change, can flip 180 in a matter of days. Sometimes love works in Collectors of the IGCA 2024 presented by Medic Medicare, brought to you by Star Walker. I refuse to give up, I refuse to give in. You're my everything. GSB Monday Dombivli presents IGCA Season 1. So everybody sing. One love for the mother's pride, one love for the times we cried, one love, gotta stay alive. I will survive. One love for the city streets, one love for the hip hop beats, one love. Oh, I do believe one love is all we need. शिवाजी पार्क्स टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज आप आइए कम बॉक्स में. चलिए दोनों टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी आइए प्लीज. शिवाजी पार्क टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए.
एक्स्ट्रा खिलाड़ी नहीं आए हैं अब तक, तो मैच नहीं शुरुआत कर सकते। प्लीज शिवाजी पार्क, प्लीज एक्स्ट्रा खिलाड़ी आइए। यस आइए, तुरंत ही आइए। दोनों बल्लेबाज आ चुके हैं, उनके नाम हमें पता नहीं है, प्लीज। श्री कृष्णा स्ट्राइक पर, निनाद स्ट्राइक पर, और आपको यहां पर आना है प्लीज। चलिए मैच की शुरुआत करेंगे। ओवर की पहली गेंद, कमाल की गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, एक्स्ट्रा के तौर पर यहां पर शुरुआत हो चुकी है। एक्स्ट्रा के तौर पर अब टीम का खाता खुल चुका है। 1 रन। निनाद और दैविक इस समय दोनों बल्लेबाज है मैदान पर। गेंदबाजी जो है लक्ष्मीश करते हुए। इसी बीच ये गेंद और इनफील्ड के ऊपर से, और गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा पार चौके के लिए। शानदार चौका। दिल ये फिसला 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 तेरे गोरे बदन पे फिसला, तेरे गुलाबी होंठों को देख मैं तो पिघला पिघला पिघला। तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के गोवा वाले बीच में, रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। गोवा वाले बीच में, रानी आंखें मीच के, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फोटो खींच के। थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे विशु। इस बार ये गेंद काफी उछाल, विकेट कीपर ने कोशिश की, नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज काफी आ चुके हैं, आगे आगे चुके थे, लेकिन पीछे मुड़ गए। डॉट बॉल। इसी बीच हवा में गेंद, क्या ये कैच होगा? देखना होगा जरूर। बहुत ही बढ़िया कैच, और ये पहले विकेट का पतन। डीजे विशु इन द मिक्स। थैंक यू। प्लीज 12th मैन, कैच किसने लिया? शरद नए बल्लेबाज इस समय आ चुके हैं। प्लीज कैच किसने लिया, पकड़ा है, बताइए। रतेश प्रभु को बोलो कौन है? रतेश किसने कैच पकड़ा? किसी को नहीं पता रहेगा। सिद्धेश ने कैच पकड़ा है। ओके, नए बल्लेबाज इस समय आ चुके हैं मैदान पर। शरद आ चुके हैं। पहले विकेट का पतन, अच्छी गेंद फेंकी थी, कमाल का कैच पकड़ा। बोला आगे फिर से एक बार तैयार, फिर से उछाल। ये देखिए अपील की है, लेकिन अंपायर उससे सहमत नहीं है। फिर से एक बार बल्लेबाज को यहां पर परेशान किया। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई इस समय, लाइन और लेंथ बढ़िया है, तेज कर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं। अधिकांश गेंदें आप देख सकते हैं ऑफ स्टंप के बाहर फेंक रहे हैं। इसी बीच फिर से बहुत ही कमाल की गेंद,
जो इलाका है जहां पर गेंद को पिच करवा रहे हैं वहां से दिक्कतें आ रही है बल्लेबाज को। इतना आसान नहीं है इनके ओवर में रन बनाना, तभी तो यहां पर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। अब तक का स्कोर हो चुका है केवल 5 गेंदे 5 रन। करारा प्रहार करने का प्रयास और फिर से चूके डॉट बॉल। तो पहले ओवर की समाप्ति केवल 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। डीजे विशु बहुत बढ़िया, कम ऑन। काजळ लावणे आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातला या साज, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास, नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीशी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ। पहले ओवर की समाप्ति 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अभी आ चुके हैं गणेश शुरुआत करेंगे इस ओवर की। ओ ये तो कमाल का स्ट्रोक, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जाएगी और नहीं रोक पाएंगे। चौके के लिए गेंद, बहुत जबरदस्त चौका। पवाला स्टेडियमाच्या एंट्रन्स गेटारी एक काउंटर असं, नॅचरल प्रॉडक्ट फॉर एसिडिटी, इंडायजेशन, नॉसिया, हेडेक ड्यू टू हँगओव्हर, तुम्ही खंडित जाऊन त्या विजिट करका म्हणून तुम्हाला रिक्वेस्ट। ओवर के बाद लेता हूं, ओवर के बाद 9 रन अब तक हो चुके हैं। गणेश की पहली गेंद पर चौका लगाया। ये देखिए बातचीत कर रहे अपने कप्तान से, थोड़ी फील्डिंग में जमावड़ी को बदलते हुए फील्डिंग के जो मिड विकेट पर थे उनको लॉन्ग ऑन पर लाया गया है। गणेश फिर से एक बार और सामना करने के लिए दैविक तैयार। इस बीच तो अंतराइज खेला है, बिल्कुल बढ़िया लॉन्ग ऑफ के ओर और फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए डीजे। संदीप जी दैविकन लायक एक शॉट मारला, गणेश नायक कोटा तयाल तसल एक प्लेयर बॉलर मारला म्हणा खंडित एक ग्रेट परफॉर्मन्स इथे म्हणारी गणेश नायक कोटा इज एन ऑलराउंडर प्लेयर, लायक एक क्रिकेटर आम्हाला जीएसबी क्रिकेट हिस्ट्रीन तो एक खाली बैटिंग मात नहीं अशी बॉलिंग अंतू लायक परफॉर्मन्स दाखयता, फील्डिंग अंतू लायक एक तागेला कॅलिबर दाखयता। जीपीएल म्हणून एव्हरी इयर मंगळवार जाता तंतू ताणे मॅन ऑफ द सीरीज पुढे एक बाईक घेतली तसं एक अद्भुत जन आशिल्लो प्लेयर गणेश नायक कोटा। निश्चित तौर पर गणेश एक कमाल के खिलाड़ी है और इस समय देखिए पहले 2 गेंद पर 2 चौके आए, उसके बाद जो अच्छी वापसी की है डॉट गेंद फेंक कर, स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 पर। पहले ओवर में केवल 5 रन आए थे। इसी बीच अगली गेंद, ओहो विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, लेकिन अंपायर ने नो बॉल का भी इशारा किया है शायद। यस, क्या कुछ हुआ है? यस, अंपायर ने यहां पर राय ली है, थर्ड अंपायर, और कुछ ही क्षणों में हमारी तकनीकी टीम यहां पर चेक करके बताएगी कि क्या कुछ हुआ है। ये किसके लिए अपील थी? So the decision has gone to the third umpire now. Third umpire will check in the television screen now what exactly has happened. So within a short while from now we'll come to know what would be the decision. तई तुम्हाला commentary box लागी
एक हॉड LED स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन आणि ताजे रिप्ले तुमकां पळोवचें मेळटा बॉलिंग गल्ला विकेट कीपरान लायक करून गॅदर केल्ले बॅट्समॅनान मुखार मारचे प्रयत्न केलेले एक एंगला देखून पळयतना बॅट चिके वाऱ्यार आशिल्ले म्हणके दिसतास and the decision from the third umpire is batsman is out. दैविक आउट जाला बॉल विकेट कीपर लगायतना बॅट्समॅन आला बॅट वाऱ्यार आशिल्ले क्रिसा भितर नाशिल्ले तशें जावन थर्ड अंपायरान कडेक टेलिव्हिजन स्क्रीनान तो पळोवन आउट म्हूण म्हणला तशें जावन एक विकेट पडलेल्या संघा बॅटिंग टीमाक. धन्यवाद भटपाम. हे आमगेले फर्स्ट थर्ड अंपायरान दिलेले की जो रेफर टू थर्ड अंपायर वॉज दिस द फर्स्ट टाइम IGL जाला हाजी फुडें जाला. ओके ग्रेट. म्हळ्यार आमी स्वल्प वेळ हांगा ना आशिल्ली ती आमगेले एक अबाव 40 एक्सायटींग क्रिकेट मॅच चलता आशिल्ले थंयची काही गमत करची आशिल्ली ना आमी. हांव थोडे वेळा खातीर माईक घेतला इत म्हळ्यार आमगेले सेकंड मॅच जाल्लेलो आसा आनी सेकंड मॅन ऑफ द मॅचाक हांव हांगा आमंत्रीत करता. जोरान ताळी वाजून स्वागत करता वेंकटेश प्रभुगांवकर मैन ऑफ द मैच अवार्ड घेवचे खातीर ट्रॉफीला येवका म्हणून विनंती. पटपाम संदीप जी ओवर टू यू. थैंक यू कमाल की स्टंपिंग की है. सो दोन्ही मॅचांत तो वेंकटेश प्रभूक मॅन ऑफ द मॅच मेळ्ळेलो आसा. खंडीत जावन आमी कंग्रॅच्युलेशन सांगता आसा ती वेंकटेश प्रभूक एक अद्भुत जावन आशिल्ले परफॉर्मन्स दाखोवन तागेल्या टिमाक ताणें मॅच विन करून दिलेलो आसा. आतां तिन्ही मॅचांक चलतर आसा. वट्ट स्कोर जाला 13 for the loss of 2 wickets. दोन ओव्हर कंप्लीट झालेला आसा. सॉरी एक बॉल बाकी आसा. दोन्ही ओव्हराचे कडे बॉल. गणेश नायक बॉलिंग घालता या पटी बॉल बैट्समैन आला आई मीन बैट बैट्समैन आला हाथा देखून निसरला स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिज हँड्स. तो एक फील्डर आशिल्ले खंडीत ताका एक डॅमेज जावंक चान्सेस आशिल्ले बट लकीली कसं जाय न्ही फिल्डराक. सो खंयचे रन ना. थाने टायटन्स टीमाचे वेंकटेश प्रभुगांवकर मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट करचे खातीर ट्रॉफीला येवका म्हणून विनंती. वेंकटेश प्रभुगांवकर. यापटी ऑन साइड मारला तो फिल्डर प्रोटेक्शन मिसफील्ड दोन्ही रनांचे एडवांटेज काढूक सक्सेस जाली ती मिसफील्ड जाल्यार मी ताजी एडवांटेज घेतला आणि 2 रन इजिली कंप्लीट केला विदाउट एनी प्रॉब्लेम. सो लास्ट बॉलान तो 2 रन येयले. सो ओव्हर कंप्लीट जाला. ओव्हर कंप्लीट जाता आशिल्ले म्हणजे वोट स्कोर 16. वेंकटेश प्रभुगांवकर मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड कलेक्ट करचे खातीर ट्रॉफीला येवका म्हणून विनंती. थाने टायटन्स टीमाचो वेंकटेश प्रभुगांवकर सेकंड मॅच सिरसी येद्रा विन जाल्लेलो आसाची वेंकटेशान येवका म्हणून विनंती. थाने टायटन्स टीम तुम्ही ग्राउंडार आसा जाल्यार तुमगेल्या टीम मेंबर वेंकटेशाक हांगा पेटोवका म्हणून विनंती. रन जाला. 2 ओव्हर कंप्लीट जाला. 3 ओव्हर प्रारंभ जातस. 9 बॉलराक इंट्रोड्यूस केला. म्हाका दिसता कृष्णा 3 ओव्हर घालूंक रेडी जातस. स्टेडियम एंड देखून पावला टायटन्स पेविलियन एंड देखून एक लॉंग रन अप घेवन कृष्णा बॉलिंग घालूंक तयार जाला ओव्हर द विकेट जावन. 5 फिल्डर्स ऑन साइड तशींची 3
3 ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೆಳಲಸ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಪುಷ್ ಕೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ದಿವನು 1 ರನ್ ಕಳಲಸ್ ಹೊಗುರಗುರ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ತಸ್ 1 ರನ್ ಆಡ್ ಜಾವನು ಅತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜಲ್ಲ 17 ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. Correction, Venkatesh Prabhugaonkar from Sirsi Super King. Sorry. Venkatesh Prabhugaonkar Sirsi Super King acho second match acha man of the match. तागेला man of the match award collect करताना सर जोरान ताळी वाजू का म्हणून विनंती. सो इंटर जीएसबी क्रिकेट लीग चलतेस टाइटन स्टेडियम डोंबिवली अंतू 8 टीम्स एक टूर्नामेंट अंतू पार्टिसिपेट करतेस. यापटी डाउन द लेग साइड खंडित जाऊन वाईट जाऊ का खंचे डाउट ना खंचे आर्ग्युमेंट ना आशिल बॉलर आला इथं मला तक सिच्युएशन गोतेस लेग स्टंप वगैरे मस्त बाहेर गेला बॉल. सो अंपायर वाईट म्हणून म्हणला 1 रन एक्स्ट्रा रुपारी ऍड जातस स्कोर बोर्ड अंतू. सो ಒಟ್ಟು 8 ಟೀಮ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ करते सती ग्रुप ए इंतू 4 टीम्स तशीच ग्रुप बी इंतू 4 टीम. लायक एक शॉट वारेर आशिल्ले कॅच जो चान्सेस आशिल्ले बट कॅच ड्रॉप जाला. लायक एक प्रयत्न म्हणत फिल्डराला वैरी मत्ता वैर देखून बॉल वत्ता आशिल्ले ओवर द हेड ऑफ द फील्डर केलचे प्रयत्न केलेले बट लास्ट मोमेंट अंतू ऑलमोस्ट फ्लाइंग लायक बर्ड ताका दोन्ही पाय वारेर आशिल्ले कॅच धरचे प्रयत्न खंडित केला फिल्डरान बट हत्तांक बैसनी बॉल लकीली बॅट्समॅन सर्वाइव जाला आणि 1 रन मेळालस. कृष्णा नेक्स्ट बॉल लायक एक शॉट गॅप मारला दोन फिल्डराल मध्ये इझिली मारनो 1 रन काढलास. सो 8 टीम्स खेळची टूर्नामेंट तो ग्रुप एंतो डोंबिवली दोरके 7 ठाणे टायटन्स अंधेरी सुपर नॅचरल्स तशींची शिरसी सुपर किंग्स असल 4 टीम्स आणि ग्रुप बी तो डीबी स्ट्रायकर्स किंग सर्कल नाईट रायडर्स नवी मुंबई ईगल्स तशींची शिवाजी पार्क टायगर्स म्हणाल्या 4 टीम्स. सो एमसीएल अंतू शिवाजी पार्क टायगर्स एक 2 वर्षा पुढे एक चॅम्पियन झाला टीम लाईट प्लेयर्स अशी टीम यापैकी या एक ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट जावन आशिल्ले मित्र मस्त पुरा लाईट प्लेयर्स सकड 8 टीम अंतू 110 गेली ती. सो खंडित जावन या एक लायक टूर्नामेंट 2 दिवसाचे क्रिकेट फेस्टिवल क्रिकेट कार्निवल एक मेगा एक्स्ट्रा क्रिकेट वैज्ञान म्हणता हम संदीप जी. क्रिकेट का मेला है और इस समय दर्शक इस मैच का देखकर मजा ले रहे हैं और हमारे खिलाड़ी जो है खेलकर मजा ले रहे हैं. कमाल का ये लाइव टेलीकास्ट भी चलता हुआ डीजे विशु इन द मिक्स बहुत बढ़िया डीजे लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन भी बड़ा लगा है और कमाल का ये ग्राउंड एक लायक एक लीग नवे नमुने क्रिकेट 50-50 रूल चॅलेंज ओव्हर म्हणून इंट्रोड्यूस केला या एक टूर्नामेंट अंतू खंडित त्या एक नवे कॉन्सेप्ट खंडित या टूर्नामेंटाचे प्रत्येक मैच एक ट्विस्ट दिता म्हणून मगेल अभिप्राय. निश्चित तौर पे ये जबरदस्त आयोजन. इस बार देखिए कलाइयों का इस्तेमाल किया हेलीकॉप्टर ड्राइव करने का प्रयास लेकिन तुरंत ही थ्रो किया 1 रन जोखिम भरा पूरा किया है. इस 1 रन के मदद से स्कोर हो चुका है शिवाजी पार्क टाइगर्स का भी 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और ये ओवर नंबर इस समय चलता हुआ 4था ओवर जारी है. ये फिर से एक बार गेंदबाज तैयार कम से कम रन अप पेस भी अच्छा निर्माण करते हैं.
ये सीधे बल्ले से खेल दिया है, सीधे फील्डर के पास, और डॉट बॉल। कुछ डॉट गेंदें फेंकना जरूरी है, इससे प्रेशर निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और जब भी प्रेशर बढ़ता है तो बल्लेबाज गलती कर बैठता है। अगली गेंद फेंकने के लिए फिर से एक बार तैयार। तेज करार गेंद बॉल की बहुत ही बढ़िया साइड आर्म बॉल फेंका था, ब्लॉक होल में यॉर्क करने का प्रयास, आवाज भी आई थी लेकिन ठीक तरीके से नहीं ले पाए बल्लेबाज बल्ले पर। लाइन और लेंथ उनके पास बहुत बढ़िया है, जो गति है उनके पास वो लाजवाब है। ये देखिए जगह से खेल दिया, गेंद हवा में है, और ये क्या कुछ हुआ है वहां पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 26 रन इन 2 रनों के मदद से। दो गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है, क्या बड़ा शो खेल पाएंगे? काफी समय से चौका नहीं लगा है। इस ओवर की बात की जाए तो 2 डॉट गेंदें, पहली गेंद पर सिंगल और अभी गेंद पर 2 रन आए थे। ये देखिए कदमों का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से कट किया पॉइंट के ओर, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन अच्छा थ्रो, बहुत ही जबरदस्त थ्रो, सही एंड पहचान कर थ्रो किया, एक ही रन से संतुष्ट। अब तक इस ओवर में 4 रन आए हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। अब तक का स्कोर हो चुका है 27। 8 टीमें शामिल है इस टूर्नामेंट में। स्ट्राइक पर इस समय है सुमित। ये तो जगह से खेला, ये उड़ता हुआ 6 रन, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक। This super sixer is brought to you by Star Walker. बादल बरसा बिजुली सावन को पानी, चिसो चिसो मौसम छ तातो जवानी, हे मुटु मेरो दुख्न थाल्यो नि, ज्यान मेरो सुक्न थाल्यो नि, के होला भन न मायाको ओखती, हे मायाको ओखती। बादल बरसा बिजुली सावन को पानी, चिसो चिसो मौसम छ तातो जवानी, थाल्यो नि ज्यान मेरो सुक्न थाल्यो नि, के होला भन न। 4 ओव्हर कंप्लीट झाला। एक ह्यूज डिस्कशन जाते संघ तुम्ही पळयत आसती IGCL 2024 सीझन 1चे डे नंबर 1चे 3rd मॅच बिटवीन शिवाजी पार्क टाइगर्स वर्सेस किंग सर्कल नाइट रायडर्स। लास्ट बॉलान तो एक IGCL सुपर 6 पळोवचें मेळ्ळें। सो 4 ओव्हर कंप्लीट जाता आशिल्ले के रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड इज 3-3 with just 2 wickets down. आता 5 ओव्हर घालूक नवे बॉलर येतस। थँक्यू भटमाम। 5 ओव्हर सोर जावचे फुडें एक क्विक अनाउन्समेंट, जेवण स्टार्ट जालें आसा आनी बॉलिवूडांत 1:40 की लास्ट लोकल आस पळय, तशी हांगा 11:30 की लास्ट बस आसा। डोंबिवली कल्याण कोण कोण आयिल्ली ती बसारी तांगेल खातीर लास्ट बस 11:30 हांगाच्यान सोडता। सो वगी वगी जेवून तुमी 11:30 बस सोडूनच जयता। थँक्यू भटमाम, ओवर टू यू। थैंक यू। सो वेंकटेश प्रभु बॉलिंगाक आयला। लायक एक बॉलिंग आर्म एक्शन आशिल्ल्या बॉलर वेंकटेश प्रभु रिसेंटली GPL अंतू मुल्केच्या वरलंके फायटर्स टीमांत खेळ्ळो एक प्लेयर, तशीच तेगेल टीमाक तेगेल टीम चॅम्पियन जावन आशिल्ले ते एक GPL टुर्नामेंटांतू। सो तो आतां बॉलिंग घालतस, दोन्ही बॉल घालूक आतां वेंकटेश लॉंग रन अप घेवन चंद एक बॉलिंग आर्म एक्शन तेगेलें।
परफेक्ट कशी इंटरनॅशनल क्रिकेटांतू एक फास्ट बॉलराला बॉलिंग ऍक्शन असते की तसलेच एक ऍक्शन आशिल्लो एक बॉलर बहुशः तांच्या टिमाचे एक बॉलिंग ब्रह्मास्त्र म्हणून म्हणत तसल एक फास्ट बॉलर मस्त स्पीडार गळचित असला बॉलर वापस वेंकटेश प्रभू कंटिन्यू करता ओव्हर या पटी पुल केला बट तो फिल्डर असं फिल्डरान दोरचे पुढे 1 रन धांवन कंप्लीट केला स्क्वेअर लेगांत आशिल्ल्या फिल्डराक 1 रन प्रिव्हेंट करूं जायनी सो 3 बॉल घाला वेंकटेश प्रभून ह्या ओव्हरांत तो खाली 1 रन मात्र येईल असं 4 बॉल घालूक वापस वेंकटेश प्रभू बॉल घेवन मागची वतस 4 ओव्हराच्या 4 बॉल वेंकटेश प्रभू या पटी गॅप मारला बॉल वाऱ्यार आशिल्ले कार्तिक असते कार्तिकान येवन बॉल रब्बयले गॅप गेलेले मित्र खंयचे डॅमेज जायनी बॅट्समॅनाक इजिली 2 रन धांवन कंप्लीट केला कार्तिकान येवन बॉल फील्ड करतच पुढे 2 रन करचे भरपूर अवकाश आशिल्ले 2 रन मेळ्ळा ಒಟ್ಟು 3 ರನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು लायक बॉल मस्त एक फास्ट जावन आयिल्ली बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप डिलिव्हरी तितले लायक कोण विकेट किपरान धरला आसा बॅट्समॅन कंप्लीटली मिस जालो बॅट आणि बॉल मध्ये खंयचे कनेक्शन ना अशी बॉल सीधा गेले विकेट किपराला हातांतू सो तशींची भरलेलं काम विकेट किपरान केलेलं आसा बॉल रिटर्न केला बॉलराक बॉल वेंकटेश प्रभू हातांतू या पटी मारचे प्रयत्न केला बट मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जायनी ऑन साइड ड्राइव करचे प्रयत्न आशिल्ले बॅट्समॅनान ऑन साइड अंतू म्हळ्यार फायन लेग मारचे स्क्वेअर लेग मारचे प्रयत्न केलेले बट समज कनेक्शन मेळनातील मित्र कॉन्टॅक्ट नातील मित्र खाली 1 रन आयला लायक एक प्रोडक्टिव्ह ओव्हर म्हणत वेंकटेश प्रभून सो ओव्हर कंप्लीट जाला आता नेक्स्ट ओव्हर विल बी चॅलेंज 50-50 ओव्हर सो संदीप जी 50-50 चैलेंज ओवर तो कैसा प्रोजेक्ट पूरा हुआ ये ओवर जिसमें चांसेस है आप चैलेंज करेंगे तो आपको अगर चैलेंज पूरा करते तो और रन मिलेंगे देखना होगा इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे कि नहीं 38 रन हो चुके हैं फिलहाल गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं श्री कृष्णा वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जय श्री कृष्णा इस बार देखिए ऑन द राइज खेला ऑन साइड पर स्क्वेयर की दिशा में और कमाल का थ्रो किया 1 रन केवल 5 गेंदें बची है चैलेंज पूरा करने के लिए दस का चैलेंज है 10 का दम है बल्लेबाज तैयार स्ट्राइक पर सुनीत स्ट्राइक पर हवा में गेंद काफी ऊंची गई है गेंद ओ ये विकेट का पतन कृष्णा को यहां पर सफलता मिली है फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास और ये विकेट का पतन बहुत बढ़िया
और एक विकेट गिर गया। संदीप जी, कृष्णम वंदेम जगद्गुरुम म्हणून तुम्ही आता म्हणाल, मात्र तशीच लगातार दोन्ही बॉलांतू दोन्ही विकेटांक कृष्णान काढलेलं असं. थैंक यू। और सुरेश जी, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के बड़े संत ने कहा था, संत तुकाराम ने, कि आम्ही काय गुणाचे खातो श्री राम आम्हाला देतो. इस बीच ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा हवा में गेंद, ओ माय गॉड, ये जबरदस्त कैच, विकेट का पतन, 3 विकेट, एक रनआउट के तौर पर था. थैंक यू, क्या बात है डीजे विशु, कमाल का ये गेंद. इस बार देखिए आड़े बल्ले से फिर से खेल दिया और मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, गेंद पर झपटे, देखिए गेंद को लेकर आए कृष्ण के पास. बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है. इस ओवर में तो विकेट गिरे हैं 3, लेकिन ये पिछला वाला कैच कमाल का था, एक ने छोड़ा एक ने पकड़ा, पकड़ा पकड़ी. इस बीच देखिए 2 विकेटों के पतन पर 38 रन. पवन के लिए गेंद लॉक होल में, बिल्कुल जहां पर बल्लेबाज अपना बल्ला रखता है. और ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर अपडेट करके आपको बताएंगे कि कितना टोटल स्कोर हो चुका है. स्कोर हो चुका है 39, 39 रन. 6 ओवर के बाद 39 रन हो चुके हैं. पांच विकेटें गिर चुकी है. कृष्णा ने तो कमाल का ओवर फेंका, उस ओवर में तो 3 विकेटें चली गई थी. 39 रन. सुरेश जी क्या कहेंगे अभी आप? 100 ओव्हर कंप्लीट झाला, 39 रन्स म्हणा चिक्के स्कोर होऊन अशी दिसतेस. इथं म्हणा फर्स्ट मॅच आम्ही पळयला 40 वयर गेला, तदनंतर सेकंड मॅच 53 झालेला. आता या फायनल ओव्हरान कितले ते पळवा. बॉल वाळर असं बट प्रज्वल फिल्डर तागेला चिके ड्यू अशिल मित्र ताका रीच करू जायनी. हाजे मध्ये आय थिंक 2 रन्स हॅव बीन टेकन, करेक्ट न्हू? 2 रन धावली ती, 2 रन कंप्लीट केला. 41 रन्स जाला. लास्ट ओवर चलते रस्सा. याकडे क्लीन बॉल, दॅट इज द ब्युटी ऑफ द बॉलिंग. फॅन्टास्टिक परफेक्ट डिलिव्हरी. लेग साइड बाहेर वरत म्हणून बॅट्समॅन लेखिलं फ्लिक करचे प्रयत्न केलेला, बट बॅट मेन बॉल बॉल सीधा वचून लेग आणि मिडल स्टंप लागेल असं. क्लीन बॉल. Mama, I
चल नको माझे वांगडा चल नको मेरे साथ चल नको मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो. Thank you, DJ, for that melodious music. So batsman and bowler and wicket काढला असं bold करून नवे batter and Chris Ayla. Laikono crashed very nicely to the covers. Karthikana ball field corner throw केला bowler sendak but तगेल throw ಏನು bowler reach जो स्पूड एक रन batsman and दावनो काढला असं. यापैकी फुल टॉस जाऊन कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला बट ही कुडंट टेक द एडवांटेज ऑफ द ज्युसी फुल टॉस मुळे तर सो एक रन मात्र मेळ्ळा. खंडीत जाऊन एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ले बॉल भायर पेटोवचे बट मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जायतील मित्र खाली एक रन मेळ्ळा तर एक प्रोटेक्शन आशिल्ले मिड विकेटान तू फिल्डरान क्विकली थ्रो केले तशें जावन एक रन मात्र एक रनान संतोष जावका बॅट्समॅनाक दोन्ही रनाक खंयचे अवकाश नाशिल्ले. यापैकी खंडीत जावन वाईट जावका खंयचे डाऊट ना बॉल लेग स्टंप भायर आशिल्ले लेग स्टंप भायर गेल्ली म्हणजे खंडीत जावन अंपायर आसता वाईट म्हणून म्हणटा ती सो एक रन एक्स्ट्रा ऍड जावन आतां स्कोर बोर्डान ಒಟ್ಟು स्कोर दाखयता 4-4. यापैकी बॉल वाडर स्ट्रेट टू द थ्रोट्स ऑफ द फील्ड ऑफ मिड विकेट आशिल्ले फिल्डर खंयचे चूक करले चंद करले. He kept his eyes on the ball म्हणत लायक कोण गॅदर केला तशें जावन अनेक विकेट हांगा पडलेलो आसा. कैच किसने लिया कैच कार्तिक कैच किसने लिया है कार्तिक सो चिरागन लायक कोर्नु बॉल कैच केलेलो आसा मिड विकेट अंतू यूथ ऑफ GSB यूट्यूब चॅनल अंतू आज लाईव्ह टेलिकास्ट पळोवचें मेळटस देश विदेशांत आशिल्ले सक्कड GSB क्रिकेट लवर्स कोण पुरो आसत की तांकां एक पळोवचें एक सुवर्ण अवकाश हांगा IGCL ऑर्गनायझेशन कोण दिलेलो आसा. GSB मंडल डोंबिवली आणि फर्स्ट टाइम एक लायक क्रिकेट टूर्नामेंट कोरका म्हणून तांगेले एक ड्रीम आशिल्ले हाजे मध्ये नो बॉल म्हणून म्हणला नो बॉलांतू 1+1 2 रन मेळ्ळे प्लस फ्री हिट मेळटा आसा. आता फ्री हिटाचे खंयचे नमुन्याचे एडवांटेज घेता या एक ताजे लाभ कशे घेता बॅटर पळोवका खंडीत एक लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा बॅट्समॅनाक हांगा बॉल भायर पेटोवचे फ्री हिटाचे एडवांटेज घेत की पळोवया. बॉल वारार आसा देर इज अ फिल्डर कैच केला बट सिन्स इट वॉज अ फ्री हिट डिलिव्हरी बॅट्समॅन आउट जायनी हाजे मध्ये 2 रन धांवली ती दोन्ही रन कंप्लीट केलेलो आसा. IGCL 2024 तिन्ही मॅच हांगा चलतर आसा. सो इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स एंड जाला 48 रन्स स्कोर केला हांगा टीम शिवाजी पार्क टायगर्साच्यान आणि 49 टार्गेट मेळटस नाईट रायडर्स टीमाक पळोवया या 49 टार्गेट अचीव करता की ना म्हणो. सो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक and after a short break we will once again come back very soon and meanwhile I request DJ to play some good music. Below
नको माझे वांगडा चल नको माझे वांगडा चल नको मेरे साथ चल नको मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो माझे वांगडा चल नको मेरे साथ चल नको मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो त्या माजोरीचा पिल्लंकडा येतं सांगायलो त्या माजोरीचा पिल्लंकडा येतं सांगायलो तुझे वांगडा येऊच नाय तेरे साथ येऊच नाय तुझे वांगडा येऊच नाय तेरे साथ येऊच नाय तुझे मुंबईचे नखरे मका परवडूचे नाय तेरे मुंबई के नखरे मुझे परवडूचे नाय दिल मामा आयलो आणि खंड पुन्हा लिपिलो दिल मामा आयलो मॅच नंबर 4 DB स्ट्रायकर्स वर्सेस नवी मुंबई ईगल्स दोन्ही टीमाच्या कॅप्टन्साक टॉसा खातीर ट्रॉफी सेक्शन आपे तरस ट्रॉफी खंय आसा ते दोन्ही टीमाच्या कॅप्टन्सान येवका कॅप्टन्स ऑफ टीम DB स्ट्रायकर्स अँड नवी मुंबई ईगल्स So the next match between DB Strikers and Navi Mumbai Eagles. Navi Mumbai Eagles have won the toss आणि त्यांनी first bowling करता म्हणून decision घेतलेला सर. DB Strikers will be batting first. आमगेला ह्या match जाल्ली मागेरी second inning जाल्ली मागेरी. ह्या match जाल्ली मागेरी. That's the fourth match. Sorry, DB Strikers versus Navi Mumbai Eagles. So, thank you Vishal for helping us with the toss. चलिए मैच की शुरुआत करेंगे. बल्लेबाज आ चुके हैं. विनायक स्ट्राइक पर है, उनके साथ नॉन स्ट्राइक पर है आदर्श. गेंदबाजी करेंगे.
चिराग नॉन स्ट्राइक एंड पर है। शुरुआत करेंगे अभी। इस बीच ये तेज कर्रार गेंद थी, उछाल भी कमाल की थी और बल्लेबाज ने कोशिश की थी बड़ा स्ट्रोक खेलने की। डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहां पर। आदर्श ने डॉट के साथ शुरुआत की। इसी बीच ये गेंद विकेट कीपर ने कोशिश की, बहुत ही बढ़िया विकेट का पतन। आदर्श को सफलता मिली है। डीजे विशु। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए। थका थका जो फील करे वो जाके दो रेड बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। गेंदबाज बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज का नाम बताइए। चिराग। बैट्समैन कौन? प्लीज रुकिए, बैट्समैन का नाम बताइए प्लीज। कार्तिक। ओके। बहुत अच्छी गेंद और इस गेंद पर बहुत बढ़िया फील्डिंग भी की है। कमाल की कोशिश, थ्रो भी बढ़िया किया, जबरदस्त थ्रो, जबरदस्त फील्डिंग। और इस समय स्कोर हो चुका है केवल 2 रन। कस्बों का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया और मिड ऑन पर डायरेक्टेड और कमाल का थ्रो, विकेट का पतन, दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। जबरदस्त थ्रो किया, फील्डिंग भी बहुत बढ़िया। डीजे। थ्रो किसने किया? थ्रो थ्रो किसने किया है? थ्रो करने वाले का नाम? अथर्व ने थ्रो किया है, बहुत बढ़िया। नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर। बैट्समैन नेम प्लीज। चिराग। चिराग के साथ कौन है बल्लेबाजी के लिए? बैट्समैन नेम? सुनाई नहीं दे रहा है प्लीज। ओके, श्री कृष्णा। कमाल की गेंदबाजी की थी। ये तेज कर्रार गेंद, लेकिन लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन। स्कोर अभी हो चुका है 3 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर।
किंग सर्कल के कोई एक्स्ट्रा खिलाड़ी होंगे तो प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स में। इसी बीच देखिए बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, कमाल का फील्डिंग का प्रदर्शन। मौका रनआउट का बिल्कुल नहीं, जॉन्टी रोड्स से ट्रेनिंग उन्होंने ली है, बहुत ही बढ़िया रोका और थ्रो भी किया। और इसी बीच ये देखिए हवा में गेंद थी, लेकिन एक टपक आती हुई गेंद जो है सीमा रेखा पार, चौके के लिए शानदार चौका। से स्कोर 8 पर जाकर पहुंच चुका है। गेंदबाजी के लिए अभी गेंदबाज आ चुके हैं, नए बल्लेबाज गेंदबाज पवन आ चुके हैं और ऐसे ही स्ट्रोक्स खेलने होंगे, चौके छक्के लगाने होंगे क्योंकि इस लक्ष्य जो है 49 का पवन गेंदबाजी के लिए, और पवन से काफी अपेक्षाएं है इस समय। IGCL 2024 में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। इसी बीच और ये मौका बन सकता है, कैच आउट, विकेट का पतन। शिवम ने ये कैच लिया है। तो नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर आ चुके हैं। गणेश comes to center and now the bowler is claiming wicket and wicket number 3 has gone. Total score is 8. .35 balls are there, 41 run required to win.
Well, anything can happen, but already they have lost their 3 important wickets. Well, the batter was not ready, and this is dead ball. 3 batters back to dugout, and that all credit goes to bowler. Really, the bowling is really well. That's played safe stroke again, and very good running between the wicket. Mid-on fielder was trying to collect that ball with a single hand, but meanwhile quick single taken, cheeky single has taken, while chasing of 49 total on board. Somebody has to hang around and need to take run on every ball. They need to be busy with the run now, and they must take advantage of the loose ball as well. Plenty of viewers are enjoying this match. This one again, and that was straight to the fielder's hand, and no chance for the single, restricting from taking single. Good fielding, good stop there. Flick up the wrist, quick throw, and again a easy single taken. That single takes to 10. Over number 2 in progress. What a turn. It's a good turn now. Respected that one, and it's dot ball. Will definitely increase the pressure on the batters, producing some dot ball. This will be into block hole. And exactly he is doing the bowling where the fielders are placed. Whenever the batter hits the ball, that goes to the fielder's hand. And after 2 overs, 10 runs on the board with the loss of 3 wickets. DJ. मुंबईची बाई तुझ्या बेफिकर वाटा बेसली गावात सुट्टीचा 50चा वाटा वारा खाली ते मावऱ्याला ताजा आहे ताजा बाराशे बोलतय ए ब्रदर कवर चाललास ये मावरा घे ये ताजा आहे ताजा बर्फांचा नाही ये जा मेले चल पोरी जरा चिल कर चिल कर चिल कर चिल कर राग तुझा हिल कर हिल कर हिल कर आगो गाली तुझी बीप कर राग तुझा हिल कर हिल कर हिल कर पोरी जरा चिल कर चिल कर चिल कर चिल कर विकेट कीपर चेंज हो गया। हाँ वो ये होगा ना क्या चेंज हो गया गेंदबाज को बॉलर बोरकर कैप्टन कैप्टन आज के इस समय गेंदबाजी के लिए कैप्टन हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. Sri Krishna on strike. What a piece of bowling this is. What a turn. First ball of the over, and the batter was little confused. This time away from the body down to the deep cover region. But the fielder who is inside the 30-yard circle stops that, and that's a good throw.
perfect piece of bowling now. There is no problem with the single and double. That's again into block hole. Wanted to drive, not able to connect well. And meanwhile the single has taken. Captain has taken whole responsibility on his shoulder now. And is doing a fine job. Okay, lights are off. Switch it and not able to again connect. Few dot balls will certainly increase the pressure on batters. 12 runs still on board. Over number 3rd in progress. Hooked it in the air, but that is out of the park. Goes in declare zone for the 2 runs. 1 run. So 2 runs will be added into the total, and now total moves up to 14. 25 ball, 35 more runs to win. That exactly hits to the fielder's hand, and that's the end of the successful over. After 3 overs, 14 runs on board with the loss of 3 wickets. काजळ लावणे आले मी आज असं नका बघू अहो येते मला लाज केला शृंगार आज घातला या साज दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोरनीशी चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ So there's going to be the change in the commentary box. I would request on microphone Mr. Suresh Bhatt. Over to him. Thank you. किंग्स सर्कल नाईट रायडर्सान 14 रन काढला 3 ओव्हरांतू 3 विकेट लॉस्ट जाला 4 ओव्हर गलूक दैविक नायक फर्स्ट बॉल इज अ डॉट बॉल गणेश नायक कोठा आणि श्रीकृष्ण दोग जण बॅटर्स क्रिसार सती ऑफ टॅप करून मस्त भायर गेला बॉल ह्या खंडीत जावन वायड जावका खंयचे डाऊट नाशिल्ले अंपायरान वायड म्हण म्हणला सो एक एक्स्ट्रा ऍड जावन ಒಟ್ಟು जाल्ले 15 that means 23 balls remaining and 34 runs required like एक
क्लोज कॉन्टेस्ट जावचे चान्सेस हे मॅच एक एक्साइटिंग मॅच पळोवचे मेळटा खंडीत जावनी पुल केले ऑन साइडांतू बट तो एक प्रोटेक्शन आशिल्लें मित बॅटरान एक रनान संतोष जावका दोन्ही रनाक खंयचे अवकाश नाशिल्ले ते गणेश नायकाक सिंगल मेळ्ळा गणेश नायकाक सो गणेश नायकाला ಒಟ್ಟು स्कोर जल्ला 3 स बॉल फेस स्कोर नो 3 रन काढला तशीच कृष्णा आता वेट करतस क्रिसारी 8 बॉल फेस स्कोर नो 8 रनर खेळतस कृष्णा श्री कृष्णा वापस रेडी जल्ला बॅटिंग करूक तशीच दैविक नायक 3 बॉल घालूक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड केलालस लायक एक फिल्डिंग खंडीत जावन एक बाउंड्री सेव केला म्हणत बॉल मस्त स्पीडार ट्रॅव्हल जात आशिल्ले लॉंग ऑन अंतू जाल्यार तितले लायक कोण एक ब्रिलियंट पीस ऑफ फिल्डिंग म्हणत 3 रन ताणें सेव केला आसता टीमाक 1 रन मात्र ऍड जाल्ले स्कोर बोर्डांतू तशें जावन ಒಟ್ಟು 3 बॉल जाल्ले आसा ह्या ओव्हरांतू आनी 3 बॉल बाकी आसा दैविक नायक वापस बॉल घेवन गणेश नायक कोटाक एक ऑलराउंडर प्लेयर मस्त रेस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेळका जाता या पेटी बॉल ओपन मारला बॉल सीधा बतस फिल्डर हातांतू गणेश नायक आउट एक खंडित एक हॉर्ड विकेट मेळ्ळा संघ गणेश नायक इज आउट शिवाजी पार्क टायगर्सच्या दैविक नायकान एक हॉर्ड विकेट काढलेला सांगा गणेश नायक कोर्टात असल एक लायक प्लेयराला विकेट घेवन ह्या मॅचांतू एक वापस आती कमबॅक मेळ्ळा आसा तांगेल टीमाक आता नेक्स्ट न्यू बॅटर जावन दत्तेश क्रिस आयला निनाद बोरकर विकेट कीपर जाऊन काम करतस शिवाजी पार्क टायगर्साक तुमको पूरा गोत्तशिल म्हणके शिवाजी पार्क टायगर्स एक लायक टीम MCL अंतू सीजन 2 तो त्यांनी विन जरल एक टीम शिरसी सुपर किंग्स टीमाक डिफीट कोरनु MCL सीजन 2 च्या चॅम्पियन्स जरल टीम त्या शिवाजी पार्क टायगर्स निनाद बोरकर लीड करतस आयकॉन प्लेयर जावन तशींची GSB क्रिकेटाचे सुपरस्टार जावन आसचे शरद प्रभू GSB क्रिकेटाचे सुपरस्टार तो तांगेल टीमाचे की प्लेयर आता क्रिसर आसचे बॅट्समॅन सिद्धेश नायक आउटसाइड ऑफ स्टंप डिलिव्हरी जावन आशिल्ले सिद्धेश नायक कंप्लीटली बीट जालो तशें जावन खंयचे रन येनी दैविकान एक लायक विकेट ओवर हांगा घालेलो आसा एक ह्या ओवरांत एक इम्पॉर्टंट विकेट तांकां मेळ्ळेलो आसा सो दैविकाला ओवर कंप्लीट जाला 4 ओवर कंप्लीट जाला 17 ऑन द स्कोर बोर्ड So after 4 overs, 17 runs on the scoreboard for team King Circle Knight Riders. That means King Circle Knight Riders require 32 runs
in 3 overs. प्रत्येक ओव्हरा काही 10 रनापाशी चड रन रेट हांगा काडका जाता. नवी बॉलर आदर्श भट बॉलिंग घालवायला. फर्स्ट बॉलान तुझी उभार मारचे प्रयत्न केला. कॅच जो चान्स आसा 2 फिल्डर्स मध्ये तो बॉल पडला. एक इजी कॅच आशिल्ले, स्ट्रेट टू द फिल्डर वता आशिल्ले, बट मस्त वेळ बॉल वाऱ्यार आशिल्ले. सो द फिल्डर कुडंट कीप हिज आयज ऑन द बॉल. बॉल वाऱ्यार आशिल्ले, फ्लड लायटान तो असल कॅच जड्ज करचे अंडर द लायट्स तितले इजी ना. सो एक एक हॉड जीवदान हांगा बॅटिंग टिमाक मेळ्ळालो आसा. आदर्श भटाला सेकंड ओव्हर हे. फर्स्ट ओव्हरान तो 8 रन ताण दिल्ले, एक विकेट काडलेलो आसा. फ्लायटेड डिलिव्हरी बॅट्समॅनान विकेट किपराल मारचे प्रयत्न केलेले, बट एक रन मेळता. दोन्ही रनाक खंयचे अवकाश ना. सो एक रन ऍड जाल्यार मित्र किंग सर्कल नाईट रायडर्साच्या वट्ट स्कोरात 20 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आणि काही 29 मोर रन्स जावका वरलेल्या 16 बॉलांतू. 16 balls to go, 29 runs required. We come back to Adarsh Bhatt. वापस एक हॉट शॉट ऑफ साइड मारचे प्रयत्न केला, बट बॉल बॅटाच्या तिकेटच्या लागून सिली मिड ऑफ गेलेला आसा. अंतमध्ये एक रन लायक कोण धांवन कंप्लीट केला. एक रन आयला. मस्त एक लाईन हाडल्यान तरी बॉलिंग घालतस आदर्श भट. एक फास्ट बॉलर, बॅट्समॅनाक खंयचे अवकाश दितना हॉट शॉट मारच्याक. सो असलेची एक परफेक्ट लाईन हाडल्यान तरी बॉलिंग घाल्ली म्हणजे बॅट्समॅनाक बांदून घालचे अवकाश संपूर्ण जेवणास शिवाजी पार्क टायगर्साक. वापस बॉल आदर्श भटार हातांत. ह्या पेटी पुल केला. लायक शॉट, बॉल गेला सीधा एकदा गावता वयर दोकून भायर. 6 रन, 6 runs. शांताबाई, 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 शांताबाई. असले एक बॉल वेट करते आशिल्लो श्रीकृष्ण. लायक कोण पनिश केला, चंद कोण पिक कोण सीधा भायर पेटयला. 6 व्हॅल्युएबल रन्स. वापस मुखार मारचे प्रयत्न केला. ह्या पेटी आउट. श्रीकृष्ण इज आउट. दैविक नायकाक विकेट मेळ्ळा. लास्ट बॉलांत एक 6 रन कन्सीड केलेला, बट ताजे नंतरच्या व्हेरी नेक्स्ट बॉलांत दैविक नायकान श्रीकृष्णाक आउट केला. श्रीकृष्ण इज बॅक टू द पॅव्हिलियन आफ्टर स्कोरिंग 18 runs. चर्चा बोरिंग झाली. तर भावड्या पार्टीला हमंग पारावरती आली. तपरी मागर रिचली क्वार्टर, भावड्याला मंग बसला स्टार्टर. चांगलं पिंट्या मिटवू आपल्या डिस्को डान्सिंग खाजेला. डॉल्बी वाल्या बोलाव माझ्या डीजेला. 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 27 for the loss of 5 wickets. किंग सर्कल नाईट रायडर्स आत्ता क्रीसर राहिला. अनेक आक्रमक स्ट्रोक्स खेळची तसला प्लेयर दत्तेश म्हण म्हणताना आमका मुलके गेलेल्या VPL हुडगा सेता. लास्ट ओव्हरांत लास्ट 2 बॉलांत 2 सिक्सर मारला तसले एक प्लेयर. इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल ಎದುರ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾರ್ಲು ತಗೆ ಟೀಮಾಕ ಆಲ್ಫಾ ಟ್ರೂಪರ್ಸ್ मुंबईक चॅम्पियन्स केलेले एक ग्रेट प्लेयर महान खिलाडी दत्तेश स्ट्रायकर असं खंडित जाऊन उतारणे हांगा तगेले
रोल दाखोवक जाता ह्या एक क्रुशियल मॅचान तो ह्या पेटे फुल केलो ऑन साइड तो बॉल बाउंड्री लायनार ट्रॅव्हल जाता मिसफील्ड जाला 2 रन मेळचे पळोवक 2 रन नाही मेळला दत्तेशान 2 रन काढून तेगे अकाउंट ओपन केलेले आसा सो कपल ऑफ रन्स हॅव बीन एडेड टू द टोटल ऑफ टीम किंग सर्कल नाइट राइडर्स which takes their full score to 32 on the board. 19 more runs required and 2 overs are remaining in their innings. दत्तेशनी सिद्धेश नायक क्रिसा मध्ये असती 5 विकेट ऑलरेडी पडलेला अस एक पार्टनरशिप जावका रेस्पॉन्सिबल इनिंग्स हांगा खेळका जाता दत्तेश आणि सिद्धेश नायकान दत्तेश नायकान बहुशः तागेल नॅचरल गेम खेळली म्हणून जाल्यार हे मॅच खंडित काही विन जावची चान्सेस किंग सर्कल आस जाल्यार शिवाजी पार्क टायगर्स म्हणताना तांगेरान तू लायक बॉलर्स असती आदर्शान 2 ओव्हरान तो 21 रन्स कन्सिडर केला बट 2 इंपॉर्टंट विकेट काढला अस दैविकन अजी फुल्ली ओव्हरान तो खाली 3 रन मात्र दिलेला आता नेक्स्ट ओव्हर चॅलेंज ओव्हर 50-50 चॅलेंज ओव्हर 10 रन एम करता म्हणून बॅटिंग टीमाच्यान केला सांगितलं असं स्कोर 30 runs 19 more runs required in 12 balls. विघ्नेश हाका इंट्रोड्यूस केलेले टीम शिवाजी पार्क टायगर्सान एक फास्ट बॉलर मस्त स्पीडर येईल बॉल बॅट्समॅन कंप्लीटली बीट जालो बॅट्समॅन कशी खेळका म्हणून कळली तशी जावन बॉल बॅटा मेळ्ळी हाजे मध्ये वापस बॉलर विघ्नेश नायक दोन्ही बॉल घालूक रेडी जातास शरद प्रभू ताका टिप्स दितास कशी ह्या एक ओव्हरान तू बॅट्समॅनाक बांदून घालका म्हणून शरद प्रभू शिवाजी पार्क टायगर्स लास्ट टाइम येताना त्यांची टीमान तू कॅप्टन जावन खेळलो तागेली टीम विन जालेले ह्या पेटी मारला बॉल वाऱ्यार आस बॉल गेला सीधा स्टेडियम मधून बाहेरी आउट ऑफ द पार्क फॉर अ ह्यूज सिक्स पाटलांचा बैल गाडा गाडा त्याने घाटात गेला रडा लायक एक टेरिफिक शॉट म्हणून येतो चंद कोण पिक कोण सीधा बाहेर पेटयले सर रनाक या पाटी मस्त स्पीडर राहील बॉल नेला राहील विघ्नेशान लास्ट बॉलांत एक 6 कन्सिडर केला त्यानंतर लायक एक इम्प्रोवायझेशन दाखयलं संघा मस्त स्पीडर राहील बॉल तशें जावन बॅट्समॅन दिनेश सिद्धेश नायक कंप्लीटली बीट जाला खंयची रन येनी Yeah, pretty clean ball. That is the beauty of the delivery. शिट्टी वाजली गाडी सुटली शिट्टी वाजली गाडी सुटली अन पदार गेला न भर अन पदार गेला न भर पोरी जरा जपून दांडा धर 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 शिट्टी वाजली गाडी सुटली अन पदार गेला न भर पोरी जरा जपून दांडा धर अनमोल ग्राउंडर असं म्हणून गेला रे फूड काउंटरला येऊ का अनमोल फूड काउंटरला येऊ का 49 रन्साचे टार्गेट मिळाला किंग सर्कल नाइट रायडर्स त्या 49 रन्स चेस करते की ना पळोका लायक एक खंडित काही नेल बायटिंग फिनिश मॅच हांगा पळोवच्या अवकाश सक्कड स्पेक्टेटर्सांक आसा म्हणून म्हाका दिसता सिद्धेश नायक तसो लायक बॅटराक हांगा विघ्नेशान क्लीन बाउंड करचे मुखांतर एक लायक एक कमबॅक मेळ्ळेलो आसा शिवाजी पार्क टायगर्साक
यावेळी लाईक शॉट ऑफ साइडाक लवली कवर ड्राइव हँडसम लुकिंग कवर ड्राइव म्हणून म्हणत फिल्डरान येवन बॉल फिल्डिंग करचे पयस पुढे 1 रन आराम से धांवन कंप्लीट केला. कडेची एक बॉल बाकी आसा ऑलरेडी 7 रन ह्या ओव्हरांत येयले आसा एक 6 येयले ताजे निमित्त 7 रन जाला. लायक बॉल बाउन्सर डिलिव्हरी मस्त वयर दोकून येईल बॉल बॅट्समॅनाक दत्तेशाक खेळू जायनी लायक एक बॉल म्हणून लास्ट बॉल हांगा डॉट जाला. So challenge 50-50 over anga complete jalala sir tajotuchi over number 6 is also completed. So total score at the end of 6 over is 34 score jalla. So last over anta 15 run jauka King Circle Knight Riders team ank 15 runs required in the last over. तुम्ही पळयत आसा ती GSB मंडळ डोंबिवली रजिस्टर्ड अन्य आयोजन करते IGCL 2024 IGCL फर्स्ट सीजन मेडिकेअर लिमिटेड या एक टुर्नामेंटाचे मेन स्पॉन्सर तशींची को स्पॉन्सर जावन स्टार वॉकर तितलेने अशी मस्त पुराय डोनर्स सपोर्टर्सान एक टुर्नामेंट इतली ग्रँड जावन चोळचेक हांगा सहकार दिलेले आसा सक्कट जनाक ह्या संदर्भेरी GSB मंडळ डोंबिवली तर्फेन हृदयपूर्वक जावन आशिल्ले धन्यवाद ह्या संदर्भेर आमी सांगच्याक इच्छा पावता ती. सो वापस मॅच आयता आसा ती लास्ट ओव्हर बाकी आसा कडे ओव्हरांत 15 रन जावका. किंग सर्कल नाइट राइडर्स रिक्वायर्स 15 runs in 6 balls. अथर्व पायक बॉलिंगाक इंट्रोड्यूस केलेला संघ फर्स्ट ओव्हर घालता तेगेल कोर्टाचे सो कमेंट्री बॉक्साच्या लेफ्ट साइडाक तुमका एक ब्युटिफुल IGCL ट्रॉफी पळोवचे मेळटस. पायच्या दिसाक खंयची टीम ह्या IGCL ट्रॉफी उबारता लिफ्ट करता पळोवका चंद जावन आशिल्ल्या पलावा टायटन स्टेडियमांत 2 दिसाचे क्रिकेट टुर्नामेंट परफेक्ट वेदर फॉर क्रिकेट म्हणून म्हणयात. दोन्ही लायक डगआउट्स तशीच ग्राउंडात 4 सुत्तय कलरफुल एडवर्टायझिंग बोर्ड्स. लास्ट ओव्हरांत 15 रन जावका. बॉलिंग लुक अथर्व पै रेडी जाला तशींची क्रीसार वेट करतस अक्षय. दोन्ही बॉल घालूक अक्षय. स्कोर आणि काही 34 आली राबला. 5 बॉल मात्र बाकी आसा आणि काही 15 रन जावका
किंग सर्कल नाईट रायडर्साक शिवाजी पार्क टायगर्स ड्रायव्हर सीट आस म्हूण म्हणयात. लायक बॉलू ह्या फावटी रनआउट जे चान्सेस आशिल्ले रनआउट. वापस अनेक विकेट पडला. विकेट नंबर 7 has gone down. King Circle Knight Riders have lost their wicket. पोरियेरा केलास मना पागल केलास पोरियेरा केलास तुझे नादानी मना येरा केलास तुझे नादानी पोरियेरा केलास मना पागल केलास पोरियेरा केलास तुझे नादानी मना येरा केलास तुझे नादानी. लाख मनी एक तू पाटलाची लेक चमके ढिंक्याची सारी हाय रंगामणी चमके ढिंक्याची सारी हाय रंगामणी. वाईड बॉल जेवन आशिल्ले बॅट्समॅनान रन जावचे प्रयत्न केले. नॉन स्ट्रायकर एंड आशिल्लो बॅट्समॅन आउट जाला. तशें जावन आतां स्कोर जाल्ले 35 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. ल्हान खाली 5 बॉल बाकी आसा. 34 runs required. या पटी दत्तेशन मारला शॉट बॅट्समॅन आला फिल्डर आला हातात लागून बॉल भायर गेला. 4 रन मेळ्ळा हांगा. 4 की 6 पडोक 6 runs. दत्तेशान एक राईट टायमार एक जबरदस्त 6 मारलेलो आसा. हांव तवणी सांगिल म्हणजे दत्तेश एक आक्रमक स्ट्रोक केले विस्फोटक बॅट्समॅन. मुल्केंतू जाल्यार टुर्नामेंटात बॅक टू बॅक फायनल मॅचांत लास्ट 2 बॉलांत 2 सिक्सर मारला तसले एक प्लेयर तसले एक कॅलिबर आसा. खंयचे क्रुशियल मोमेंटात खंयचे सिच्युएशन आसल्यार बॉल भायर पडटा तसले एक कॅलिबर आशिल्लो प्लेयर म्हळ्यार तो दत्तेश प्रभू. सो 8 रन जावका 4 बॉल बाकी आसा. वापस ऑफ स्टंप भायर दत्तेशान सोडून दिल्ले मारचे प्रयत्न करनी बॉल सीधा भायर गेले तशें वाईड जावन एक एक्स्ट्रा रन मेळ्ळा. 7 runs required, 4 balls to go. मस्त प्रेशर तातर बॉल वयले तस वापस बॅक टू बॅक वाईड या खंडित तेंगेल टीमाक हॉड डिसअपॉइंटमेंट म्हणत असल एक सिच्युएशन आनी तुमी वाईड घालता म्हणजे तेंगेल टीमाक खंडित मारक जाता. बॅक टू बॅक दोन्ही वाईड घालला खाली एक्स्ट्रा रन ऍड जावची मात्र नाही एक एक्स्ट्रा बॉल घालका जाता. सो या एक बिग मिस्टेक क्राइम म्हणत बॉलर आला. सो अथर्व पाय इज अंडर प्रेशर नाउ. 6 more runs required, 4 balls to go. Very interesting match is going on here. Full toss ball वार असे ते फिल्डर असे शरद प्रभू कॅच धरती की पळक शरद प्रभून कॅच धरला बट हांगा नो बॉल म्हणून म्हणला अंपायरान. अबाव दी वेस्ट लेवल जावन आशिल्ले दत्तेश प्रभू हॉड शॉट मारचे प्रयत्न केलेले बट टायमिंग्स तितले लायक नाशिल्ले प्लेसमेंट परफेक्ट नाशिल्ले. शरद प्रभून कॅच धरला जाल्यार नो बॉल जाल्यार मित्र 2+1 दोन्ही रन धांवन काडले. एक एक्स्ट्रा रन नो बॉलाक 3 runs मेळ्ळा तितले न्हय एक एक्स्ट्रा फ्री टाइम मेळटा सांगत बॅट्समॅनाक. सो हे अक्षय अथर्वान केलेले हॉड चूक म्हणून म्हणटा हांव. दोन कंटिन्यूस वाईड घाल्ला ताजे नंतर नो बॉलय घाल्ला. तशें स्कोर जाल्ले ते 46. 4 बॉल बाकी आसा 3 रन जावका. फ्री हिट बॉलाचे एडवांटेज घेवचे जाय न्ही दत्तेशाक. वापस मॅच क्लोज येतस 3 बॉलांत 3 रन नाव. एनीथिंग मे हॅपन हियर. 50-50 सिच्युएशन. दत्तेश क्रीसर आसचे कसतने सांगू जायना खंयचे मोमेंटांतूय मॅच विन करून दिवत तसले एक महान प्लेयर तो दत्तेश कसं करता वरल्यार 3 बॉलांत पळोवका. तशींची बॉलर अथर्व चिक्के प्रेशरार आशिल्ले म्हणजे दिसतास मस्त रन्स ताणें सोडून दिल्ले ह्या ओव्हरांत. त्या वेळी एक्स्ट्रा रन्स दिवचे म्हळ्यार हॉड एक क्राइम म्हणून येत असल संदर्भ री. सो 46 रन्स जाला. नेक्स्ट बॉल दत्तेश बॉल ओव्हर मारला. दत्तेश फिनिशर्स इट इन स्टाईल. व्हाट अ शॉट. टेरिफिक शॉट.
तावडी सांगेल म्हणजे दत्तेश असल शॉट मारतो व्हेरी पॉप्युलर माहिर खिलाडी बीपीएल अंतू त्याने लास्ट 2 बॉल असताना 2 सिक्सर मारलेला चॅम्पियन जनरल आल्फा ट्रूपर्स आज ही किंग सर्कल नाइट राइडर्स या ओव्हरांत 2 जबरदस्त 6 मारलो दत्तेश अंतगल मैच विन कोर्निल्ला दत्तेश has become the hero of this match. शिवाजी पार्क टायगर्स तांगेल हात्ता आशिल्ल्या मॅच एक लास्ट करून घेतली लास्ट ओव्हरांतू अथर्व पैन 18 रन्स एद्रा टीमाक सोडून दिलेले तशींची दत्तेश हैज बिकम द हीरो ऑफ द टीम दत्तेश हैज बिकम द हीरो ऑफ द मैच 10 बॉल फेस करून ही प्लेड एन एस्टॉनिशिंग नॉक ऑफ 18 रन्स without losing his wicket. So we will have to really appreciate the batting performance of Dattesh, what he has shown in this match, and hats off to Dattesh once again. With that, King Circle Knight Raiders have won the match by 3 wickets against Shivaji Park Tigers, and within a short while from now we are going to come to the next match. And before the next match starts, I'm going to hand over the microphone to Mr. Sandeep to proceed the further comments. बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। मैच की शुरुआत होने जा रही है। दोनों टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज आप जल्द से जल्द आइए। न्यू मुंबई ईगल्स के खिलाड़ी एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ चुके हैं। डीबी स्ट्राइकर के एक्स्ट्रा खिलाड़ी जहां पर भी होंगे प्लीज आपको कॉम्बॉक्स में आना है। दिक्कत हो रही है स्कोरर को नाम बताने में प्लीज, तो आपको तुरंत ही आना है। आपका बैटिंग बॉलिंग सोहन टॉस हो गया है। कौन जीता वो पता नहीं, हम जीते बोलिंग पक्का ना पक्का। आप लोग क्या नवी मुंबई? नहीं मैं नवी मुंबई। हां मैं नवी मुंबई। नवी मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। डीबी स्ट्राइकर्स को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। डीबी स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों को विनती है कि आप आपके एक्स्ट्रा खिलाड़ी तुरंत ही कमेंट्री बॉक्स में भेजिए प्लीज। डीबी स्ट्राइकर शुरुआत होने जा रही है मैच की। कौस्तुभ स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइकर पर है रोहन।
और ये मैच की शुरुआत, अंपायर का इशारा आता हुआ। यस, स्कोरर रेडी। चला सामने सुरुवात करूया। नेहर की पहली गेंद बहुत बढ़िया उछाल थी, लगभग बल्लेबाज ने कोशिश की थी, लेकिन ये वाइड का इशारा करते हुए अंपायर और एक्स्ट्रा के तौर पर रन, वाइड के तौर पर रन, अपने कोटे का पहला जो वार्निंग यहां पर देते हुए अंपायर। काफी उछाल थी उस गेंद पर और उसी वजह से अंपायर ने वाइड घोषित किया। वाइड के तौर पर एक्स्ट्रा रन और टीम का खाता खुल चुका है। इसी बीच तीस करार गेंद, जगह से खेलने का प्रयास। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क होना काफी जरूरी है। तो इस समय कमाल की गेंदबाजी हो रही है, अच्छी वापसी की है। उछाल, फिर से बहुत अच्छी गेंद, काफी कमाल का पेस है उनके पास। सोहन के पास काफी जबरदस्त गेंद फेंकते हैं, तेज कर्रार गेंद फेंकते हैं, गति काफी जबरदस्त निर्माण करते हैं। फिर से एक बार अपील, जोरदार, देखना होगा नॉन स्ट्राइक गेंद पर थ्रो नहीं आया। देखिए विकेट कीपर तो लगभग आधे आ चुके थे अंपायर को अपील करने के लिए, दबाव में लाने का प्रयास, लेकिन ऐसा इतना आसान नहीं है अंपायर को इंप्रेस करना। कमाल की अंपायरिंग, प्रोफेशनल अंपायर है, काफी मैचेस में जिन्होंने अंपायरिंग की है। अंपायर बाड़ा, आप देख रहे हैं कई मैचेस में उन्होंने अंपायरिंग की है, उनका साथ निभा रहे स्क्वेलिंग अंपायर है सुदीप सर, काफी पुराने अंपायर है, पुराने चावल की तरह। कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधे खेल दिया, कवर्स के हाथों में, रन लेने का कोई मौका नहीं है। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए कंजूस गेंदबाज, महंगाई के जमाने में ये कंजूस गेंदबाज अच्छे साबित होते हुए। विकेट कीपर इस बीच कान मंत्र दे रहे हैं और देखना होगा इस कान मंत्र का कितना उपयोग होगा गेंदबाज को। कदमों का इस्तेमाल, ऑन द राइज, बिल्कुल बढ़िया। और ये क्या है, गेंद गई है 6 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया। जिस प्रकार से गेंद को भेज दिया बाहर और हमारे डीजे विष्णु भी बाहर जाते हुए, बाय बाय। ये फुलटॉस गेंद आड़े बल्ले से मिड विकेट की दिशा में, अंपायर स्क्वेलिंग अंपायर ने तुरंत ही नो दिया है। मौका रन आउट का इस बीच और ये आउट, नो बॉल और रन आउट। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, अंपायर ने दिया तुरंत नो और विकेट भी चटका रन आउट के तौर पर। पहले विकेट का पतन, स्कोर हो चुका है। थ्रो किसने मारा? अच्छा, बैट्समैन कौन था? बैट्समैन आउट हुआ कश्यप, अब बैट्समैन रोहन ने रन मारा था, दूसरे रन पे आउट हुआ ना। हां, कौस्तुभ आउट हुआ। कौस्तुभ आउट हो चुके हैं। निरंजन प्रभु आया। थ्रो किसने मारा नहीं मालूम, वो 100 कौन है भाई बैट्समैन? नए बल्लेबाज इस समय मैदान पर। कौन है? चित्रंजन प्रभु। चित्रंजन आ चुके हैं। टोटल स्कोर कितना हुआ? स्ट्राइक पे कौन है? स्ट्राइक पे रोहन है ना। अब तक का स्कोर हो चुका है 10। 4 बॉल दे, नो बॉल है, बोन है थ्रो। कदमों का इस्तेमाल, फ्रीट का फायदा, हवा में गेंद और ये लगा दिया है कमाल का छक्का, बहुत ही बढ़िया, हक्का बक्का छक्का और 16 रन। शो बोला 16।
बॉल बाकी है ना? अरे 5 बॉल ही हुआ है ना? कितना बॉल हुआ? अंकल को बोलो ना, एक बॉल बाकी है। कितना बॉल है? पहले ओवर के बाद 16 रन सात्विक आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। इस समय प्रभु स्ट्राइक पर रहेंगे। काफी खर्चीला ओवर रहा। 16 रन आए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। सात्विक गेंदबाजी के लिए। ये तो हवा में गेंद, क्या कैच होगा देखना जरूर है। बहुत ही बढ़िया कैच और दूसरे विकेट का भी पतन। 2 विकेटें गिर चुकी है। सोहन ने कैच लिया और विकेट का पतन। आउट होने वाले बल्लेबाज थे चितरंजन प्रभु। आउट हो चुके हैं। बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन सही तरीके से गेंद पर नहीं बल्ले पर ले पाए। मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद और बढ़िया कैच। ये देखिए जगह से खेलने का प्रयास। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। अच्छी वापसी कर रहे इस समय है ये गेंदबाज। चौका लगा दिया है और चौके से चौका दिया। 20 रन हो चुके हैं। इस बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन। गेंद यही है आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। छा गए बिड़ू। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया सात्विक के बल्ले से। माफ कीजिएगा, सात्विक के ओवर में। मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था, आपका ध्यान है कि नहीं। तो टोटल स्कोर हो चुका है 26। दीपेश स्ट्राइक पर। इसी बीच देखिए हुक किया और ये गेंद जा चुकी है मैदान के बाहर। 2 रन मिलेंगे।
ये फिर ऑन द राइज खेल दिया लॉन्ग ऑफ की ओर और फिर से एक बार चौका। सही है बिडू, बहुत बढ़िया। तोड़ू फोड़ू बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त। प्रत्येक गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जारी है। टोटल स्कोर 32 रन। 2 ओवर के बाद 32, पहले ओवर में 16 रन, इस ओवर में भी 16 रन। 32, 16 का टेबल। इस वक्त खेल दिया कच्ची। दूसरे रन के लिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि थ्रो आ चुका था। 2 रन ले लिए है, 34 रन हो चुके फिलहाल। विघ्नेश की अगली गेंद और ये देखिए घुटने के बलबूते पे खेलने का प्रयास था लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए ठीक तरीके से। अच्छी गेंदबाजी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 34। पुंडलिक कीपर बहुत अच्छी कीपिंग कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल ऑन द राइज, नहीं रोक पाए गेंद, एक चप्पा खाते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। कृष्णा वहां पर थे लेकिन कृष्णा गेंद को नहीं रोक पाए। एक टप्पा खाती हुई गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है। 38 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर फिलहाल। विघ्नेश को यहां से विकेट चटकाना जरूरी है। रन बनाने की रफ्तार को थोड़ा कम करना होगा तो डॉट गेंदे फेंकना ये जरूरी है। ओ फॉलो थ्रू में नहीं रोक पाए क्योंकि कमाल का तेज करार स्ट्रोक था ये। ऐसी गेंदे है रोकना मुश्किल होता है। 39 रन, 4 गेंदे, अभी भी 2 गेंदे बची इस ओवर की। कट करने का प्रयास था लेकिन बहुत बढ़िया, अच्छी गेंद, डॉट बॉल। कुछ ऐसे ही गेंदबाजी करनी होगी, कुछ ऐसे ही कुछ डॉट गेंदें फेंकनी होगी, सही जगह पर गेंद को पिच करवाना होगा। ये तो कड़क प्रहार है, बिल्कुल जबरदस्त। 6 रन, जबरदस्त प्रहार किया।
Adesh has brought into attack now. He is a spinner. He can turn the ball, and it is in both sides. Leg break. $45 total on board. Rohan is on strike now. This time in the air, but only a single run taken. Only single taken there. Fourth over in progress. This one beautifully struck, and this time not able to stop. That's gone all the way for the boundary. What a sweet timing there. Flashy square cut. He is a good player for square. He is a good batsman. And yes, he has played some beautiful stroke on offside. That is one of his favorite stroke. He loves to hit in that area. This is in the air, but someone will come under it. Yes, the bowler himself has come under it and takes that beautiful catch. Adesh has taken that catch, and that the batter will have to go back to the dugout. He's making his way towards the pavilion. 50 up on the board संदीप with the loss of 3 wickets. प्रशांत उसको वो लास्ट तक चलने दे Deepesh back to dugout. वेल प्लेड है दीपू Deepu has contributed well for the team. He had played some fantastic strokes, and he has done his work. New batsman comes to center. His name is Sandeep Kamath has come to the center now. 50 up. एक आईफोन यहाँ पर मिला है. जिस किसी का भी होगा वो ऑर्गेनाइजर के पास है, वहां से कलेक्ट कर सकता है. देखिए आईफोन एक प्राप्त हुआ है. जिसका भी होगा तो लेके जाइए प्लीज. ऑर्गेनाइजर हमारे जिनका नाम है JS जी के पास है, उनसे आप ले सकते हैं. इसी बीच देखिए बैट्समैन वांटेड टू हिट अगेन ऑन साइड. डॉट बॉल. Goes his back foot in the air. What a catch taken. Satvik has taken that catch. And Sandeep this time returns to the dugout. He is not happy with himself. He looks very disappointed. He looks dejected. Satvik takes beautiful. Let's have a quick look in the action replay. How the batter wanted to hit, that was not connected well. Mistimed stroke. And Satvik was there. Takes that beautiful catch. After 4 overs, total score 50 with the loss of 4 wickets. Prashant Prabhu, new batter, arrives now. Sohan will start proceeding now.
So now there is going to be the change in the over as well as change in the commentary box. Mr. Sandesh Bhatt, Suresh Bhatt will be joining us. Thank you, Sandeep ji. महेश महेश 3 ओवर खेल क्या बोले भाई, क्या नाम बोले? DB Strikers लायक एक स्कोर येईल असं 4 ओव्हरांत त्यांनी 50 स्कोर केला. 5 ओव्हराच्या फर्स्ट बॉलांत पुंडलिक पैन एक लायक कॅच धरलेला असं. तशें जावन wicket number 5 has gone down for DB Strikers at the score of 50 runs. 7 ओव्हराच्या मॅच 5 ओव्हर चलते after 4.1 overs 50 runs on the scoreboard for the loss of 5 wickets. DB Strikers आणि नवी मुंबई ईगल्स मध्ये एक मॅच चलते. विकेट कीपर जावन विघ्नेश भट कोटेश्वरा काम करतस. नेक्स्ट बॉलर लायक जावन पडल्याल बॉल ब्लॉक होला पडल्याल बॉल कट केल्ले ऑफ साइडाक कवर सामार 1 रन इजिली काढलेला असं नवी बॅटरान. महेश पहिले 1 रन काढून तेगेले काउंट ओपन केला. आता स्ट्रायकर नवे बॅट्समॅन असं प्रशांत प्रभू फर्स्ट टाइम बॉल फेस करतस. यापैकी लायक फ्लाइटेड डिलिव्हरी एक अनइवन बाउन्स पडत. बॅट्समॅन प्रशांत प्रभू कंप्लीटली मिस जालो. देर इज नो कनेक्शन विथ द बॅट अँड बॉल. विकेट कीपर विघ्नेशन बॉल विकेटा मागशी चंदुकोन गॅदर केला. खंयचे रन येणी यापैकी तसले बॉल गून मारचे प्रयत्न केले ऑन साइडाक बट बॉल बॅट मेळतना लायक एक लाइन एंड लेंथ तारी बॉलिंग घालतस. बॉलर सोहन कामत एक्सपीरियंस बॉलर सोहन कामत बॉलिंग कंटिन्यू करतस. यापैकी एक लाऊड अपील आशिल्ल्या पायया लागील बॉल LBW लेग बिफोर द विकेट खातीर अपील केले बट लेग बाय म्हणला अंपायरान. बहुशा ऑफ स्टंप लागून भायर वता आशिल्लो बॉल. सोहन कामत for the next time in this over. लेग स्टंप भायर वता आशिल्लो बॉल खंडीत जावन वाईड जाऊ का वाईड म्हणला अंपायरान. 1 एक्स्ट्रा रन ऍड जाल्ले. 5 ओवर चलते 53 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. मैच चलते DB स्ट्राइकर्स वर्सेस नवी मुंबई ईगल्स. बैटिंग करते DB स्ट्राइकर्स. टॉस विन जावन नवी मुंबई ईगल्स हांगा फिल्डिंग चूज केलेले. ताका रिप्लाय जावन लायक स्कोर आयला DB स्ट्राइकर्साक. प्रति ओवरांत रन्स रोटेट जातस स्ट्राइक रोटेट जातस रन्स स्कोर बोर्डार वर्तस. अजोटुची ओवर कंप्लीट जाल्ले आफ्टर 6 overs 54. चेक आई बेग योर पार्डन. 5 ओवर जाला 54 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. आता 6th ओवर चॅलेंज ओवर जावन आसता. चॅलेंज 50-50 ओवर. ह्या ओवरांत खंयची नमुने ट्विस्ट मॅच मेळता पळोवका. वापस बॉलिंगाक ह्या ओवरांत आदेश भट्टाक इंट्रोड्यूस केला नवी मुंबई ईगल्स टीमाच्यान. कटर स्पेशलिस्ट म्हणून नाव घेतिल्ले एक प्लेयर आदेश भट्ट. मुळकी गांवांचे प्लेयर.
मुलकें तुझ्या BPL टुर्नामेंट अंतू एमर्जिंग प्लेयर म्हणून अवॉर्ड घेतिलो आल्फा ट्रुपर्स मुंबई तू खेळलो त्या टीमाक चॅम्पियन जावचेक कारण जालेलो एक प्लेयर यापटी आदेशन केला बॉल उबार मारचे प्रयत्न केला बॉल सीधा गेला मिड ऑफ आशिल फिल्डर हातांत अज्जोटूची आदेशक फर्स्ट बॉलांतू एक विकेट प्राप्ती जालेला आसा महेशान हे चॅलेंज 50-50 ओव्हरांतू फर्स्ट बॉलांतूच एक हॉट शॉट प्रयत्न केले बट मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जायनी प्लेसमेंट परफेक्ट ना आशिल्ले मस्त वेळ बॉल वाऱ्यार आशिल्ले तशींची मिड ऑफ आशिल्ले फिल्डर सोहन कामतान खंयची चूक करनाशी चंद करून कॅच धरलेलो सो बॅट्समॅन इज आउट आदेशाक हांगा एक इम्पॉर्टंट विकेट फर्स्ट बॉलांतू मेळ्ळा चॅलेंज 50-50 ओव्हरांतू स्कोर आनी काही 54 राबला थिंग्स आर स्लोली डाउन म्हणून येत DB स्ट्रायकर्साक रन्स ड्रायड अप जाला खाली 2 ओव्हर मात्र बाकी खंडित काही रन्स एक्झलेट करचे प्रयत्न DB स्ट्रायकर्स कोळका एक हॉट टार्गेट सेट करचे प्लॅन करून DB स्ट्रायकर्साचे बॅटर्स क्रीज आयिल्ली ती ताका समजावन 54 रन्स एदुलते त्यांनी स्कोर केला लायक बॉल आदेशाला नवे बॅटर क्रीसरस प्रशांत प्रभु फर्स्ट बॉल डॉट जाला प्रशांत प्रभु खेळू जायनी विकेट कीपर विघ्नेशन बॉल कलेक्ट करून वापस आदेश दिलेला यापे प्रशांत उब्बार बारला बॉल वाऱ्यार कॅच जतकी पडोका कॅच धरला ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन लागी लायक करून एक कॅच धरलेला दोन फील्डर्स थंय आशिल्लीं ती फायनली वन ऑफ द फील्डर has taken that outstanding catch म्हणून येत तशें जावन अनेक विकेट पडला विकेट नंबर 6 इज डावन आदेशक अनेक विकेट मेळ्ळेले आसा हे चॅलेंज 50-50 ओव्हरांतू प्रशांत प्रभु आउट जाला सॉरी दामोदर आउट जाला खंयचे रन वापस एक चीकी सिंगल म्हणत बॉल फिल्डर आला हाता वत आशिल्ल्या स्क्वेअर लेगा लागी एक फिल्डर आशिल्लो जाल्यार रिस्क घेवया म्हणून प्रयत्न करून एक रन काडलेलो आसा आदेश भट वापस बॉल घेवन मागशी वता बॉलिंग करूक पलावा पेविलियन एंड दुखून आदेश भट यापे उबार बारला वापस बॉल वाऱ्यार आशिल्ले बट खंयचे फील्डर नातील जाग्यार बॉल सेफली लँड जाला हाजे मध्ये 2 रन धांवली ती लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट अनुपान येवन बॉल फील्ड करचे फुडें 2 रन धांविल्ली आसा ती बॉल ऑलमोस्ट बाउंड्री लायना लागी आशिल्ले अनुपान बॉल स्टॉप केले तशें जावन खाली 2 रन मेळ्ळा या एक चॅलेंज 50-50 ओव्हरांतू आदेश लायकून बॉलिंग घालतस खंयचे हॉट शॉट अवकाश करून दितना वापस बॉल वाऱ्यार आसा ह्या फाटी बॉल आदेशाला वतस बट लायक एक कॅच फिल्डरान धरला ऑफ साइड आशिल्ल फिल्डरान येवन बॉल रमेशान कॅच केलेलो आसा रमेश पै त्या कॅच धरच्यान तू सक्सेस जाला सो लायक ओव्हर म्हणून येत आदेशाला चॅलेंज 50-50 ओव्हरांतू खंडित काही एद्रा टीमाच्या प्लेयर्साक ताणें बांदून गेल्या म्हणून येत
So over complete jalla 56 for the loss of 8 wickets. Last over galuk Archit bowling ayattas. तीन रन काढलेले ओव्हर अंतू. सो एक रन $56 झाला. या ओव्हरात तो एक रन. बौलिंग लास्ट ओव्हर गलूक अर्चित शिवानंद मोडवता गेले अनेक नाव. एक ऑलराउंडर प्लेयर, हार्ड हिटर, तशीच बौलिंगांतूय लायक एक बौलिंग तसले कॅलिबर आशिल्लो बौलर अर्चित बौलिंग अटॅक येतस. राउंड विकेट जावन घाल्ला. लायक आशिल्लो बॉल नेलार आयिल्लो बॉल मस्त लो जावन आयले. लास्ट मोमेंटात लो पिच तरी लो जाल्ले. तशें बॅट्समॅनाक खेळू जायनी. कंप्लीटली बीट जाल्लो बॅट आनी बॉला मध्ये खंयचे कनेक्शन ना अशी बॉल सीधा गेले. विकेट कीपर विघ्नेश लागतांतू खंयचे रन येनी फर्स्ट बॉलांतू. दोन्ही बॉल घालूक अर्चित. हे पटी ऑन साइड फ्लिक केले ते फिल्डर आस. फायन लेगांतू प्रोटेक्शन आशिल्ले मित्र खाली एक रनान संतोष जेवका बॅट्समॅनान दोन्ही रन खंयचे अवकाश ना आशिल्ले. लायक कोण फिल्डिंग करून क्विकली थ्रो केला. तशें जावन एक रन मात्र मेळ्ळे. ह्या एक रनान तांगे टिमाचे ಒಟ್ಟು स्कोर जाल्ले 57. तिन्ही बॉल घालूक अर्चित. ह्या पेटी वापस ऑन साइड मारचे प्रयत्न केले. मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जायनी. अर्चितान हिमसेल्फ ताणें मुखार वचून बॉल फील्ड केले बट अर्चितान बॉल कलेक्ट करचे पयस फुडें दोन बॅट्समॅनांनी एक रन धांवन हांगा आराम से कंप्लीट केलेलो आसा. लास्ट ओवर प्रोग्रेस आस. लायक एक कमबॅक म्हणत फिल्डिंग टीम नवी मुंबई ईगल्साचे डीबी स्ट्रायकर्साचे सुरवे 4 ओव्हरांत लायक आशिल्लो तांगे स्कोर 50 रन मारलेले बट ताजे नंतर ऑल ऑफ सडन विकेट लॉस्ट जावन 8 विकेट लॉस्ट जावन 58 स्कोर रब्बिलो. ह्या पाटी गुण मारला. बॉल सीधा बाहेर वता. 1 बाउंस ओवर दी फाइन लेग फेंस फॉर ए बाउंड्री. 4 व्हॅल्युएबल रन्स आयिल्ले ह्या बॉलांत. सो स्कोर जंप जावन 62 जाल्ले. लास्ट बॉल बाकी आसा. खडे ओव्हराचे अखेरीची एक बॉल अर्चित बॉलिंग करता. पेविलियन एंडा दोकुनु स्टेडियम एंडा दोकुनु अर्चित रेडी जाला. ह्या पटी लेग स्टंप दोकुनु मस्त भायर आशिल्ले. लाइन एंड लेंथ मेंटेन करूक चिक्के चुकलो अर्चित. खंडित काही असल बॉलिंग गल्ल्यार एक्स्ट्रा रन्स दिल्याल म्हणके. सो एक एक्स्ट्रा रन ऍड जाल्ले. एक्स्ट्रा रन ऍड जाता तशें म्हणके स्कोर बोर्डार आता ಒಟ್ಟು स्कोर जाल्ले डीबी स्ट्रायकर्साचे 63. टुर्नामेंटाचे येदोळचे स्कोर पळय म्हणजे हायेस्ट स्कोर ऑफ दी टुर्नामेंट म्हणून म्हणत. दोन्ही रन धांवतासाठी रन आउट जो चान्सेस आशिल्ले बट विकेट कीपर विघ्नेशाक बॉल सम कलेक्ट करूं जायनी.
तशें बॅट्समॅन वंशला तशींची वपास 1 रन धांवली ती कडे बॉलान तो 3 रन आयिल्ले so altogether DB strikers after putting into bat first they have scored 66 runs, double 6 on the scoreboard after 7 overs. So 67 runs such a huge target anga melte so Navi Mumbai Eagles या टुर्नामेंटाच्या हायेस्ट टोटल एदलते 4 मॅच जाला सो लायक एक बॅटिंग परफॉर्मन्स DB स्ट्रायकर्साच्या बॅटर्सांना केलेला टॉस विन जावन नवी मुंबई ईगल्साच्या फील्डिंग चूज केले बट ताका रिप्लाय जावन DB स्ट्रायकर्साच्या एक हॉर्ड टार्गेट हांगा 67 रन्साचे टार्गेट दिला पळोव्या 67 रन्साचे टार्गेट चेस करू जत्त की ना की म्हणून वेट करका आमी नेक्स्ट इनिंग्स चिके वेळान आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक स्टार्ट जावचेर आसा मॅच नंबर 5 अंधेरी सुपर नॅचरल्स आणि सिरसी सुपर किंग्स दोन्ही टीमाच्या कॅप्टन्साक ट्रॉफी एरिया लगी टॉसा खातीर आपयता आसा सिरसी सुपर किंगाच कॅप्टन आईल आसाची अंधेरी सुपर नॅचरल्साचे कॅप्टन आणि टॉसा खातीर ट्रॉफी सेक्शनाला येवका म्हणून विनंती तशींची सक्कट टिमा खातीर एक अनाउन्समेंट आम्ही मस्त बिहाइंड शेड्यूल आशिल्ले निमित्त हे 4th मॅच जाल्ली मागीर पुरा जाणाले एक मॅच खेळून जाल्लेले आसता सो कमिटीन ऑर्गनायझर्सान युनॅनिमसली डिसाइड केलेलं आसा की हांगा दाखून आम्ही 7 ओव्हर न्ही 6 ओव्हर दवरतात आसा म्हणून ह्या मॅच जाल्ली मागीर फ्रॉम मॅच नंबर 5 6 ओव्हर्स मॅच ईच साइड एक सुपर ओव्हर आणि 50-50 विल बी 4th and 5th ओव्हर प्रत्येक मॅचा फुडें कॅप्टन्साक आमी हे एक पाटी पुन्हा तिलचिताची जाल्यार यात एक कॉमन अनाउन्समेंट करतात आसा पुंडलिक स्ट्राइकवर आहे नॉन स्ट्राइक एंडवर आहे श्रीनिवास सिक्सर शिन्नी सिक्सर शिन्नू तर चला मग आता या ठिकाणी आपण सुरुवात करूया मॅचला सामन्याची सुरुवात होईल
67 धावांचं लक्ष आहे आणि यावेळेला आपण पाहू शकाल ऑफ साईडला जवळजवळ 5 खेळाडू तैनात केले गेले आहेत आणि ऑन साईडला फक्त 3 खेळाडू आहेत. चला तर मग सुरुवात करूया सामन्याला. षटकातला पहिला चेंडू अतिशय चांगला चेंडू टाकला, उसळी चांगली घेतली आणि पहिल्या चेंडूवर त्या ठिकाणी डॉट चेंडू टाकलाय. डॉट चेंडूने त्या ठिकाणी सुरुवात होतीये या सामन्याची. लक्ष खूप मोठं आहे आणि ते गाठण्यासाठी एक चांगली सुरुवात अपेक्षित असेल दोघाही फलंदाजांकडनं, कारण की सुरुवातीचे षटके खूप महत्वाचे आहेत. हा चेंडू अतिशय चांगला पुल करण्याचा प्रयत्न, परंतु पुन्हा एकदा फलंदाज बॅटवर घेऊ शकलेले नाहीयेत. 2 चेंडू बॅक टू बॅक आपण पाहिले डॉट टाकले गेले. यावेळेला ओहो संधी होती, परंतु संधी हुकलेली आहे. म्हणून असं म्हणतात की संधीला पुढे केस असतात, मागे टक्कल असतं. चांगल्या टप्प्याची गोलंदाजी, पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. हाही चेंडू चांगला, परंतु चेंडू जातोय मैदानाबाहेर आणि 2 धावा निश्चितच मिळतात. नवीन चेंडू फेकायचा आहे आणि पंचांजवळ आहे, तो फेकलाय त्यांनी. धन्यवाद. सुंदर असं आयोजन IGCL 2024 मध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत. युट्यूबच्या माध्यमातून जे कोणी प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेत असतील त्यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. मित्र, आपण पाहत आहात हा सामना. 2 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू शॉर्टपिच चेंडू, पुन्हा एकदा हुक करण्याचा प्रयत्न आणि पंच वाईटचा इशारा करतात. पंचांचे हात समांतर, धावा मिळत आहेत अवांतर. धावसंख्येत धावा 3. यावेळेला सुंदर फटका, पुल, पॉवरफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल षटकार. अतिशय कमालीचा फटका हा म्हणता येईल. बॅटच्या अगदी मधोमध घेतला, स्क्वेलेगच्या डोक्यावरनं हा षटकार मारलाय. फलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल ज्या प्रकारे हा फटका खेळलाय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये सुद्धा पाहू शकाल आपण. यावेळेला पुन्हा एकदा, परंतु हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. चेंडू येण्या अगोदरच त्या ठिकाणी बॅट फिरवली होती आणि त्याचमुळे काही बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकले नाही आणि डॉट बॉल. महेश पै. महेश पै, शिन्नी श्रीनिवास गोलंदाजीसाठी गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होत असताना यावेळेला हा चेंडू पाहू शकाल आपण. फुटवर्क आणि बॅटच्या पट्ट्यात पुन्हा एकदा काही घेऊ शकलेले नाहीयेत. चांगल्या टप्प्याची गोलंदाजी. हवे चेंडू, यष्टीरक्षक आणि धाव घेण्याची संधी नाही मिळणार. मोठ्या धावांचा पिछा करत असताना यावेळेला डॉट चेंडू खेळणं हे महागात पडू शकतं, कारण तुम्ही जास्त डॉट चेंडू खेळू शकत नाही. जिंकणं हे खूप गरजेचं आहे. अतिशय सुरेख, पुन्हा एकदा चांगला टप्पा या ठिकाणी पाहायला मिळतोय गोलंदाजाकडनं. कोणत्या प्रकारचा फुटवर्क पाहायला मिळालं नाही आणि पुन्हा एकदा डॉट चेंडू टाकलाय.
धावसंख्या स्थिर ती मात्र 9. 3 डॉट चेंडू लगातार. गोलंदाज अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय. यावेळेला पाहूया ब्लॉक होल मध्ये चेंडू. फुटवर्कचा प्रयत्न केला परंतु तसं काही घडलं नाही आणि बाईटच्या स्वरूपात एक धाव मिळतीये. पंचांचा बाईटचा इशारा येतोय. यावेळेला हा सुरेख असा फटका. चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी. सुंदर फटका. 6 धावा मिळतील. अच्छा ओके समजलंय. 9 धावा मिळतील. सुंदर असा फटका. कमालीचा आहे. काय ताकद होती फटक्या मागे. निश्चितच ही ताकद जी आहे नूडलची आहे. नुकतंच त्यांनी जेवलेत आणि जेवल्यानंतर उतरलेत मैदानात. हक्का नूडलची पॉवर. छक्का मारलाय. धावसंख्या आता 19 वर जाऊन पोहोचलेली आहे. ठाण्याची टीम आता तयार आहे. पूर्ण तयारीत आलेली आहे. यावेळेला हा चेंडू चाललाय. पुन्हा एकदा षटकार. 6 धावा. एकच फाईट. वातावरण टाईट. सुंदर फटका. काय कमालीचा फटका आहे. काही चेंडूंची वाट पाहायची असते आणि काही चेंडूंची वाट लावायची असते. तोच हा चेंडू वाट लावणारा. Match number 5. Quick update. अंधेरी Supernaturals टॉस विन जाऊन फील्डिंग ऑप्ट केलेलं असं. अंधेरी Supernaturals have won the toss and elected to bowl first. संदीप भाई ओव्हर टू यू. थँक्यू. चेंडू सरळ गेला एक कल्याणच्या दुर्गाडी किल्ल्यावर. कमालीचा फटका. सुंदर आवाज असा जयेश भाई यांचा. अतिशय चांगला उद्घाटन समारंभ आज आपण पाहिला. ढोल नगारे आणि चांगला परफॉर्मन्स, चांगला डान्स परफॉर्मन्स सुद्धा आपण पाहिला. भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेचं. IGCL 2024 आतुरतेने आपण नेहमीच वाट पाहत असतो या स्पर्धेची. इस बार खेल दिया सीधे मिड ऑन के दिशा में है और रन नॉन स्ट्राइक एंड पर काफी आगे आए थे लेकिन तुरंत ही पीछे मुड़े और डाइव लगाकर अपने आप को बचाया उन्होंने. रन लेने का कोई मौका नहीं लेकिन जिस हिसाब से छक्के लगाए थे पिछले ओवर में बहुत बढ़िया. इसी बीच फिर से ये देखिए कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट. बिल्कुल जिस तरीके से KTM स्पोर्ट्स बाइक दौड़ती है रोड पर बिल्कुल उसी अंदाज में दौड़ लगाई. ये तो कमाल की गेंद थी. बहुत बढ़िया. देखिए कल्याण से CST जाना होगा तो फास्ट ट्रेन पकड़नी होगी. स्लो ट्रेन से कोई नहीं जल्दी पहुंच पाएगा. फास्ट ट्रेन से सफर करना होगा. एक्सप्रेस से सफर करना होगा. रन बनाने की गति बढ़ानी होगी इस समय. ये देखिए ओ हो ये
बहुत ही बढ़िया गेंद। इसी बीच कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, क्या कैच ले पाएंगे? ओ हो, ये क्या छूटा, सपना टूटा दिल टूटा। और जीवन दान भी प्राप्त हुआ। स्कोर अभी हो चुका है 26। कमन प्रशांत, कोई नहीं चलेगा। स्ट्राइक पर इस समय है श्रीनिवास। कदमों का इस्तेमाल, ओ हो, कमाल की गेंद, तेज कर्रार गेंद फेंकी, बिंदी गेंद। स्कोर रुका हुआ 27, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति, 27 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फुलटॉस गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, तुरंत ही अपील किया, अंपायर सहमत नहीं है। अभी भी काफी आशाएं है। ये देखिए, ओ बहुत अच्छी गेंद, कौस्तुभ कमाल की गेंदबाजी करते हुए, मूर्ति लहान कीर्ति महान कौस्तुभ। फिर से एक बार कोशिश थी कौस्तुभ के पास, जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर करते हुए, बहुत बढ़िया। विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार से उन्होंने गेंद को हाथ में लिया और तुरंत ही विकेटों से लगा दिया, बहुत ही बढ़िया स्टंप किया। विकेट कीपर का नाम जो है दीपेश शेनॉय, वाइस कैप्टन, कमाल की इस पर स्टंपिंग करते हुए। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है। कौन है बैट्समैन? 27 रन। विघ्नेश आ चुके, विघ्नेश भट्ट कैप्टन आ चुके और एक विघ्नेश भट्ट 12वें खिलाड़ी है। विघ्नेश भट्ट ये कमाल के खिलाड़ी है। ओके, जो गांव में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें मैन ऑफ द सीरीज जीते थे वो, स्कूटी। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और आक्रामक पारी खेलते हैं, बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए पहचाने जाते हैं। बग्गी
निकनेम है उनका। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बग्गी स्ट्राइक पर। बग्गी के लिए अगली गेंद। ताकतवर खिलाड़ी है, खास तौर पर ऑन साइड पर कमाल के स्ट्रोक खेलते हैं, उनका पसंदीदा स्ट्रोक है। ये देखिए फुल टॉस गेंद, लेकिन कनेक्ट ठीक तरीके से नहीं कर पाए और एक ही रन। 28 रन, 19 गेंदें बची है, 39 रनों की आवश्यकता है और इस वक्त बग्गी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलना चाहिए। एक हाथ से बहुत बढ़िया, 6 रन। देखिए बग्गी मैदान पर आए, दूसरे बल्लेबाज भी ताकत उनमें आ गई। ये है पॉजिटिव लोगों के साथ रही है, हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे। 4 ओवर 34, 1 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदें बची है, 33 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए। 33। तो कमेंट्री बॉक्स में अभी बदलाव होता हुआ, तो अगली आवाज आप सुनेंगे बहुत ही मधुर आवाज के मालिक सुरेश भट्ट। So thank you. 33 more runs required in the remaining 18 balls. So anything may happen here. A very interesting match is going on here between Navi Mumbai Eagles versus DB Strikers. DB Strikers have set a huge target. We'll have to wait and see whether Navi Mumbai Eagles will be able to reach this target or not. Vignesh Bhatt and Srinivas are the two batters in the middle. Both the batters are hard hitters. So we'll have to wait and see what kind of strategy these two batters will adopt here in this first round match between these two teams. Mahesh Pai has been brought into attack to bowl the 5th over of the innings. A tall man, Mahesh, will be operating his over from the pavilion end. 34 हुआ है, 33 चाहिए। Vignesh goes for a big one. Ball is in the air. There is a fielder underneath it. My goodness, just put down that catch. What a reprieve for Vignesh here. Vignesh wanted to pull the ball onto the onside, but not from the middle of the bat. That was not a fully controlled stroke. The ball was in the air, but the fielder was not able to keep his eyes on the ball. So Vignesh has got a very good life here, and the bowler is not happy with that. He is very disappointed here. Score moves up to 35 just for the loss of 1 wicket. The man out is Pundalik Pai. I beg your pardon. Srinivas will take the strike now. At the non-striker's hand, we have got one of the hard hitter of the ball,
Vignesh Bach. Mahesh Pai for the second time in this over. In the right arm origin fashion he bowls. Ball takes the leading edge of the bat and very good catch taken by the wicket keeper there. It was almost going over the head of the wicket keeper. Finally, it was a single-handed catch. He converted that into an amazing catch. So Srinivas Pai departs. Second wicket has gone down for Navi Mumbai Eagles and they are in big trouble now. New batter in is Shivanand. Another hard hitter of the ball. Shivanand has got the caliber of hitting big sixes in any crucial moments, no matter what the conditions are. But he has to play his natural game in this match now. Vignesh and Shivanand will have to take the full responsibility of this game on their shoulders. And they need to exit the score to keep the scoreboard moving, keep rotate the strike. Because still 32 more runs required for their team, but only 16 balls are remaining. Successful bowler Mahesh Pai continues to the new man Archit. So Shivanand is all set to face now to Mahesh. We come back to Mahesh. Shivanand pulled away nicely onto the onside, played the shot all around the carpet. There is a protection with that single. Shivanand Pai is off straight away of the mark. He opened his account and he has given the strike to Vignesh. Let's see what Vignesh is going to do. So you are watching the match between Navi Mumbai Eagles versus DB Strikers. So far everything is good going for DB Strikers now. Mahesh is bowling exceptionally well. He's not giving any room for the batters to go for big hits. Far away from the off stump, we'll have to wait and see whether it's a wide or no ball. I think the main umpire is checking with the squaring umpire. And it has given to the third umpire to check whether the ball has pitched up outside the guideline. Whether it's a no ball or wide, we'll have to wait and see. In the LED screen you can watch the action replay. Looks like it's a no ball because the ball has pitched up outside the line. No ball has been given and there will be a free hit now. Let's see whether Vignesh will be able to take the advantage of this free hit. Free hit ball, he goes for a big one and that has gone out of the park. Big sixer. So as per the rule of this match, rule of this tournament, 9 runs will be awarded for this. What a terrific shot it was. That one just went like a tracer bullet. The ball has gone out of the stadium. So 9 runs will be rewarded. Great shot by there Vignesh. Score now jumps up to 46. So the equation is 21 runs required in the remaining 14 balls.
14 balls to go, 21 runs required. As long as Vignesh is there, that's a big hope for Navi Mumbai Eagles. Again, the bowler has bowled that ball outside the far away from the off stump. So umpire has no hesitation whatsoever in stretching his arms and turning around, giving a wide signal. One extra run has been added to the total. Straight down the ground he played all around the carpet, no risk taken, treated the ball on merits, played that shot to the long off and easily picked up a single. And now that single will bring another dangerous batsman, Archit, on strike. Vignesh is batting on 12 runs after facing 5 balls. Archit has faced only 1 ball so far, and he has opened his account in that first ball. Now Archit is back on strike. Mahesh will be bowling to Shivanand. Archit is his nickname, one of the explosive batter for Navi Mumbai Eagles, a key player, proudest player of their team. The ball was in the air, but unfortunately it has slipped away from the hands of the mid-off fielder, so Archit is safe. So that is the end of the over number 5. After the completion of 5 overs, it is 48 with 2 wickets down, 12 balls remaining, 19 runs required. Now this 6th over will be a challenging over. 10 runs they have aimed to score in this challenging 50-50 over. Minimum 10 runs they will have to score in this over. Let's see for which team this over is going to be a productive over. Vignesh will take the strike. A huge discussion is going on there among the players of DB Strikers. They can't able to lose this game. They have already set a huge target. This is the highest total their team has made so far in this tournament. Now everything is good going for Navi Mumbai Eagles. They just lost 2 wickets. The first man out was Pundalik Pai. After that they lost a wicket of Srinivas. Now Vignesh and Archit are the 2 batters in the middle. Hmm. 19 runs required in the remaining 12 balls. Challenging over started. Rohan is the bowler. That ball kept very low, surprising Vignesh. Vignesh doesn't know much about delivery, doesn't have any clue about that ball, misses it completely, and wicketkeeper collects the ball behind the stump, so no runs taken. First ball is a dot delivery. The meantime, watch Rohan for the second time in this over. Slower delivery, and the batsman Vignesh played the shot elegantly to the onside. Just pushed the ball to the onside towards the silly mid-on region, and before the fielder collects the ball, there is ample time for both these 2 batters to cross over for an easy single. So Vignesh gets a single, and that single will bring Archit on strike now. 4 balls to go in this challenge 50-50 over. Far away from the off stump, the batsman Archit quickly realized that it is too far from the off stump, so just leaves the ball, left the ball to go to the wicket keeper, and wide has been signaled by the umpire. 1 extra run has been added to the total here. The bowler will have to bowl 1 more extra ball in this over. That's a very fine delivery there, which beats the batsman. The ball is straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of a run there. The ball pitching on the off stump, and batsman Archit not getting the line of the ball. On that occasion, wicket keeper collects the ball neatly, so no chance of getting any score over there. 3 more balls to go of this over now. Only 2 runs have come so far in this over.
Again, similar delivery and similar result here. Comprehensively beaten. The pace deceives the batsman. Ball betrays Archit, and ball deflects the batsman directly into the wicket-keeper's baggage. Archit is not happy with that. He is very disappointed here because it was the over where they were aiming to score at least 10 runs. Again, that ball kept very low. We will have to really appreciate the bowling performance of the bowler. The bowler is bowling in the right spot here, bowling with a very good line and length. Last ball to go of this over now. Again, Archit beaten completely. I think he is out. Archit is out. Third wicket has gone down for the team. Now Navi Mumbai Eagles have slowly started feeling pressure. Very good over. Economical bowling figures there by the bowler. Very productive over for DB Strikers. Let's see what is the total. So 18 runs required now in the last over. दो बनाया So 18 runs required in the last 6 balls. Lot of pressure on the batters now, but Vignesh is still there. We will have to wait and see what Vignesh is going to do now. And lot of responsibility on the bowler. Let's see who is going to bowl the final over of the innings. Ramesh is the newcomer who is at the non-striker's end. Everything depends on Vignesh Bhatt now. Sandeep Kamath will be the bowler who is going to bowl the final over of the innings for the team DB Strikers. 49 runs for the loss of 3 wickets. Match between DB Strikers and Navi Mumbai Eagles is going on here. First round match between these two teams. That was a very fine delivery there by the bowler Sandeep Kamath. Batsman Vignesh had no clue about that ball whatsoever. Misses it completely. That ball beats not only the batsman but also the wicket keeper. Meanwhile, no runs resulted. First ball is a dot ball. Well, Vignesh goes for a big one. It could be a catch. There is a fielder underneath it. And what a catch! What a stunning catch! It was a single-handed catch. Outstanding, brilliant piece of fielding there by the fielder. Chittaranjan Prabhu, the fielder, tall man, has taken that catch single-handedly, and as a result, Vignesh Bhatt will have to depart here. Navi Mumbai Eagles are losing their hopes. Match is now slipping away from the hands of Navi Mumbai Eagles. What a great comeback by the players of Team DB Strikers, especially that challenging 50-50 over was a productive over for their team. So great comeback by DB Strikers. Their batsmen have done excellent job, and meanwhile the bowlers are also very smart. Their fielders are very quick, and Navi Mumbai Eagles are under pressure now. Another 18 runs required for Navi Mumbai Eagles, but only 4 balls are remaining now. Very successful bowler Sandeep Kamath has picked up that important wicket.
Now Sandeep Kamath is again making some change in the field placement. Sohan Kamath is the newcomer who is on strike and is all set to face Sandeep Kamath. Every dot ball will put more and more pressure on the batters now. 4 balls to go. Sohan gets a single. Ramesh Pai will take the strike. 3 balls remaining and they need 3 sixes to win this match. 18 runs required in order to win this match in just 3 balls. That's a dot ball. That is a dot ball, and DB Strikers now slowly marching towards the victory. That means 18 runs required in the remaining 2 balls. 17 runs required, I beg your pardon. Ball kept very low. Ramesh Pai misses it completely. DB Strikers are marching towards the victory here. What a great batting and bowling performance from the players of DB Strikers in the very first match which they are playing against Navi Mumbai Eagles. They set a huge target here and Ramesh Pai goes for a big one. And it's a 6. And finally DB Strikers have defeated Navi Mumbai Eagles in their first round match, and what a comprehensive victory for their team. They won the match and they've got 2 points in their points table here. DB Strikers have won this match without any problem. Their batters have done an excellent job during the batting performance, and after that their bowlers have done a very good job. Their fielders were also very smart. So what a great victory for DB Strikers here. They are very happy with the performance what their boys have shown in this first round match, and unfortunately Team Mumbai Eagles have lost their first round match. Now the next match will be between Shirsi Super Kings versus Andheri Supernaturals. News from the center is Andheri Supernaturals have won the toss and they have decided to field first. I request the players of Andheri Supernaturals to enter into the ground as soon as possible, and the 12th man of both the teams are also requested to come to the commentators box to assist our scorers. A second round match जाऊन असता अंतो या एक 6 ओव्हराचे मॅच एक बॉलराक मात्र 2 ओव्हर घालचे अवकाश
Only one bowler is allowed to bowl 2 overs. तशें वरल्या 3 bowlers एक ओवर घालपाक शकता. मिनिमम 4 bowlers have to be there. तशींची 2 टिमाचे 12th players देखोर कमेंट्री बॉक्सला येवका म्हणून तुमगेल्यागे रिक्वेस्ट करता आसत. तशींची सक्कट टीम्सांक रिक्वेस्ट आमी मस्त बिहाइंड स्केड्यूल आसाची. सुरवेरी सेकंड सेट 7 ओवराचे 6 ओवर केल्लेले आसा. आज फुल नाईट खेळची म्हूण मात्र आशिल्ले जाल्यार अशी आमी डिले जातर गेल्यार बटमाम आमी फायनल पळोवन हांगाच्यान वचचीशी आसतले नवे. We need the 12th man of both the teams here in the commentary box. The scorers are waiting for you. So wherever you please come to the commentators box as early as possible. तो दोनों टीम के जो 12वें खिलाड़ी है प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आपको आना है. अंधेरी टीम के 12वें खिलाड़ी आ चुके हैं. बैटिंग टीम में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके 12वें खिलाड़ी जो है तुरंत ही कम बॉक्स में भेजिए. चला तर सामन्याला सुरुवात करूया. दोघेही पंच मैदानाच्या आत. अभय पाटोळे आणि अमित डांगरे या ठिकाणी आपण पाहू शकाल पंचांच्या भूमिकेत. सिरसी सुपर किंग के एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज. गेंद जयेश भाई बॉल दीजिए. नए बॉल. सिरसी सुपर किंग आपके 12वें खिलाड़ी अब तक नहीं आ चुके हैं. बैटिंग टीम 12th मैन प्लीज. रविचंद्र स्ट्राइक पर है. उनका साथ निभाएंगे स्ट्राइक दीपक. आणि गोलंदाजीसाठी आता गोलंदाज सज्ज विक्रांत. विक्रांतने आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. पाहूया या वेळेला आता कशी सुरुवात करतील. गोलंदाजीची धुरा सांभाळतात. पहिलं षटक फेकण्यासाठी सज्ज आहेत ते.
पंचांचा इशारा येतो, सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू फुलटॉस स्क्वेअर लेगच्या दिशेने पाहूया. एक धाव त्या ठिकाणी मिळतीये. चांगली फिल्डिंग, चांगला थ्रो सुद्धा केलाय. एका धावेने आपलं खातं उघडतोय, आपल्या संघाचं सुद्धा खातं उघडतोय. पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल स्क्वेअर लेगच्या दिशेने गेला होता चेंडू आणि फक्त एक धाव मिळालेली आहे. तर दोघांनी अशा प्रकारे आपापली खाती उघडलेली आहेत. धावसंख्या फलकावर 2 धावा पाहायला मिळतील. गॅपमधला चेंडू चाललाय आणि हा आर पार सीमारेषा पार चौकार. रविचंद्रन यांच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाला हा चौकार. गॅप मधनं सुंदर असा सुसाट चेंडू सीमारेषा पार. प्रयत्न झाला होता मोठा फटका खेळण्याचा, परंतु मिस टाइम स्ट्रोक. झेल घेण्याचा सुद्धा प्रयत्न झाला होता. आणि यावेळेला पाहूया काय घडलंय. आणि पहिला गडी बाद. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही आणि स्पर्श करून यष्टीरक्षकाच्या हातात. आणि पहिला गडी या ठिकाणी बाद होतोय. पहिल्या क्रमांकाचा गडी बाद झालाय. कार्तिक कामत आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत आलेत. व्यंकटेश माफ करा आता या ठिकाणी मैदानात आलाय. दोपहर इस बीच तो ऑन द राइज खेला मिड विकेट की ओर. निश्चितच एक धाव त्या ठिकाणी मिळते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झालेली 8 आणि एक गडी सुद्धा बाद झालाय. 8 रन 8 धावांच्या मोबदल्यात एक गडी बाद पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. ये बहुत बढ़िया आड़े बल्ले से मिड विकेट की ओर
केवल 1 रन लेने का मौका प्राप्त हुआ। इस 1 रन के मदद से 9 स्कोर हो चुका है। ब्लॉक होल में गेंद तेज कर रहा और कमाल की गेंद थी ये, सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई। एक रन की मदद से स्कोर 10 पर जाकर पहुंच चुका है। कदमों का इस्तेमाल, टाइमिंग बहुत बढ़िया, नहीं रोक पाए गेंद को, चौका, 4 रन। चौके के मदद से 14 रन हो चुके हैं फिलहाल। कमाल का कैच, विकेट का पतन, दूसरे विकेट का पतन। 14 पर 2 विकेटें गिर चुकी है। इस बार तो जबरदस्त कैच पकड़ा, बहुत बढ़िया। प्रसाद ने कमाल का कैच पकड़ा है। दूसरे विकेट का पतन, 14 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी है। तेज करार गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। ओ, कोशिश अच्छी रही वहां पर, लेकिन आखिरी क्षण में गेंद छिटक गई उनके हाथों से। डाइव लगाकर कैच लेने का प्रयास, और ओवर नंबर यहां पर पूरा हो चुका है। 2 ओवर के बाद 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
17 रन हो चुके हैं फिलहाल 2 विकेटों के नुकसान पर। रोहिश की गेंद, बहुत अच्छी गेंद। स्कोर रुका है 17 पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। इस बार तो खेल दिया रक्षात्मक तरीके से और जमीन के सतह से खेला था और 1 रन तेजी के साथ भागकर पूरा किया है। ये देखिए, ये गेंद तो हवा में है, क्या कैच होगा? बिल्कुल बढ़िया कैच, तीसरे विकेट का पतन। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ, बहुत ही बढ़िया कैच। श्रीधर नए बल्लेबाज। एक्शन रिप्ले में भी देख पाएंगे आप किस प्रकार से इस कैच को पकड़ा। ये देखिए, मिस टाइम स्ट्रोक, काफी देर तक हवा में गेंद और ये कैच लपक लिया है। बहुत ही बढ़िया कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में। श्रीधर आ चुके अभी नए बल्लेबाज। 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर ये तीसरा जारी है इस समय। ये देखिए, बल्ले पर नहीं आए, पुल करने का प्रयास था लेकिन स्क्वायर लेग पर भी खिलाड़ी सावधान थे। 3 ओवर हो चुके हैं, 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो आइए अभी यहां पर कमेंट्री बॉक्स में चेंज होता हुआ और मैं आमंत्रित करूंगा कमेंट्री बॉक्स पर, कमेंट्री में कमेंट्री करने के लिए माइक्रोफोन पर सुरेश जी भट्ट। ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಗುಲ್ಜಿ. शिरसी सुपर किंग्स तशेंच अंधेरी सुपर नॅचरल्स ह्या 2 टिमांमध्ये सेकंड राउंड मॅच हातूंक चलतरस. शिरसी सुपर किंग्स फर्स्ट मॅच तांणी विन जावन 2 पॉइंट्स तांगे टिमान तांगे पॉइंट्स टेबलांत आस. तशेंच अंधेरी सुपर नॅचरल्स 2 पॉइंट्स खेळतस. फर्स्ट मॅच वेरी फर्स्ट मॅच ह्या टुर्नामेंटात तांणी विन जालेलो आस. सो हे एक मॅच खंडित एक क्लोज फिनिश जावन आसता. इथे म्हणल्यार दोन्ही हॉट फेवरेट टीम्सांक खेळतस. 4 ओव्हराची फर्स्ट बॉल लायक एक बॉल जावन आशिल्ले. श्रीधर आणि अनेक बॅटर रविचंद्र ओपनर बॅट्समॅन जावन आयिल्लो. 8 बॉल फेस करून 9 रनार खेळतस रविचंद्र. तशेंच नॉन स्ट्रायकर एंडांत टीमाचे कॅप्टन आयकॉन प्लेयर श्रीधर मेंडोस. ह्या ओव्हराची फर्स्ट 2 बॉल डॉट बॉल जाला. लायक करून बॉलिंग घालता संघ बॉलर
विक्रांत प्रभू हे तेगेले कोर्टाचे सेकंड ओवर. फर्स्ट ओवरान तो 8 रन दिवन 1 रन काडले. ह्या ओवरान तो 2 बॉल डॉट जाला. तिन्नी पेटी बॉलिंग घालतस. ह्या पेटी उबार मारला. बॉल वारेर आसा. कॅच जो चान्सेस आसा. विघ्नेश शेणायन कॅच धरला. लाय कोण जड्ज कोण लॉंग ऑन आशिल फिल्डर विघ्नेश शेणायन खंयचे चूक करनी कॅच धरला. सो ओपनर बॅट्समॅन रविचंद्र पॅव्हिलियनाक वतस 10 बॉल फेस करून 9 रन काडलेले. ओपनर जावन आयिल्लो. 4 ओव्हर ते राबलो. बट ह्या एक बॉलान तो हॉर्ड शॉट मारचे प्रयत्न केलेले जाल्यार त्या शॉटा मध्ये पॉवर तितली ना आशिल्ले. पॉवरफुल ना आशिल्ले तशें जावन बॉल सीधा फिल्डरान हाता गेले. अजोटूची एक लायक एक विकेट मेळ्ळा हांगा विक्रांत प्रभूक. 3 बॉलान तो खंयचे रन दिनाशी एक इम्पॉर्टंट विकेट हांगा काडला. रविचंद्र आउट जालो. रविचंद्राक रिप्लेस करूंक अनेक प्लेयर राइट हँडेड बॅटर दीपक शेणाय क्रीसार आसा. दीपक शेणाय अंपायरला गार्ड घेवन नेक्स्ट बॉल फेस करूंक रेडी जाल्ला. विक्रांत प्रभूले ओव्हराचे 4 बॉल. तेगेले कोर्टाचे सेकंड ओव्हर हे तशींची इनिंग्साचे 4 ओव्हर. लायक बॉल मस्त फास्ट जावन आयिल्लो बॉल. कट करचे प्रयत्न केले हांगा दीपक शेणायन बट कंप्लीटली मिस जालो. बॅट आनी बॉला मध्ये खंयचे रन नाशी. विकेट कीपर आदित्य सक्रेदंडेने बॉल कलेक्ट केला. तशींची वापस बॉलरा दिला. बॉल विक्रांत प्रभू हाता आसा. पंचा बॉल दीपकान उबार मारला. बॉल गेला सीधा वैरी बायरी इंटू द स्टेडियम फॉर 6 रन्स. दीपक शेणायन ताण फेस केलेल्या सेकंड बॉलान तुची एक हॉर्ड शॉट मारला. कंप्लीटली फिनिश केल्ल्या विक्रांत प्रभूक 6 रन प्राप्त जाला. 6 रन ऍड जावन स्कोर बोर्ड जंप जातस. शिर्सी सुपर किंग्स उडुपीचे ಒಟ್ಟು टीम स्कोर जाल्यात 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. आफ्टर 3.5 overs 25 runs. लास्ट बॉल बाकीस 4 ओव्हराच कडे बॉल. वापस तसले एक शॉट मारू गेल्लो. बॉल मस्त वेळ वाऱ्यार आशिल्ले. फिल्डर मस्त दूर आशिल्लो. मिड विकेट देखून फिल्डराक धांवन येवंक जाल्ले बट त्या बॉलाक रीच करूं जायनी. तशें जावन खंयचे डॅमेज जायनी. बॅट्समॅनाक 1 रन मेळ्ळा. लास्ट बॉलान तो 1 रन आयले. सो ओव्हर कंप्लीट जाल्ले. 4 overs गॉन. शिर्सी सुपर किंग्स उडुपी आर 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. शिर्सी सुपर किंग्साचे करंट रन रेट 5.5 आसा. नेक्स्ट ओवर 50-50 ओवर जावन आसता. चॅलेंज ओवर 10 रन्स एम केला बॅटिंग टीम शिर्सी सुपर किंग्सान. 10 रन हे ओवरान तूं मिनिमम काडका जाता. 10 रन काडली म्हूण जाल्यार खंडितकयता एक लायक स्कोर. करंट रन रेट इज 6.5 per over. बॉलिंग तूं चेंजेस केला. 9 बॉलराक हांगा इंट्रोड्यूस केलेलो आसा. नेक्स्ट ओवर घालूंक आदित्य भट आयला. लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आदित्य भट. फर्स्ट बॉल डॉट जाला. वापस बॉल घेवन आदित्य भट सेकंड बॉल घालूंक रेडी जाला. मंगळूरचे प्लेयर आदित्य भट दोन्ही बॉल घालतस 50-50 ओव्हराचे. वापस दीपकान मुखार येवन मारचे प्रयत्न केले. फ्लायटेड डिलिव्हरी बाउन्स जावन अनइवन बाउन्स म्हण येत. बॅट्समॅन दीपकान मारचे प्रयत्न केलेले बट बॉल बॅटा येतना मिस जालो. विकेट कीपर डॉक्टर विनोद नायकान बरलेलं काम केला. ह्या फाटी नेल्यार येईल बॉल बट ऑफ स्टंप देखून मस्त भायर आशिल्ले. तशें जावन अंपायरान तेगेले दोन्ही हात स्ट्रेच करून वाईड म्हूण सांगला. 1 एक्स्ट्रा रन मेळ्ळा हांगा. 1 एक्स्ट्रा रन ऍड जाला स्कोर बोर्डांत.
Aditya Bhatt to Deepak. Once again, ball was going far away from the off stumper. तशें वपास एक वैड म्हूण म्हणला. डॉक्टर विनोद नायक हांगा टिप्स दितास बॉलराक आदित्य भट्टाक खंडीत जावन वैड घाल्ली म्हूण जाता तांगे टिमाक मारक जाता. प्रत्येक रनचो इम्पॉर्टंट जावन आसता. तशें आसतना बॉलरान तागेले एक परफेक्ट डिसिप्लीन लायनार बॉलिंग जाता. बॉलरान डायरेक्ट आनी एक्युरेट बॉलिंग केल्ली म्हूण जाल्यार बॅट्समॅनाक खंडीत बंद घालचे अवकाश आसा. सो आदित्य सकरदंडे कॅप्टन आदित्य भट्टाक हांगा गाईड करतास कशी बॉलिंग घालका दीपकाक म्हणून. या पटी लायक एक बॉल परफेक्ट डिसिप्लिन लाइन म्हणत लायक एक राइट स्पॉट पडल्यार बॉल ब्लॉकोला पडल्यार बॉल दीपका खेळू जायनी मिस जाल्लो चिकेन जाला राहील बॉल बॅट्समॅन दीपकान ताणें एक्सपेक्ट केल्यार म्हणजे बॉल येनी वापस बीट जालो. ह्या फाटी मुखार येवन मारचे प्रयत्न केला बट टायमिंग्स तितले लायक ना आशिल्ले. बॉल सीधा लॉंग ऑन आशिल्ले फिल्डर आदित्य सकरदंडेन कॅच केला. सो दीपक शेनाय will have to move back to the pavilion. दीपक शेनाय आउट जावन पॅव्हिलियन वतस ताका रिप्लेस करूक नवे बॅटर जावन वीरेंद्र. जीएसबी मंडल डोंबिवली रजिस्टर्ड अन्य प्रस्तुत करतसचे मेडिकेयर IGCL 2024 सीजन 1 powered by Star Walker क्रिकेट टूर्नामेंट चलतरस 2 दिसाचे क्रिकेट टूर्नामेंट पलावा टायटन्स डोंबिवलीचे एक सुंदर जेवण आशिल्ल्या स्टेडियमान तुमकां पळोवचें मेळटस. लाऊड अपील आशिल्ल्या कॉट बिहाइंडा खातीर फ्लायटेड डिलिव्हरी लायक बॉलिंग म्हणून येतो आदित्य भट्टाला बॅट्समॅनाक खंडित काही बांधून घालतस बॅट्समॅना वयर मस्त प्रेशर क्रिएट करतस. या एक चॅलेंज 50-50 ओव्हरांत वापस आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल वीरेंद्र खेळू जायनी. वीरेंद्रान वैड म्हूण लेखल्या तशें सोडून दिल्ले खेळचे प्रयत्न करनी. बॉल विकेट कीपर विनोद नायकान कलेक्ट केला. सो ओव्हर कंप्लीट जाला बारी एक लायक प्रोडक्टिव्ह ओव्हर 5 ओव्हर कंप्लीट जाला. सो आफ्टर 5 overs runs on the scoreboard is 27 for the loss of 5 wickets. शिरसी सुपर किंग्साचे स्कोर 27 जाला. तशें म्हणटा तांगेले करंट रन रेट इज 5.4 per over. कडे ओव्हर बाकी 6 ओव्हराची मॅच. आता डॉक्टर विनोद नायक बॉलिंगाक आयला. लास्ट मॅचांत मॅन ऑफ द मॅच हॅट्रिक विकेट घेतील प्लेयर. लास्ट मॅचांत 5 विकेट घेतील डॉक्टर विनोद नायकान. तागेले एक मॅजिकल स्पेलिंग बॉलिंग आनी मग त्यांनी विन केलेली ती तशींची ताका मॅन ऑफ द सिरीज मॅन ऑफ द मॅच प्लेयर अवॉर्ड मेळ्ळेले. आता फर्स्ट बॉल डॉट जाला वापस सुरवे बॉल घालूक रेडी जाला डॉक्टर विनोद नायक फ्रॉम द स्टेडियम एंड. श्रीधर मेंडो गेल्यार बॉल पुलके लॉंग सायडान लॉंग ऑनात हॅमर करचे प्रयत्न केले श्रीधर मेंडोन बट थंय एक प्रोटेक्शन आसा. विघ्नेश शेणायन बॉल कलेक्ट केले तशें जावन खाली 1 रनान संतोष जावक श्रीधर मेंडोर 2 रनांक खंयचे अवकाश ना. 1 रन काणो आतां स्ट्रायक आयला विनोद वीरेंद्र. लायक एक बॉल इंटेलिजंट बॉलिंग म्हणत वीरेंद्र खेळू जायनी. बॉल बॅट्समॅना बीट जालेलो तशीच विकेट किपराक बीट जाल्ले हाजे मध्ये 1 रन काडचे प्रयत्न केलेले श्रीधर मेंडोन. सो श्रीधर मेंडो रन आउट जाला. लायक एक ब्रिलियंट पीस ऑफ विकेट कीपिंग म्हणत आदित्य सकरदंडेले
ಟೀಮಾಚ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೆಂಡೋ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅಂಕ ವಾಪಸ್ ಎತ್ತಸ್ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಜಾವನು अंधेरी सुपर नॅचरल्स कॅप्टन आदित्य सकरदंडेन बौलिंग चूज केलेले तक समजावन तागेल इंटेंशन क्लियर आशिल्ले तागेल बौलर्सांनी लायक करून हांगा बौलिंग परफॉर्मन्स दाखयलस 20 रन सारी येद्रा टिमाक रबयला 5.2 ओवर्स जाल्ला आनी 4 बॉल बाकीस इनिंग्साचे 4 बॉल बाकीस 3 बॉल घालूक डॉक्टर विनोद आमगेल जीएसबी क्रिकेट म्हूण येताना तांचो एक सीनियर मोस्ट प्लेयर म्हळ्यार डॉक्टर विनोद नायक मस्त पुरे जीएसबीचे प्रेस्टिजियस टीम्सांत खेळ्ळो तसो एक प्लेयर मणिपालाचे कस्तुरबा हॉस्पिटलांत फॉरेन्सिक डिपार्टमेंटांत HOD जावन काम करतस वापस एक रन आउट अननेसेसरली एक विकेट लॉस्ट जाला रन आउट रुपारी शिरसी सुपर किंग्स आर लूजिंग देयर विकेट्स इन द रेग्युलर इंटरवल्स स्कोर स्टिल रिमेन्स ऑन 30 रन्स विजय कुमार गायतोंडे आउट जाला कार्तिक क्रिस आयला नॉन स्ट्रायकर एंडांतू फुल टॉस जावन कन्वर्ट करचे प्रयत्न केला बॅट्समॅनान बट बॅट समजावन मेळ्ळी देर इज नो प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन द बॅट एंड बॉल तशें जावन खाली 1 रन मेळ्ळा अजोटूची स्कोर जाल्ले 31 सो आतां अखेरीच बॉल फायनल ओव्हराचे लास्ट बॉल Dr. Vinod Nayak will bowl to Karthik. A pretty clean ball. Like एक टर्न घेतलेली बॉल कडे मोमेंटाचे ऑलमोस्ट लेग स्टंपावर भायर वतशील बॉल कार्तिकान ते वाईड म्हणून सोडून दिल्ले बट बॉल सीधा येवन लेग स्टंपा हिट जाला तशें जावन कार्तिक इज आउट. A very good over from Dr. Vinod Nayak has come to an end. So Shirsi Super Kings Udupi have scored 31 runs in the allotted 6 overs. 32 is the target now for team Andheri Supernaturals to win this match. This is not a difficult target for the team because they got a very good batting lineup. Only thing is the opener batsmen will have to play with cool mind. They should not lose any wickets early in the innings. What they should do is just work the balls into the gap, pick up singles and doubles to keep the scoreboard moving, keep protect the strike. That's what they need to do now. And as far as Shirsi Super Kings is concerned, their bowlers must work very, very hard. They should bowl perfectly straight to the wicket. Picking up wicket is key for the team. If they can put 1 or 2 wickets in the first over of the match, definitely they can come back into this game. At Shirsi Super Kings such players ground enter jatta sati second inning start jatta before the innings of Andheri Supernatural starts. I would like to call Mr. Sandeep Bagul once again to the commentary box to proceed with the further commentary in English, Hindi as well as in our sweet Marathi language. बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी. चला तर मात्र या ठिकाणी सुरुवात करूया. Requesting captains of Dombivli Dorke 7 and Thane Titans to come at the trophy section for toss. Dombivli Dorke 7 आणि Thane Titans सांगेल नेक्स्ट मॅच नंबर 6 दोन्ही कॅप्टन्स हांगा ट्रॉफी सेक्शन येवका म्हणून विनंती टॉसा खातीर. संदीप जी ओवर टू यू. थैंक यू जय जी.
चलिए टॉस के लिए आगे बढ़ते हैं। 32 रनों का लक्ष्य रखा है। सिरसी ने 32 रनों का लक्ष्य रखा है अंधेरी नेचुरल्स के सामने। Next match, Thane Titans and Dombivli Dorke 7. Dombivli Dorke 7 have won the toss, elected to bowl first. चलिए चला तर मग या ठिकाणी आता फलंदाज आलेले आहेत. दोघेही फलंदाज मैदानाच्या आत. आदित्य स्ट्राईकला आहे, नॉन स्ट्राईक एंडला त्याच्यासोबत आहेत राकेश आणि गोलंदाजीची धुरा सांभाळत आहेत अतुल. अतुल यावेळेला पहिला चेंडू फेकतोय आणि पहिल्या चेंडूवर चांगला या ठिकाणी टप्पा पाहायला मिळालाय. 32 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे अंधेरी संघासमोर आणि त्या ठिकाणी चेस करण्यासाठी आता चांगली फलंदाजी अपेक्षित आहे. यावेळेला चेंडू उडवलाय उंच असा आणि चेंडू जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये. 2 धावांसाठी. चेंडूला चेक केलं जाईल. सुंदर फटका आणि हा सीमारेखा पार चौकारासाठी अतिशय चांगला फटका पाहायला मिळतोय. धावसंख्या होती ती 6. यावेळेला चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात जातोय. हुक करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी असफल ठरला. हवा तसा फलंदाजाला मारता आलेला नाहीये.
हा चेंडू चांगला होता, यावेळेला टप्पा चांगला होता आणि या चेंडूचा त्या ठिकाणी मात्र सन्मान करतोय फलंदाज. धावसंख्या अजूनही स्थिर, ती मात्र 6. ब्लॉक होल मध्ये टाकला चेंडू. यावेळेला तिरक्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी फलंदाजाचा यशस्वी ठरला आणि अशा प्रकारे पहिलं षटक संपलेलं आहे. धावसंख्या मात्र 6. कोणत्या प्रकारचा गडी बाद झालेला नाहीये. व्यंकटेश या ठिकाणी गोलंदाजी करेल. विकेट घेणं खूप महत्वाचं असणार आहे. यावेळेला हवेत चेंडू होता, परत मात्र कॅरी झालेला नाहीये. खेळण्यासाठी त्या ठिकाणी मजबूर केलं होतं. यावेळेला हवेत चेंडू आहे. पॉइंटचा खेळाडू त्या ठिकाणी येतोय आणि पहिला गडी बाद. एक मोठी सफलता मिळालेली आहे आणि फलंदाज या ठिकाणी झेलबादच्या स्वरूपात बाद होतोय. पहिल्या विकेटचं पतन ऍक्शन रिप्ले मध्ये सुद्धा पाहू शकता आपण. बॅटची वरची कड लागून चेंडू बराचसा वेळ हवेत आणि शॉर्ट पॉइंटला खेळाडू त्या ठिकाणी तैनात असताना चांगला झेल घेतला आणि पहिला गडी बाद झालेला आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मागवर. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन पुल करण्याचा प्रयत्न. शॉना पुल स्क्वेअरच्या दिशेने पाहूया. पहिली धाव जोरात, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जाईल. दुसरी धाव सुद्धा घेतली गेली आणि एक चांगली रनिंग बिटवीन द पाहायला मिळाली. एक चांगलं ताळमेळ दोघांमध्ये पाहायला मिळतं सध्या. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली. अशाच प्रकारे धावा बनवाव्या लागतील. एक गडी मात्र बाद झालाय. धावसंख्या आता मात्र होतीये ती 8. 32 धावांचा पिछा करत असताना अंधेरी नॅशनलचा संघ. मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु यशस्वी ठरला नाहीये. प्रयत्न करत आहेत मगासपासून आपण पाहतोय.
आणि आपण पाहू शकाल आता गोलंदाज संधी देत नाहीये मोठे फटके खेळण्याची संधी नाही. व्यंकटेश पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळेला ऑन द राईस हवेत चेंडू. चांगला प्रयत्न आणि चेंडू चाललोय सीमारेखा पार चौकारासाठी. धावसंख्या होती 13. 2 षटक संपले ना? 2 ओव्हर संपल्या ना? 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 13. 1 बाद 13. चांगला फटका होता यावेळेला. प्रयत्न झाला होता एसटी त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाकडनं, परंतु अडवू शकले नाही. सुंदर फटका पाहायला मिळाला. 13 धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 13. 1 बाद. अजूनही 24 चेंडू शेष आहेत. 19 धावांची गरज आहे. 24 गेंदे 19 रन जीतने के लिए. इस बीच कॉन्फ्रेंस मीटिंग चलता हुआ और ये तय होगा कि कौन से गेंदबाज अभी गेंदबाजी करेंगे. श्रीधर अभी आ चुके हैं. काफी अपेक्षा है. कप्तान ने उनको गेंद थमा दी है और देखना होगा कि अपने अपेक्षा पर खरे उतरते कि नहीं, क्योंकि विकेट चटकाना ये भी जरूरी है. 13 रन हो चुके हैं 2 ओवर के बाद. 24 गेंदों में 19 रन चाहिए जीतने के लिए. ये तो गेंद काफी तेज कर रहा, लेकिन लेग स्टंप से बाहर. इस समय वाइड का इशारा करते हुए अंपायर एक्स्ट्रा के तौर पर रन. 14 रन एक्स्ट्रा के मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ. ओ ये कमाल का स्ट्रोक है. ताकत से पूरी ताकत अपनाई. 6 रन 20 रन हो चुके. यहां से केवल 12 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए. कमाल का ये कलाइयों का इस्तेमाल और स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया. विकेट का पतन. अच्छे स्ट्रोक खेल रहे थे, लेकिन फिर से ललचाया और नियंत्रण खो बैठे. स्ट्रोक को खेल दिया हवा में और विकेट का पतन हो चुका है. डॉक्टर विनोद, जो कि आज इस टूर्नामेंट के पहले ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक पूरी की है. देखना होगा अभी. गेंदबाज तैयार.
इस बीच ओ बहुत ही बढ़िया गेंद फेंकी है, बहुत ही अच्छी गेंद थी ये। ये देखिए, ये शॉट ऑफ पुल स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन। इक्कीस रन हो चुके हैं, 32 रनों का पीछा करते हुए टीम। ये अच्छी गेंद थी, लेकिन इस बार तो गेंद का सम्मान किया। बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त करते हुए ये गेंदबाज। विकेटें चटकानी होगी, गुच्छों में विकेट लेने होंगे इस वक्त। पॉइंट की ओर खेल दिया। ओवर की समाप्ति 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तो चलिए यहां पर अभी सुनते हैं सुरीली आवाज, मीठी आवाज। माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर सुरेश भट्ट। Thank you, Sandeep ji. So 50-50 over has been applied here. Eleven runs required in the remaining 3 overs for Andheri Supernaturals. They have just lost 2 wickets. Dr. Vinod Nayak and Aditya Sakardande are the 2 batters in the middle. Vinod Nayak will take the strike and Aditya Sakardande is at the non-striker's end. Venkatesh Prabhu is going to bowl the 50-50 over. Stepped out very quickly down the track. He goes straight down the ground. He played the shot all along the carpet, but there is a protection. Sridhar Mendo, the fielder who was standing at long on region, collects the ball and throws it back to the bowler. But before the throw reaches the bowler, there is ample time for Dr. Vinod Nayak to pick up a single here, and he has given the strike to the dangerous batsman Aditya Sakardande, who is a set batsman. Aditya Sakardande has faced 9 balls so far, and he is batting on 10 runs. We come back to Venkatesh. Aditya goes for a big one over the top of the pavilion for a huge 6. What a terrific shot it was. That one just went like a tracer bullet. Down the track he goes, picked it up very nicely and hits the shot over the long off for a big 6R. So 6 valuable runs have been added to the total of Andheri Supernaturals from the bat of the set batsman Aditya Sakardande. His individual score now moves on to 16.
Ball chipped up in the air. There is a fielder, and Aditya is out. Atul Prabhu, the fielder who was standing at Silumirov region, makes no mistake, takes a simple catch. It was almost a lollipop catch for him, and finally the opener batsman Aditya Sakradande is now moving back to the pavilion. The captain departs. He has done the part of his job. After facing 10 balls, he has scored after facing 11 balls, he has scored 16 runs. So Andheri Supernaturals have lost their third wicket now. Everything is good going for the team. They are in a very good position to win this second match also. In the very first inaugural match today, they had defeated Andheri Supernaturals had defeated Dombivli Dorkes team in the very first inaugural match of this tournament of IGCL 2024. Now they are playing their second match against Shirsi Super Kings. This is the second match for both the teams. Shirsi Super Kings also had lost their won their first match today. Bowler continues. That's a very fine delivery there, which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicket keeper, so no possibility of a run there. That was a flighted delivery, and the batsman beaten comprehensively. The pace defrauds the batsman and directly into the wicket keeper's baggage, so no runs resulted. Dot delivery there by the bowler. Prasad, the left-hander, is on strike now. Crashed very nicely to the covers. Ball chipped up in the air, but ball has safely landed into the vacant region towards the no man region, and single has been taken in the last ball of the over. That means altogether they have taken 8 runs in this over. Eight runs they have scored, but 4 runs will be deducted because they were not able to score 10 runs. So only 4 runs will be added to the total. With those 4 runs, the score is now 25. Third match, Shivaji Park Tigers versus King Circle Knight Riders. King Circle विंजलेला सची मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड घेवच्याक दत्तूक हांगा पेतर आसाची. कॉंग्रॅच्युलेशन्स दत्तू. Dattesh, man of the match of third match, King Circle Knight Riders. Your score is 25. 25 runs on the scoreboard. That means now 7 runs required in the last 2 overs. Rohan Naik. Rohan Naik, man of the match of the fourth match, DB Strikers versus Navi Mumbai Eagles. Rohan Naik, trophy section ayo kamon vinanti. Deepak Badal has been brought into attack to bowl the next over. That will be the 5th over of the innings, and he will be bowling to the left-handed batter Prasad Bhatt.
Punch the ball onto the onside, turned away the ball nicely towards the fine leg. Will they get a second run? This could be a close, and square leg umpire has referred it to the third umpire now. We'll have to wait and see whether the batsman is inside the crease or not. Let's see what kind of decision will come from the third umpire. This is going to be very interesting. That was a close decision in fact, and hence the square leg umpire didn't want to take any risk, and he has given it to the upstairs now. लाइव आया हो Well, the decision from the third umpire is batsman is run out. The batsman's bat was not inside the crease, and hence third umpire says he will have to go back to the pavilion here. Andheri Supernaturals have now lost another wicket here at the score of 25 runs. Co-owner Thane Titans team Sandeep Shenoy तांक रिक्वेस्ट करता रोहन नायकाक मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिवच्याक. रोहन नायक मॅन ऑफ द मॅच ऑफ द फोर्थ मॅच DB स्ट्रायकर्स वर्सेस नवी मुंबई ईगल्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स रोहन. Vignesh Shenoy is a newcomer, has come out to the centre. One of the hard hitter of the ball, the proudest player of Andheri Supernaturals. He has got a caliber of hitting big sixes in any crucial moments, no matter what the conditions are. Thank you, Sandeep. Well, in the very first ball which Vignesh has faced, he sends the ball out of the park for a huge six. So Andheri Supernaturals have won the match by 5 wickets, by 6 wickets in fact, and Shirsi Super Kings Udupi have lost this match against Andheri Supernaturals. What an amazing, magnificent and deserving victory for Andheri Supernaturals. In fact, this is the second victory for Andheri Supernaturals, and they are in a topmost position so far in this tournament. They have played 2 matches so far and won both the matches, and they've got 4 points in their points table now. The next match will be played between Thane Titans versus Dombivli Dorcas 7. It will be a 6 overs game. Only one bowler can bowl at the max 2 overs. The first over will be a mandatory power play over. Either 4th or 5th over, the batting team can take a challenging 50-50 over. So now this match is also going to be a very interesting match. Both the teams can't able to lose this match. Very important match to get 2 points in their points table. So Dombivli Dorcas will be playing against Thane Titans now.
So Thane Titans and Dombivli Dorcas, both the teams are all set to play against each other in the next match of this IGCL 2024 season 1. The two umpires are making their way towards the ground. The two openers for Thane Titans are also ready, and I request the players of Dombivli Dorcas to enter to the ground immediately to set their field placement. And meanwhile, I've got Mr. Sandeep Bagul is here with us in the commentary box. He is a professional cricket commentator who can give you the commentary in multi languages. So over to Sandeep Bagwal. Thank you, Mr. Suresh Bhatt. Siddhesh will be on strike, and along with on non-striker in Himanshu will be there. Thane Titans versus Dombivli. Dombivli team has won the toss. They have elected to bowl. Extra player from Dombivli team, please send your extra player into commentary box as soon as possible. Gurudas will be introducing the first over, will be done by him. This is going to be a very important match. So here the umpire gesture to the scorer, and yes, we are ready. The first. What a pace he has generated, and very quick. The fielder was very alert there. That went to in his hand and then quick collected very nicely. This one in the air. Is he going to clear that distance? Yes, he has cleared, and that's gone. And that's, I think, yes, that's the 6. That's maximum. This is going to be a very important match because both of the team, they have lost first game. So this is going to be a very interesting match between these two. This one again, but this time a quick single has taken. He wanted to drive, but that ball did not carry, and chance for a quick single. Thane Titans reaches on 7. They need to put a big total against Dombivli, and that's why the first over is going to be a very important. One fielder in the deep mid-wicket region area. This one again goes his back foot, gentle push on offside. The fielder was very quick on the ball, but he couldn't stop that, could not take in his hand. And meanwhile the single has taken quickly, pushing the ball just on offside. Every run, single run is very important. That goes in the air. Will it be taken? He comes under it and has taken. The first wicket has gone. Thane Titans have lost their first wicket. Gaurang comes underneath and takes beautiful catch. Siddhesh back to dugout. He makes his way towards the pavilion, and beautiful catch taken. Sharan, the new batter, will be coming on now. Comes to the center. Thane Titans need a big partnership. They need to stitch a big partnership right now, because already they have lost first match
Even if you will think about Dombivli, they also have lost first match. So both the teams have lost their first game. Charan on strike. That was into block hole. Could be a chance, but that he is not able to collect it. And very lucky there, and single has taken. After first over, 9 runs on board with the loss of 1 wicket. प्रसाद आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में 9 रन आए 1 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा प्रसाद किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए बहुत जबरदस्त करारा ये गेंदबाजी का प्रदर्शन, तेज करार गेंद फेंकी है। ये देखिए ये बहुत बढ़िया गेंद हवा में है और गेंद जो है छक्के 6 रनों के लिए, सिक्सर। बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला, छक्का लगा दिया। 15 रन पर जाकर पहुंच चुका है स्कोर। ये देखिए बहुत बढ़िया पुल किया, फील्डर भी वहां पर तैनात मौजूद है। तुरंत ही थ्रो किया और थ्रो आने से पहले रन पूरा किया था। ये टाइमिंग बढ़िया है, हो बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छा थ्रो किया, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर 18। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। ये अच्छा स्ट्रोक, ये बढ़िया स्ट्रोक है, पूरी ताकत से खेला हुआ ये स्ट्रोक। 6 रन, बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। 24 रन इस छक्के की मदद से। हिमांशु रेगे के बल्ले से आता हुआ ये तगड़ा प्रहार, बहुत बढ़िया, टाइमिंग लाजवाब था। कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए डेक पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ लगाना चाहते थे, लेकिन क्या कमाल का थ्रो किया प्रसाद ने। स्कोर हो चुका है अभी इस समय 25 रन। 2 ओवर के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
इस बार अविरत की ये गेंद थी, ऐसा लगा कि ऑनसाइड पर, लेकिन गेंद जो है ऑफसाइड पर गई। मारना चाहते थे ठाना, लेकिन गेंद गई पूना। यस कलवा 26 रन। छब्बीस रन हो चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अगर मैं किसी पिक्चर का डायरेक्टर होता तो उस पिक्चर का नाम होता डॉट बॉल, और इसके हीरो होते ये गेंदबाज। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। तो देखना चाहेंगे अब डॉट बॉल मूवी। ये देखिए, ये तो एकाग्रता भंग की है छक्का लगाकर, बहुत ही कमाल का। ये नौवा है। ओके, सिक्सर। देखिए, बेबी को बेस पसंद है और चरण को सिक्सर पसंद है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला। ओहो, ये कमाल की गेंद थी, काफी तेज कर्रार गेंद, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। एक्शन भी कमाल का है इनका। बल्लेबाज तो डरता ही होगा इस एक्शन को देख के। ये देखिए, ये गेंद बिंदी गेंद। ये तो ऑन द राइज खेला। ओहो, ये क्या छूटा, ये क्या छो सकता था। तीन ओवर की समाप्ति, 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आने वाले 3 ओवर के लिए माइक्रोफोन पर आएंगे एक बहुत ही प्यारी आवाज, मिस्टर सुरेश जी भट्ट। ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದೀಪ್ ಜಿ. 3 ओव्हर ಅಂತೂ 33 रन स्कोर केला ठाणे टायटन्साच्यानं. करंट रन रेट इज 11 रन्स पर ओव्हर. लायक एक रन रेट म्हणून येतं. सुरुवात बॅटिंग करतोस ठाणे टायटन्स. सिद्धेश रमानी फर्स्ट विकेट लॉस्ट झालेला, 7 रन स्कोर केलेला आहे. आता इमांशु आणि चरण कामतल मध्ये लायक एक पार्टनरशिप येतोस. या एक पार्टनरशिप ब्रेक करू का जतांगा बौलर्सानं. हॉट शॉट, बॉल गेला वैरी बाहेरी दूर, 6. सीधा डगआउट आला पेटायला. 6 व्हॅल्युएबल रन्स ठाणे टायटन्स मिळतोस. अजोटूची रन्स जंप जाऊन 39 झाला विथ जस्ट 1 विकेट डाऊन. वापस एक तसले शॉट मारू गेला, बट मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जायनी. टायमिंग तिथली लायक नाशिल्ले, प्लेसमेंट परफेक्ट नाशिल्ले. तश जावन सीधा मिड विकेट आशिल्लो फिल्डर प्रतीक प्रभून
कॅच केलेला अजोटूची सिद्धेश रमणी लायक एक बॅटिंग परफॉर्मन्स दाखवून ओपनर बॅट्समॅन जावन आयलो सिद्धेश रमणी आता आउट जाला सॉरी चरण कामत आउट जालो प्लेयर एक बॉल फेस करून 21 रन्स स्कोर केलेला चरण कामत पेविलियनाक येतस सकड तागे टीममेट्स ताका स्वागत करतस ती लायक एक बॅटिंग परफॉर्मन्स 21 रन्स अंतू 3 सिक्स ताण मारलेला खाली इक्र बॉल फेस करून स्ट्राइक रेट 190 चरण कामताला लेग बाय म्हणून अंपायराला सिग्नल येतस 2 रन्स डिक्लेअर्ड So 3.3 overs jalla Thane Titans such a score of 41 for the loss of 2 wickets. IGCL च्या 6th मॅच सुरू दिसाची हांगा चलतरस लायक एक बॉल ब्लॉकला पडलेला बॉल बॅट्समॅनान डिफेन्सिवली फॉरवर्ड करून खेळलो त्या एक बॉलाक खंयची नंबर रेस्पेक्ट दिवक तशी खेळलो आणि 1 रन धांवन कंप्लीट केलेला लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणून येत 1 रन ऍड जाल्ले ठाणे टायटन्स score 42 jalla after 3.4 overs. Bowling antu Gaurang pancha ball galuk stadium end adokunu left handed batter ak क्लीन बॉल ऑन साइड पुल करचे प्रयत्न केलेला बट लास्ट मोमेंट बॉल नेलार आयिल्ले लो जावन आयिल्ले मित्र बॅट्समॅन ताण एक्सपेक्ट केला म्हणजे येनी बॉल सीधा वचून मिडल स्टंपाक लागिल अजोटूची बॅट्समॅन आउट हिमांशु पेविलियनाक वापस येतस 6 बॉल फेस करून 1 रन काडलेला हिमांशुन एक 6 असेल त्या इनिंग्स अंतू नवे बैटर जाऊन सत्यजित प्रभु हिमांशुला जाग रिप्लेस करूक राइट हँडेड बॅटर सत्यजित प्रभु क्रीस आयिल ओव्हराचे लास्ट बॉल गौरंग एक रन ಈಸಿಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗ ಸತ್ಯಜಿತಕ 2 ರನ್ ಕಂಚಿ ಅವಕಾಶನ 1 ರನ್ ಕಾಣು ಸತ್ಯಜಿತನ ತಗೆಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ केले अजोटूची ओवर कंप्लीट जाला सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 overs score is 43 for the loss of 3 wickets after the completion of 4 overs gone 43 for the loss of 3 wickets.
सो 5 ओव्हरात 50-50 ओव्हर जावन आसता. 10 रन्स एम केला बॅटिंग टीम थाने टायटन्साच्यान. पळोवया ह्या 50-50 ओव्हर्सांत कितले रन्स तांगे टीमाक ऍड जाता म्हणून. चॅलेंजिंग ओव्हर मिनिमम 10 रन्स स्कोर केले म्हणून जाल्यार ಒಟ್ಟು 15 ರನ್ तांगे टीमाक ऍड जाता. हे एक टुर्नामेंटाचे रुला प्रकारी एक नवे लीग नवे क्रिकेट विथ ए न्यू ड्रीम GSB मंडळ डोंबिवलीने ऑर्गनाइज करता आसती. 5 दिसाक म्हळ्यार संडे रात्री हे टुर्नामेंटाचे प्ले ऑफ्स सेमीफायनल फायनल असेल पुरा क्वालिफायर आणि एलिमिनेटर मॅच जावन फायनल चलचर आस. 8 टीम्स भागी जाल्यार एक IGCL सीझन 1चे चॅम्पियन कोण जाता म्हणून वेट करून पळोवका. मस्त एक लार्ज नंबरारी 5 दिसाक पलावा टायटन स्टेडियमांत हे टुर्नामेंट विटनेस करूक खंडितकय मुंबईचे ऑडियन्स येतात म्हणून आम्ही एक्सपेक्ट करता आसती. गुरुदत्त बॉलिंग तसं लाईक बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंपवर बॉल बॅट्समॅन कंप्लीटली बीट झाला. बॅटरी बॉलामध्ये खंयचे करेक्शन ना बॉल सीधा गेला विकेट किपर हातांत. गुरुदत्त एक एक्सपिरियन्स्ड बॉलर. बॅट्समॅन कशी बांधून घालका म्हणून ताका मस्त अनुभव आसा. 1 रन इझिली काढला ऑन साइड ड्राईव्ह करून. बॉल लॉंग ऑन गेलेला आसा. 1 रन मात्र मेळ्ळा बॅट्समॅनाक. अभी 3 बॉल बाकी है. या ओव्हरांत आणि 3 बॉल बाकी आसा. चारी पटी गुरुदत्त फ्रॉम दी पेविलियन एंड. या पटी उभार मारला खंडीत जाऊन बॉल भायर वता. 6 रन्स. IGCL सिक्सर. ऑलरेडी 8 रन येईल असं या ओव्हरांत. 2 बॉल बाकी असं आणि 2 रन काढली म्हणून जाल्यार त्या चॅलेंजिंग 50-50 ओव्हरांत एम केलेल्या 10 रन तांकां मेळटा प्लस 5 बोनस रन्स मेळचे असं. सो टोटली 15 रन ऍड जाता. या 15 रन घेवच्याक तांकां आनी जावका 2 बॉलांत 2 रन. पळोवया 5 बॉलाक कसं जाता म्हणून. शॉर्ट बॉल उबर मॅच प्रयत्न केला बट 1 रन मेळतस. 5 बॉल जाल्ला या ओव्हरांत 9 रन आयला. कडे बॉल घालूक गुरुदत्त. एक रन या बॉलांत आयली म्हणून जाल्यार बोनस 5 रन मेळता. ಒಟ್ಟು 15 रन या ओव्हर आईल म्हणके जाता. पळोवया गुरुदत्त हांगा या बॉल डॉट करता की म्हणून. या पटी सीधा गेला फिल्डर हातांत. ऑलमोस्ट एक शॉर्ट थर्ड मॅनार बिल फिल्डरान जॉन टी रोड्स म्हणके वारा उbbून कॅच धरला अजोटूची आउच. 10 रन स्कोर करक आशिल्ले चॅलेंजिंग ओव्हरांत बट 9 रन मात्र आयला. तश जावन तांगेले टोटल स्कोर देखून मायनस जाता. $43 आशिल्ल्या तावळी 4 ओव्हरानंतर. आता आफ्टर 5 overs score is 48 for the loss of 4 wickets. Thane Titans. लास्ट ओव्हर गलूक विनायक पाय.
नवे बैटर जावन आदित्य किणी फुल टॉस जावन पडाल बॉल बट त्या ज्युसी फुल टॉसाचे एडवांटेज घेवच्या जायनी बॅट्समॅनाक ऑन साइडाक टर्न करचे प्रयत्न केलेला बट मिडल ऑफ द बॅट कनेक्ट जायना अशी 1 रन मात्र मेळ्ळा सुरवे बॉलांतू 1 रन मेळ्ळा 5 बॉल बाकी आसा दोन्ही बॉल घालूक विनायक पाय या पेटी मस्त भायर आशिल्लो ऑफ साइड outside the off stump तशींची far away from the off stump जावन आशिल्लो मित्र अंपायरान तागेले दोन्ही हात स्ट्रेच करून वाईड म्हणून डिक्लेअर केला 1 एक्स्ट्रा रन मेळतस दोन्ही बॉल घालूक विनायक वापस राइट हँडेड बॅटराक आदित्य किणी स्ट्रायकर नॉन स्ट्रायकर सत्यजित आदित्याला इंडिविजुअल स्कोर 1 रन तशींची सत्यजिताल 5 बॉल फेस करून 5 रन काढला आता डॉट बॉल जाला सत्यजितान आदित्याक टिप्स दिल्यार पळोव्या विनायकाल नेक्स्ट बॉल आदित्य किणी कसो करता म्हणून वापस ऑफ स्टंप मस्त बायरी आणि वैड नो बॉल म्हणून डिक्लेअर केला स्क्वेअर लेग अंपायरान स्क्वेअर लेग अंपायरान नो बॉल म्हणून म्हणला बहुशः अबाव दी वेस्ट लेवल आशिल्ले रिव्यू सो थर्ड अंपायराक रिव्यू करूक फील्ड अंपायर्सान सांगिल्लें so third umpire will check in the television screen now what exactly has happened ball height आशिल की पिच्चा दाखवून बाहेर आशिल की म्हणून जड्ज करतस थर्ड अंपायर ग्राउंड आशिल्ले एलईडी डिस्प्ले ताजे रिप्ले एक्शन तुम एक्शन रिप्ले पळोवत यूथ ऑफ जीएसबी यूट्यूब चॅनलांतू ह्या टुर्नामेंटाचे नेर प्रसार लाइव टेलिकास्ट पळोवचे मेळटस इंटर जीएसबी क्रिकेट लीग 2024 सीजन 1 presented by Medic Medicare Limited powered by Star Walker organized by GSB Mandal Dombivli registered for the first time Dombivli into एक cricket tournament GSB community players खातीर organize करता ती so third umpire is taking his time in reviewing that decision कडेच ओवर प्रोग्रेस स ओवर सच मॅच या एक मॅच मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसा दोन्ही टिमांक इथे म्हळ्यार दोन टिमांचे तांगेले फर्स्ट मॅच लॉस्ट जालेले सो 2 पॉइंट्स घेवचे खातीर दोन टिमांक हे मॅच विन जावचे एक अनिवार्य परिस्थिती म्हणून पळोवका कोण हे मॅच विन जावन 2 पॉइंट्स घेता म्हणून स्क्वेअर लेग अंपायर सिग्नल नो बॉल म्हणून येतस नो बॉल म्हणून थर्ड अंपायरान सांगिल्लें स्क्वेअर लेग अंपायर नो बॉल मेळ्ळा सो राइट डिसिशन म्हणून थर्ड अंपायर सांगतस सो फ्री हिट मेळटा तांकां पळोवया बॅटर ह्या एक फील्ड फ्री टच एडवांटेज घेता की म्हणून फ्री हिट बॉल फुल टॉस जावन पडल्यार बॉल शॉर्ट थर्ड मॅनागी बॉल गेला 1 रन मेळ्ळा टिमाक फ्री टच एडवांटेज घेवच्या जायनी बॅटराक लायक एक बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप ब्लॉक होला पडल्यार बॉल बॅट्समॅन कंप्लीटली बीट जालो बैट आणि बॉल मध्ये खंयचे कनेक्शन नाशिल्ले तशें जावन बॉल सीधा विकेट किपराल हाता गेला अजोटूची
स्कोर जल्ला 52 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स ठाणे टायटन्स. दोन्ही बॉल बाकीस लास्ट ओव्हर आजचे वापस बॉल ऑफ स्टंप भायर आशिल्ले वाईड बॉल मस्त एक्स्ट्रा रन्स एकटेच एक ओव्हरान तू विनायक पै तेगेले लाइन एंड लेंथ मेंटेन करूक चिक्के चुकतेस एक्स्ट्रा रन्स एदरा टीमाक ऑपोजिशन साइड दितेस गिफ्ट जावन सो एक एक्स्ट्रा रन ऐड जावन 53 जाल्ले स्कोर बोर्ड अंतू ठाणे टायटन्स. या पेटी उबल मारला बॉल वारस एक इजी कैच बट कैच ड्रॉप मस्त इजी जावन आशिल्ली कैच. खंडित बॉलर इज नॉट हैप्पी विथ दैट. In fact, the entire team is very disappointed. See the ball long of आशिल fielder al hatta वत्ते आशिले but एक आसान सा मौका अंगा चुकीलस. So don't run मेला 55 runs, 55 on the scoreboard, and here is the last ball of the final over. मुकरन मारला या पेटे कैच जो चांसेस से बॉल गेला सीधा बाउंड्री में वकुनो बायरी. One bounce over the boundary for 4 runs to finish their innings. So 4 runs have come in that last ball. That means they have scored 59 runs. Now 60 is the target for the team. Dombivli Dorcas will have to score 60 runs in 5 overs to win this match against Thane Titans. They need a run rate of exactly 12 per over. This is not a easy target for the team because Thane Titans have got good number of bowlers, but anything may happen here. Let's see who is going to win this match to get 2 points in their points table now. Well, the required run rate is 9.83 per over. It's a 6 overs match. Yes, 60 is the target. Thane Titans have got a run rate of 9.83 per over. That means 10 runs per over will have to score by team Dombivli Dorcas to win this match. So the two openers of Dombivli Dorcas are slowly marching towards the track. 60 is the target to win this match for Dombivli Dorcas in 6 overs game. Let's see who is going to win this match. Meanwhile, I've got Mr. Sandeep Bagul is here with us in the commentary box. Once again, very warm welcome to you, sir. And I'm going to hand over the microphone to Mr. Sandeep Bagul to proceed the further commentary of this first 3 overs. Thank you, Mr. Suresh Bhatt. So the target has given by Thane Titans to Dombivli is of 60 and 10 runs per over they need. सेकंड इनिंग सूर्य पुढे किंग सर्कल नाइट राइडर्स नवी मुंबई ईगल्स दोन्ही टीमाच कॅप्टन जाक टॉसा खातीर ट्रॉफी सेक्शन आपे तरस प्रतीक स्ट्राईकला असतील नॉन स्ट्राईक एंडला आहेत लोकेश आणि गोलंदाजीची धुरा सांभाळतात चरण. पाहूया चरण या ठिकाणी काय करतील.
चरण जवळ चांगला पेस आहे. चरण कमालीची गोलंदाजी करतो, चांगला अनुभव आहे त्याच्याजवळ. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु त्या ठिकाणी डायरेक्ट हिट असता तर निश्चितच काहीतरी घडलं असतं, परंतु चेंडू काही यष्टांना लागत नाही आणि दरम्यान एक धाव घेण्याची संधी मिळते. यावेळेला हा चांगला चेंडू आहे. सुरुवातीपासूनच मोठे फटके खेळणं हे खूप गरजेचं आहे संघाला. उलटो चेंडूचा फायदा उचललाय आणि चेंडूला पाठवलंय. पाहूया चौकारासाठी 4 धावा मिळतील. अशाच फटकांची आवश्यकता आहे, कारण की 60 धावांचा पिछा करायचा आहे. पंच त्या ठिकाणी विचारतात प्रश्न आणि निश्चितच या ठिकाणी पाहूया काय आहे. चौकार की षटकार याचा निर्णय देतील पंच. Next match आहे टॉस झालेला सर. किंग सर्कल नाईट रायडर्स हॅव won the toss and they have elected to bowl first. चौका. Yes, review have been lost and no one can take now. ये देखिए, ये अलग ही स्ट्रोक खेलने का प्रयास. चांगला चेंडू होता. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न पाहिजे तसा बॅटच्या पट्ट्यात काही आला नव्हता चेंडू. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. मोठे फटके खेळावे लागतील. यावेळेला हा चेंडू खूपच ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि निश्चितच हा वाईट चेंडू आहे. अतिरिक्त धाव मिळतीये आणि या अतिरिक्त धावेने संघ पोहोचतोय 6 या धावसंख्येवर. ये देखिए, ये कमाल का स्ट्रोक मिड विकेट की दिशा में
खिलाड़ी वहां पर नहीं रोक पाए और ये छक्का, जबरदस्त स्ट्रोक, बल्ले के मध्य से पूरी ताकत से खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए। यावेळेला पाहूया काय घडलंय त्या ठिकाणी। चांगला चेंडू टाकला आणि पहिल्या षटकाची समाप्ती 12 धावा। प्रत्येक षटकामध्ये कमीत कमी 10 बनवल्या पाहिजेत आणि ह्या षटकामध्ये 12 धावा आल्यात, म्हणजे एक चांगली सुरुवात म्हणता येईल डोंबिवली या संघाची। ठाणे टायटन संघाने चला वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचंय, जास्त वेळ घेऊ नका, जरा आपण वेळेच्या बाबतीत लक्ष देऊया, कारण आधीच आपण सुरुवात उशिराने केलेली आहे, त्या बाबतीत जरा आपण लक्ष घालूया। चला पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज। यावेळेला सुंदर असा फटका, परंतु ऑन साइडला क्षेत्ररक्षक तैनात आणि सरळ त्यांच्या हातात फलंदाज बाद होतोय। डोंबिवली संघाने महत्वाचा गडी त्यांचा गमावलेला आहे आणि यावेळेला आपण पाहू शकाल प्रतीक बाद झालेले आहेत। प्रतीक यांना परतावा लागेल तंबूमध्ये। चला नवीन फलंदाज पटकन आपल्याला यायचे। गुरुदास आता मैदानात आलेत। प्रतीक बाद झाल्यानंतर गुरुदास यांना पाठवले। सुंदर असा जेल ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहिला आपण। यावेळेला अगदी बॅकफुटला जाऊन नॉन स्ट्राइक गेंदला पाहूया, धावची होण्याची शक्यता आणि होय फलंदाज बाद झालाय। चांगला थ्रो केला आणि गोलंदाजाने जसा जसा मिळाला तसाच तो यष्टांवर फेकला गेला आणि एक चांगला निर्णय पंचांकडनं पाहायला मिळाला। कमालीचा हा प्रयत्न या ठिकाणी धावचीत बाद झालेला आहे। दुसऱ्या क्रमांकाचा गडी बाद झालाय। लोकेश यावेळेला मात्र लोकेशला परतावा लागेल। आता मैदानाच्या आत दोघेही फलंदाज नवीन आहेत। वैभव आता आलेत नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत। हवेत चिटू असताना त्या ठिकाणी प्रयत्न झाला। बारा धावसंख्या। हे षटक अतिशय चांगलं हाताळलं जात आहे या गोलंदाजाकडनं। यावेळेला सुंदर फटका, चांगला प्रयत्न झाला परंतु अडवू शकले नाहीत आणि हा षटकार अतिशय मनमोहक फटका, सुंदर असा फटका। पहिलेच ठरवलं होतं काहीतरी मोठा फटका खेळायचा आहे आणि तसंच घडलं, पाहायला मिळालं।
यावेळेला कट केलाय. यष्टीरक्षक पाहूया, चेंडूला कलेक्ट करतोय तोपर्यंत एक धाव घेऊ शकलेत, घेण्यापासून रोखू शकले नाहीत. एकोणीस धाव संख्या आतापर्यंत. हुक करण्याचा प्रयत्न आणि आता पंच त्या ठिकाणी प्रश्न विचारलाय. पाहूया काय घडलंय. पंच आपल्याला सांगतीलच काय निर्णय असेल. आणि निश्चितच या ठिकाणी परतावा लागेल फलंदाजाला. अतिशय कमालीचा निर्णय. फलंदाज बाद झालाय. तीन गडी बाद झालेत. अतिशय चांगला थ्रो. रनआउट आउट झालाय. धावचित बाद झालाय. गुरुदास बाद झाला. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत प्रतीक प्रभू. यावेळेला पाहूया. हा चांगला चेंडू होता, परंतु चांगल्या चेंडूवर एक चेंडूला ढकललं ऑन साइडला फक्त एक धावासाठी. तिसरं षटक आता या ठिकाणी प्रगतीपथावर. थर्ड ओव्हर हॅज स्टार्टेड. 23 गेंदें बची है. 40 रनों की आवश्यकता है. एक बॉल. ओके, चेक करेंगे.
ये देखिए, ये बहुत बढ़िया। ओ, ये तो क्या छूटा। बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। 21 रन इस 1 रन की मदद से। ये तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। प्रत्येक ओवर में कम से कम 10 रन बनाने हैं। पहले ओवर में 12 है, उसके बाद 8 रन। इस ये देखिए, अपने शो को चेक किया, गेंद हवा में और विकेट का पतन, और एक विकेट गिरता हुआ, एक के बाद एक विकेट गिरता हुआ। बिल्कुल यहां पर पारी बिखरती हुई और इस बार इस बल्लेबाज की पारी समेटती हुई। अभिषेक, वैभव आउट हो चुका। बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरना होगा डोंबिवली की टीम को। 60 रनों के चुनौती का पीछा करते वक्त और एक विकेट गिर चुका है। 4 विकेट गिर चुकी है 21 रन पर। इतनी सी छोटी सी रन संख्या पर 4 विकेट गिरना, ये काफी मुश्किल डोंबिवली टीम के लिए। इस समय बल्लेबाज आ चुके हैं। अभिषेक भट्ट आ चुके हैं। अभिषेक भट्ट यहां पर आ चुके हैं। 21 गेंदें बची है, 39 रनों की आवश्यकता है। ये तो खेल दिया बहुत बढ़िया गैप में से गेंद, लेकिन रोकने में कामयाब रहे हैं। बहुत बढ़िया फील्डिंग हिमांशु ने किया है, बहुत बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो। स्कोर 23 इस समय हो चुका है। केवल 2 गेंदें इस ओवर की बची अभी। इस बार कोशिश की, कदमों का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया, बल्ले के मध्य से करारा प्रहार, 6 रन। उनतीस रन बन चुके हैं। 19 गेंदें बची है और 31 रनों की आवश्यकता है। कुछ ऐसे ही छक्के चौके लगाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए।
ये भी अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया, पावरफुल स्ट्रोक और एक सिक्सर। यहां से अभी रुख बदल गया है मैच का। 35 रन 3 ओवर के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर। आने वाले 18 गेंदों में केवल 25 रन चाहिए जीतने के लिए डोंबिवली की टीम को। बहुत ही जबरदस्त मुकाम पर यह मैच आकर पहुंच चुका है। तो क्या कुछ होगा देखिए, स्कोर टोटल हो चुका है 35, 3 ओवर के बाद 35 रन। 18 गेंदों में अभी रनों की आवश्यकता है 25। और क्या कुछ होगा आगे का आंखों देखा हाल बताएंगे आपको। माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करूंगा वो सुरीली आवाज मिस्टर सुरेश जी भट्ट। Thank you very much, Sandeep sir. So very interesting, exciting match is going on here. We can expecting really a fascinating game. Anything may happen here. 50-50 situation for both the teams. 25 more runs required in the remaining 3 overs. This is going to be a challenging 50-50 over now. 4th over of the innings. 10 runs. The batting team is aimed to bowl score now. Let's see whether how many runs will come in this over. Pratik Prabhu and Abhishek Bhatt are the two batters in the middle. Especially Abhishek Bhatt is playing an astonishing knock. He has scored 14 runs with the help of 2 huge sixes after facing just 3 balls. Thane Titans had given a target of 60 runs for the opposition side. Dombivli Durke 7. Who is on strike now? Left-hander Pradeep will take the strike. Ball chipped up in the air, but ball falling away from the reach of the fielder. Meanwhile, couple of runs have been added to the total here. 2 more runs have been added to the total. Pratik gets 2 runs in his individual account. His individual score now moves on to 3. Score moves up to 37. We come back to the bowler. Pratik goes for a big one. There is a fielder. There is a fielder, and Pratik is out. Dombivli Durkes have unnecessarily lost a wicket of Pratik Prabhu here. Lots of hopes from him, but none can fulfill. At one end, Abhishek Bhatt is playing brilliantly, and Pratik Prabhu should have taken a single hand. He should have given the strike, as much as strike as possible, to Abhishek, because he is the set batsman there. But unfortunately Pratik was looking for a big hit, not from the middle of the bat. As a result, the ball has gone straight to the fielder, who was standing at long on region. So left-hander Pratik departs here. One more wicket has gone down for team Dombivli Durkes now. We are in the 4th over of the innings. This is the challenging 50-50 over. Very successful bowler. Siddesh has picked up that important wicket. Siddesh Ramani is a very popular cricketer, born in Goa, has played plenty of matches under 19, under 17. He has represented many corporate cricket tournaments also. He has played for GSB prestigious teams, and he is doing excellent job. One of the popular cricketer who has established a milestone in the history of GSB cricket. Siddesh Ramani is continuing the bowling now from the Palava Stadium edge. So from the pavilion edge, it's going to be Siddesh Ramani now to bowl the next ball. Pulled away nicely onto the onside. There is a fielder. Will they get 2 runs? They are looking for the second. Bit of misunderstanding there.
mix up between the two batters. Fortunately, no damage has happened for the Dombivli Durkes team. The batsman was actually looking for the second run, but the North striker was not at all ready, was trying to send him back. So they just got a single here. Now Abhishek on striker. Abhishek, the set batsman, will take the strike now. He's batting on 14 runs after facing 3 balls with the help of 2 big sixers. 3 runs have come so far in this over. At least 10 runs they will have to score now to get the bonus runs in this over. Well, that's a very good delivery there, pitching right in the block hole, and the batter Abhishek played it defensively forward, giving full respect to that delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there, and the ball went straight to the fielder who was standing just beside the wicket keeper. Ball is in the air and Abhishek but is out. Dombivli Durkes have lost a big wicket here and they are in trouble now. Abhishek Bhatt was playing brilliantly. Unfortunately, he has given a simple catch to the fielder who was standing at silly mid-off, and he will have to move back to the pavilion now. So you are watching the match between Thane Titans versus Dombivli Durkes. Thane Titans, after batting first, they had scored 59 runs for the loss of 4 wickets. So 60 was the target given to Dombivli Durkes team, and chasing a target of 60 runs. Now they have lost 6 wickets. Only 4 more wickets are in their hands. They can't afford to lose any more wickets. What is the score? 23 कितना हो गया? 12 balls. 12 balls to go. 23 more runs required. Runs on the scoreboard is 37 for the loss of 6 wickets. That means Dombivli Durkes require 23 runs in 12 balls. Vishwajit Kamath will be the newcomer. 23 runs required. Vinayak Pai, the left-hander, is on strike. Nandan is a new bowler who has been brought into attack. That's a bad start for this over. He starts off with the wide delivery. Nandan will have to improvise his bowling now, because each runs are very, very important. Not only the runs are added, but also they should bowl one more extra delivery here. So bowler must give more and more priority for the direct and accurate bowling here. Short of the delivery, pulled away nicely onto the onside. So 2 runs have been declared. पुराना नया दे दो, घस के खेल लेंगे. नया दे दो, घस लेंगे यार. थोड़ा घस लेंगे ना. After this match, yet another interesting match will be played between Navi Mumbai Eagles versus King Circle Knight Riders. King Circle Knight Riders, after winning the toss, they have decided to bowl first. I request the players of both teams to get ready for the next match.
King Circle Knight Riders had defeated Shivaji Park Tigers in their first round match, and they've got 2 points in their points table. Meanwhile, Nandan, the bowler, continues. Second ball of the over. To the left-hander. Ball is not coming onto the bat. So no runs resulted. Dot delivery there by Nandan. Good improvisation by the bowler here. Good comeback. And this is the kind of bowling we need in the limited overs matches to put the pressure on the batters here. Every dot ball will put pressure on the batsman now. 10 balls to go, 20 runs required. Short of length delivery once again. Ball is in the hands here. Ball has gone to the declared region. 2 runs will be added to the total. Two more runs have been added to the total, which takes their full score to 42 now. 9 balls remaining, 18 runs required for Dombivli Durkes to win this match. Nandan, here he goes. There could be a chance of run out, but the throw was not quite good enough. They're looking for the second. They come back for the second, and I think he's out. Unnecessarily, Dombivli Durkes have lost their wicket in the form of run out here. They were looking for the second run. Good piece of fielding by the fielder. He was very quick. He quickly realized that the batsman is short of his ground, so throw the ball to the wicket-keeper's end, and batsman was short of his ground. Wicket-keeper made no mistake in taking off the bails. Dombivli Durkes have lost their one more wicket here at the score of at the score of 43 runs. They lost their 7th wicket now. So Vinayak is out. To replace him, the new batsman now joining is Prasad. Prasad Shanbag will take the strike, taking guard from umpire, and he is now ready to face Nandan Prabhu. So far, Nandan Prabhu has given away 6 runs in 4 balls. 2 more balls to go of this over. We are in the 5th over of the innings. It's a 6 overs match. Well, batsman goes for a big one. Ball has slipped away from the hands of the fielder, and they have completed the second run also. Seven balls to go, 15 runs required for Dombivli Durkes. Just one big hit can change the whole complexion of the game now. Well, he attempted to go for a big hit, but he found complete failure in playing that one. The ball has gone straight in the throats of the fielder who was standing at long off. So batsman is out. Wicket number 8 has fallen down for Dombivli Durkes. They are losing their wickets in the regular intervals. Wickets are falling like pack of cards. 45 for the loss of 8 wickets now. Last over to go, 15 runs required. Dombivli Durkes are short of 15 runs. Final over to go now. Let's see who is going to bowl the last over of the innings. This is a very important match for both these two teams to get 2 points in their points table, because both the teams had lost their first match yesterday. So 15 runs have to be scored in the last over. Dombivli Durkes, if they want to win this match, they need a big hit now. As I mentioned earlier, just 1 or 2 big hits can change the whole complexion of the game.
8 wickets have already fallen down. Only two more wickets are in hand. Only the tail enders are remaining now for Dombivli Durkes, but anything may happen here because cricket is called a game of uncertainty. Avirat and Vishwajit are the two new batters in the middle. That's a bad start for this over. The bowler. Huh? Sorry, it is a dot ball. 5 balls to go now. Ball takes the leading edge of the bat and wicketkeeper made no mistake. Siddesh takes that catch. Wicket number 9 has gone down for Dombivli Durkes. They are really losing their hopes now, and the match is now slipping away from the hands of Dombivli Durkes here. So last pair is in the middle. Four balls to go, 15 runs required. Thane Titans are in driver's seat. Meanwhile, wide has been signaled. So the equation is now 14 runs of 4 balls. So that's the end of the match. Dombivli Durkes have lost all the wickets here at the score of 46 runs, and Thane Titans have won this match, and they've got 2 points in their points table. What an amazing victory for Thane Titans. They have won this match by 13 runs. So congratulations to Thane Titans for opening their accounts in the points table. And Dombivli Durkes have lost both the matches which they have played in this tournament.
Fielding team, please send your 12th man to the commentators box. So plays the call. Here we go. Venkatesh Prabhu, the opener bowler, is all set to bowl the first over of the next match. That's a bad start for this over. He starts off with a wide delivery. Pundalik Pai and Srinivas Pai are the two openers for team Navi Mumbai Eagles. So two dashing openers are in the middle. Pundalik Pai is known for his hard-hitting skills. So Pundalik gets a single. He is off the mark. He opened his account. Srinivas will take the strike now. So 7th match of this IGCL 2024 is going on here. That's a very fine delivery there. That ball kept very low, surprising the batter Srinivas. Srinivas Pai doesn't know much about delivery, doesn't have any clue about that ball. Misses it completely. No runs resulted. Dot delivery there by Venkatesh. Ball is in the hands of the bowler Venkatesh now. Very experienced bowler Venkatesh. Has got the ability of picking big wickets. The meantime, we watch Venkatesh for the third time in this over. From the Palava Stadium bench. That was a quicker delivery there, and I think the batsman Srinivas Pai will have to move back to the pavilion. Brilliant piece of wicket keeping there by the wicket keeper. He quickly realized that the Srinivas Pai is out of the crease, and he made no mistake in taking off the bails. So Srinivas Pai departs without making any score. A big blow for Navi Mumbai Eagles in the very first over of their innings. Shivanand is the newcomer now to replace Srinivas. Srinivas has gone for duck. Lots of hope from him, but unfortunately is out without making any score. Now Archit will have to take the responsibility of this game on his shoulder. Archit and Pundalik will have to play with cool mind. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact. They need a partnership now because they lost their first wicket early in their innings. Very successful bowler Venkatesh once again bowls to Srinivas. Four dot balls so far in this first over. Can you imagine that? What a remarkable bowling performance he has been showing here. Venkatesh Prabhu is bowling exceptionally well, trying to put the pressure on the opposition side. We come back to Venkatesh Prabhu now. Goes away from us. Bows this one to Archit. Archit goes for a big one, but ball is in the air and Dattesh Prabhu made a mistake. That was a simple catch to him, but he has dropped it, and this is a big reprieve for the batter Archit. Venkatesh Prabhu is not happy with that. Very disappointed. This could have been the second wicket for him.
So very good over has come to an end there by the bowler Venkatesh. So Venkatesh is not happy with what Datesh has done there. That was a very easy catch in fact, but I would say kind of laziness by the fielder, not a good presence of mind. So first over completed. At the end of first over, Navi Mumbai Eagles are 3 with 1 wicket down. The man out is Srinivas Pai. Venkatesh Pai is batting on, Pundalik Pai is batting on 1, and Archit Shivananda is also batting on 1. Now Krishna has been brought into attack to bowl the second over of the innings. Krishna will be bowling to Shivanand. Straight down the ground he played. There is a fielder. Long off fielder Chirag Shanbak comes across and collects the ball. He was very quick, but before the throw reaches the bowler's edge, the batsman Archit has made his ground comfortably here. Single has been taken. One more run has been added to the total of Navi Mumbai Eagles, which takes their full score to 3 on the board, and that single will bring one of the hard hitter of the ball, Pundalik Pai, on strike. Turned away nicely onto the onside, but there is a protection. Good piece of fielding there by the fielder who was standing in the between the long on and mid wicket region. So Pundalik will have to satisfy with just a single. Score slowly moves on to 5 now. We are in the second over of the innings. Archit goes for a big one, and he was able to dispatch that in a style. So Shivanand has given complete punishment for the bowler Krishna, charging the bowler on that occasion. He has scored 6 valuable runs. So with those 6 runs, Shivanand's individual score now moves on to 8, and total score at the moment is 1-1. 11 with 1 wicket downs. Navi Mumbai Eagles is playing against King Circle Knight Riders. King Circle Knight Riders had defeated Shivaji Park Tigers in an exciting match yesterday. Navi Mumbai's Eagles had lost their first match against DB Strikers. So this is a must-win situation game for Navi Mumbai Eagles. Navi Mumbai Eagles has got a good batting lineup, but only disappointment thing is they lost the first wicket of Srinivas Pai. Now these two batsmen will have to play brilliantly in order to accelerate their score. Things are slowly down for Navi Mumbai Eagles. Not a good start for the team. They had lost a very important wicket in the very first over. Now Archit and Pundalik are trying to rotate the strike. Pundalik goes for a big one. Ball is in the air and Chirag is there. Chirag will not miss these kinds of opportunities. Finally, he was able to take that catch.
So the dangerous batsman Pundalik Pai is moving back to the pavilion. So to replace Pundalik, the newcomer now joining will be Vignesh Bhatt. Vignesh Bhatt Koteshwara is the key player, one of the proudest player of Navi Mumbai Eagles, leading from the front. Very popular cricketer. Buggy is his nickname, and he has got the man of the match, a man of the series award in the recent GPL tournament. He had got an attractive bike. Very good effort there by the bowler, but no damage done there. One more good over has come to an end. Over number 2 completed. Navi Mumbai Eagles are 13 for 2. Venkatesh Prabhu has been brought back into attack. This is the second over of his coacher. In the first over, Venkatesh Prabhu had conceded only 3 runs, and he was able to pick one important wicket also. Outside the off-stump delivery, batsman Archit was thinking that it is too far from the off-stump. The pace defrauds the batsman and directly into the wicket-keeper's baggage. No runs resulted. Dot delivery there by Venkatesh. 2 dot balls so far for Venkatesh in this over. Now Vignesh is giving some kind of suggestion to the batter who is in the crease. Shivanand. Archit will have to look for big hits now in order to exert their score. The meantime, watch Venkatesh once again, similar delivery and similar result here. Consecutive 3 dot balls so far. Score still remains on 13 for the loss of 2 wickets. Navi Mumbai Eagles, after putting into bat first, they had lost the first wicket of Srinivas Pai in the first over of the innings, and after that they lost the wicket of Pundalik Pai as well. So Archit and Vignesh Bhatt are in the middle. Archit is batting on 9 runs after facing 7 balls with the help of 1 sixer. Two more balls to go of this over now. For the 5th time, Venkatesh with a long run up. Goes away from us. Passes the umpire. And this one clearly going down the leg side. And that should be wide. No problem for umpire whatsoever in stretching his arms and giving a wide signal. With the help of that extra run, score now slowly moves on to 14 for the loss of 2 wickets after 2.4 overs. 2 balls remaining in this over. Archit goes for a big one, and that ball has gone
for a huge 6. Played the shot into the deep mid-wicket region for a huge 6. Score jumps up to 20 on the board. Last ball to go of this third over now. Archit is batting on 15 after facing 10 balls. 2 sixes for him. Pulled away nicely onto the onside, hammered the ball to the long on, but good piece of fielding there by the fielder who was standing almost very close to the boundary ropes, and he has saved 3 runs for his team. Otherwise the ball could have gone to the boundary ropes. Good piece of fielding, single in the last ball of the over to keep it in the strike. End of the over number 3. 3 overs gone, 21 for the loss of 2 wickets. So Ganesh Naik Kota will bowl the next over. That will be the 4th over of the innings, with a short run up to Archit. That's an intelligent bowling there by Ganesh Naik. Archit missed it completely. No runs resulted. Score remains on 21 after 3.1 over. We come back to Ganesh. Oh, it's clean ball. That's almost an Yorker length delivery. Batsman Archit had no clue about that ball. Have a look at the replay in the television screen. Fantastic, perfect delivery there by Ganesh Naik Kota. Ball uprooting the middle stump. So Archit is out. Archit played brilliantly. 16 runs for him. He has contributed 16 runs after facing 13 balls. 2 sixes in his innings. And now Navi Mumbai Eagles have lost their 3rd wicket of Archit. Score is 21 after 3.2 overs. Ramesh Pai is a new man in. We'll have to wait and see how many more runs they will be able to score in the remaining overs. Vignesh is still there, but yet to open his account. But there will be a challenging 50-50 over, which can change the whole complexion of the game. Because as long as Vignesh is there in that over, definitely that's a plus point for Navi Mumbai Eagles. Crashed away nicely to the covers. Tremendous shot over the extra cover. Lovely cover drive. Handsome looking cover drive there by the batter Ramesh Pai. And Ramesh Pai straight away off the mark. He opened his account. And after a long time, now Vignesh has come to the crease. Vignesh is on strike now. Wanted to pull the ball onto the onside, but once again ball is not coming onto the bat properly. There is no proper connection between the bat and ball. Ball takes the leading edge of the bat, and Vignesh will have to satisfy with just a single here. Ganesh is making some change in the field placement here for Ramesh Pai. Ball was going down the leg side, and Ramesh Pai wanted to pull the ball to the fine leg region, but missed it out. No runs resulted.
Well, the ball is in the air once again. Karthik is there. Karthik has taken that catch. And Ramesh Pai will have to move back to the pavilion. Wicket number 4 has gone down for Navi Mumbai Eagles at the score of 2-2. So fifth over is going to be a challenging over. Challenging 50-50 over now. Sir bowler. 10 runs. The batting side has aimed to score. Vignesh is on strike. Vignesh goes for a big one, and he was able to send the ball over the deep square region for a huge 6. With that sixer, Vignesh is off the mark. He opened his account. Once again the ball is in the air, and this time straight to the commentator's box. Second sixer from the bat of Vignesh. What a terrific shot it was. "12 runs have come in just 2 balls. Can you believe this? So Vignesh was just waiting for that. सिद्धेश रमानी. So the batting team Navi Mumbai Eagles were aiming to score 10 runs in that challenging 50-50 over. Already 12 runs have come for the over for the team. So 5 bonus run they will be getting. No ball has been signaled, and there will be a free hit now. So Bhuvan Bhatt will take the strike. Siddesh Naik will be bowling to the newcomer Bhuvan Bhatt, a young man having lot of future. Bhuvan Bhatt, who is since the previous one was a free hit ball, there is no damage for Bhuvan Bhatt. Bhuvan gets a single. He has done the right job here. He has given the strike to Vignesh by taking up a single, because Vignesh is in an aggressive mood. He is on fire. Very, very dangerous batsman Vignesh. Well, the ball takes the edge of the bat. Ganesh Naik made no mistake. So that's the end of the innings of Vignesh.
A fine innings from Vignesh has come to an end. He played brilliantly. Sohan played the shot all around the carpet, straight down the ground. He played before the ball hits the stumps. He was inside the crease, so Sohan has opened his account. 5 और 44. So 5 overs gone. After 5 overs, score is 44. Navi Mumbai Eagles are having a run rate of exactly 8.8 per over. Last over to go now. Let's see how many more runs will come in this final over of the match. Sir, bowler name? Sir. Lakshmi Shah will be the bowler. Double 4 on the scoreboard. Lakshmish Baliga, Malinga is his nickname. He's all set to bowl the final over of the innings now with a short run up. Passes umpire. That's a clever bowling there by Lakshmi Shah. Batsman misses the ball completely. There is no connection with the bat and ball. And wicketkeeper collects the ball behind the stumps. So no runs resulted. First ball is a dot delivery there by Lakshmish. Gently pushes the ball to the offside. There could be a chance of run out. Misunderstanding between the two batters. And they have lost the wicket unnecessarily here in the form of run out. Wicket number 6 has fallen down. Bhuvan Bhatt will have to move back to the pavilion here.
So 4 balls are remaining in their innings now. Sohan is on strike. Vignesh Bhatt is the new man who is at the non-striker's range. Lakshmi Shah now for the 3rd time in this over. That was a very fine delivery there by the bowler Lakshmi Shah. The ball takes the leading edge of the bat and wicketkeeper takes that catch. Sohan is out. Match number Match number 5, Thane Titans 6. Match number 6. Match number 6, Thane Titans versus Dombivli Dorcas. Man of the match, Siddesh Ramani. Sid. Krishna Shenvi comes to the crease and he was able to send the ball over the long on fence for a huge 6 runs. Valuable runs will be added to the total of Navi Mumbai Eagles. Sorry. It's a boundary. So that brings up 50 for team on Navi Mumbai Eagles. Last delivery of the final over of the innings now. Congratulations Siddesh Ramani for getting the man of the match award. Dhanyavad Shene ma'am. So 3 runs have been scored in the last ball of the over. That's the end of the Navi Mumbai Eagles innings. So after putting into bat first, Navi Mumbai Eagles have scored So Navi Mumbai Eagles have scored 53 runs. So target is 54. Hajimagiri जाऊची match DB Strikers versus शिवाजी पार्क टायगर्स. दोन्ही टीमाच्या कॅप्टन्साक टॉसा खातीर हांग आपयतर आसा. Requesting captains of DB Strikers and Shivaji Park Tigers to please come at the trophy section. Tosa Katira.
किंग सर्कल नाइट रायडर्साचे चेज स्टार्ट जातस ओपनर जावन विनायक आणि चिराग शानबाग. नवी मुंबई ईगल्स तर्फेन फर्स्ट ओव्हराचे फर्स्ट बॉलान तो सोहनाने एक विकेट घेतलीस विनायकाला विकेट प्राप्त करून विदाउट मेकिंग एनी स्कोर विनायक बैक टू द पेविलियन. सो सोहनाक एक लायक एक सफलता मेळ्ळा फर्स्ट बॉलान तुची. $54 रन्साचे टार्गेट चेस करपाक नवी मुंबई ईगल्स टीमाच्यान. सर बैट्समैन नेम नवे बॅटर जावन कार्तिक प्रभू क्रीस आयला अंपायराला गार्ड घेवन सोहनाला सेकंड बॉल फेस करूक रेडी जाला. वापस सेकंड बॉलान तो अनेक एक हॉट विकेट पडलेला चिराग शानबाग रन आउट जाला and this is going to be a big blow for team King Circle Knight Riders. Next match toss jallela sir. DB Strikers have won the toss and elected to bowl first. Team sheet. Thank you Mandy. So दोन बॉलान तो बॅक टू बॅक दोन विकेट लॉस्ट जाला हांगा किंग सर्कल नाइट रायडर्स टीमाक. श्री कृष्णा बैटिंग आयला 54 टार्गेट. तिन्नी बॉल गलुक सोहन वेल फ्लाइटेड डिलीवरी बैट्समैन कृष्णा बीट जालो बॉल सीधा विकेट कीपर हत्ता गेला. विघ्नेश भट्ट विकेट कीपर जाऊन काम करतस. 3 बॉल जाला आणि काही अकाउंट ओपन जायनी. फ्लिक के लॉन साइडान तो जस्ट ग्लॅन्स करून 1 रन काणो किंग सर्कल नाइट रायडर्साच्या अकाउंट ओपन जालेला. सो कृष्णाक मेळ्ळा 1 रन. विनायक पै चिराग शानबाग दोग जण आउट जावन बैक टू द पेविलियन. आता कार्तिक प्रभू आणि श्रीकृष्णा क्रीसा मध्ये इनिंग्स बिल्ड करचे प्रयत्न करत असती. एक रन डिक्लेअर झाला. सो 1 रन ऍड जाऊन ओट्टू स्कोर बोर्डान तो 2 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 54 इज द टार्गेट, 2 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. तशींची एक अनाउन्समेंट कोणी खंय वच्चानच 2 मिनिटान हुन मॅगी रेडी जातरस काय 2 मिनिट मात्र मागीर पुरा जणांना हुन मॅगी एन्जॉय करेत. बट पाम ओवर टू यू. सो 2 रनाक 2 विकेट लॉस्ट जावन किंग सर्कल नाइट रायडर्स एक संकष्टकर स्थितींत आसा म्हूण म्हणयात.
54 रन्साचे टार्गेट मेळ्ळेले किंग सर्कल नाइट रायडर्साक तांगेल्या टिमाचे बॅकबोन चिराग शानबर्ग हॅज गॉन फॉर डक ते एक हॉट डिसअपॉइंटमेंट म्हणून येता तांगेल्या टिमाक आता कार्तिक प्रभू आणि श्रीकृष्णान एक पार्टनरशिप गेम दाखोवपाक जाता खंडीत जावन विकेट लॉस्ट जावची नज ह्या दोग जन बॅटर्सान लायक कोण केली म्हळ्यार तांणी कमबॅक करूं येत बॉलर वापस रेडी जाला क्रीसारी वेट करतस कार्तिक प्रभू लेग स्टंप देखून भायर गेला बॉल अंपायरान वाईड म्हणून डिक्लेअर केला एक एक्स्ट्रा रन ऍड जावन स्कोर बोर्डान तो स्कोर जाल्ले 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स सोहन कामताले फर्स्ट ओव्हराचे लास्ट बॉल फेस करता कार्तिक लायक बॉल मस्त स्पीडार येईल बॉल बॅट्समॅन कार्तिक प्रभून ऑन साइड मारचे प्रयत्न केलेला बट बॉल बॅट मेळ्ळी डॉट बॉल जाला ओव्हर नंबर 1 कंप्लीटेड आफ्टर फर्स्ट ओव्हर कंप्लीशन स्कोर इज 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स अजिनंतर नेक्स्ट मॅच शिवाजी पार्क टायगर्स वर्सेस डीबी स्ट्रायकर्स शिवाजी पार्क टायगर्स तांगेल फर्स्ट मॅच त्यांनी लॉस्ट जालेले किंग सर्कल नाइट रायडर्स हैदराक तशें जावन त्या एक मॅच मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसता शिवाजी पार्क टायगर्साक दोन टिमांचे प्लेयर्स रेडी जावन आसुका शिवाजी पार्क टायगर्स विल बी प्लेइंग अगेन्स्ट डीबी स्ट्रायकर्स इन द नेक्स्ट मॅच ऑफ दिस टूर्नामेंट सेकंड ओवर गलूक सात्विक बाळिगाक इंट्रोड्यूस केला नवी मुंबई ईगल्स टीमाच्यान लायक एक बॉलर सात्विक बाळिगा रिसेंटली मंगळूर जाल्ल्या जीपीएल टूर्नामेंटांत वळलंके फायटर्स मुल्केंत खेळला एक ट्रम्प कार्ड बॉलर सात्विक बाळिगा तागेल टीम ते एक टूर्नामेंट विन जावन चॅम्पियन जालेले आता तो बॉलिंग घालतस अदी मध्ये बॉल ग्राउंड देखून भायर गेला नो बॉल +2 नो बॉल म्हणून स्क्वॅड अंपायरान डिक्लेअर केला no ball +2 so totally 3 runs will be added to the total of team Navi Mumbai Eagles and their score is now 6 with 2 wickets down. The first man out was Vinayak 5 for 0 and after that they lost a wicket of Chirag Shanbag in the form of run out. Chirag was also out for duck. सात्विक बाळिगान घाल्लेलो फर्स्ट बॉल नो बॉल जाला तशें जावन फर्स्ट त्या एक बॉलान 3 रन आयलस सुरवे बॉल घालतस सात्विक ह्या फाटी लायक एक कमबॅक म्हणून येता straight to the fielder आदेश भट फिल्डरान बॉल कलेक्ट केला खंयचे रनी येनी डॉट बॉल जाला वापस एक दोन्ही कॉन्सेक्युटिव्ह डॉट बॉल्स 3 रन आयला ह्या एक ओव्हरांत
यापटी मारला बॉल सीधा डगवता वैर दखून सरण श्रीकृष्णाल बॅटन येईल फर्स्ट सिक्सर with the 6 valuable runs. Scorecard of King Circle Knight Riders now jumps up to 12. After 1.3 overs, 12 runs for the loss of 2 wickets, 42 more runs required in the remaining 27 balls. Opa straight to the fielder. Adesh but collects the ball. Kanchi Ranniyeni dot ball jalla. Ball Satvik tantu. Aji madhye wicket keeper Vignesh Satvika guide करतस कशी बॅट्समॅनाक बॉलिंग घालका कशी बांधून घालका म्हणून टिप्स दितस पळोवया खंयची नमुने स्ट्रॅटेजी हांगा सात्विक अडॉप्ट करता म्हणून. Next match on to DB Strikers will be playing against Shivaji Park Tigers. That will be the second round match. Satvik. Ball warriors Vignesh is after the ball and Vignesh can catch Darla. So Shri Krishna departs. Wicket number 3 has gone down for team Navi Mumbai Eagles. I beg your pardon for King Circle Knight Riders, and they are in trouble now. Like एक विकेट काढलेला संघ सात्विकानं पार्टनरशिप येतशिल्ल्या दोन बॅट्समॅनांमध्ये कार्तिक आणि श्रीकृष्णाल मध्ये लायक एक भागीदारी येतशिल्ल्या त्या ब्रेक केला हांगा सात्विकानं श्रीकृष्णानं 6 बॉल फेस करून 9 रन काढलेले. So now it is 12 for the loss of for the loss of 3 wickets. Ganesh Naik कोट आयला क्रीसाक. क्रीसर वेट करतस गणेश नायक नेक्स्ट बॉल फेस करूक सात्विकाला. Outside the off stump delivery completely beats Jallo Ganesh Naik. So no connection with the bat and ball. Good over from Satvik Murmadiyat. एम ओवर अंतु 9 रन आयले बट एक इम्पॉर्टंट विकेट काढला हांगा सात्विकानं लायक एक ब्रेक थ्रू दिला. सो second over completed after 2 overs. King Circle Knight Riders are 12 for the loss of 3 wickets. That means another 42 runs required in the remaining 24 balls. 4 over अंतु 42 runs required. एक ह्यूज डिस्कशन जत संघा नवी मुंबई ईगल्स टीमांच प्लेयर्स मध्ये एक मस्ट विन गेम म्हणून येतं. फर्स्ट मॅच लॉस्ट जालेले. सो हे एक मॅच खंडीत जावन विन जावन 2 पॉइंट्स घेवका म्हणाले एक इरादे हांगा प्लेयर्स आले नवी मुंबई ईगल्साचे. नवी मुंबई ईगल्सा तर्फेन अर्चितानं 16 रन केलेले. तशींची टॉप स्कोरर जावन आशिल्लो. त्यानंतर विघ्नेश भट्टानं 2 6 मारून 14 रन केले. तशें जावन ಒಟ್ಟು 53 रन्स 6 ओवरांत कोरून 54चे एक टार्गेट दिलेले. अकरी प्लाय जावन King Circle Knight Riders have scored 12 runs in 2 overs after losing 3 wickets. Now Adesh Bhatt has been brought into attack. रन आउट जो चान्सेस आशिल्ले
मस्त रिस्की रन बॅट्समॅन बीट जाल्लो तशीच विकेट किपर बीट जाल्लो बट विकेट किपरान रन आउट करचे चान्स आशिल्ले प्रयत्न केले बट डायरेक्ट हिट जानी खंडीत डायरेक्ट हिट जाल्यार जाल्यार गणेश नायक आउट जात आशिल्लो लकीली ही सर्वाइव्स सो नो डॅमेज डन एक सिंगल मेळ्ळा स्कोर मूव्स ऑन टू 13 गणेशान बाहेर पेटोवचे प्रयत्न केला बॉल वाऱ्यार आसा बट स्ट्रेट टू द फिल्डर very good catch taken there in the deep fine leg deep square leg region fielder and कंचे चूक करनी श्रीनिवास पैन लायक कोण जर्ज कोरनो catch धरला so Ganesh Nayak Kota has also gone for duck wicket number 3 has fallen down for King Circle Knight Riders and they are in big trouble now. चार विकेट पडलेले आसा सर बैट्समैन नेम नवी बैटर जावन सिद्धेश नायक क्रीज आयला सक्सेसफुल बॉलर आदेश भट कंटिन्यू करतस फॉर द थर्ड टाइम ह्या फाटी सिद्धेश नायकान हॉर्ड शॉट मारचे प्रयत्न केले बट वापस विकेट फिल्डर हाता गेला भुवन बट टेक्स दैट कैच बैक टू बैक 2 विकेट्स फॉर आदेश भट या एक ओवर खंडित प्रोडक्टिव ओवर जावचे पूरा साध्यते दोन्ही कॉन्सिक्युटिव्ह विकेट्स मेळ्ळा हांगा आदेश भटाक एंड ही इज ऑन हॅट्रिक नाव ह्या टुर्नामेंटाच्या फर्स्ट मॅचान तो डॉक्टर विनोद नायकान हॅट्रिक विकेट घेतली आता आदेश भट्टाक एक लायक चान्स मेळ्ळा लेट्स सी वेदर आदेश भट विल बी द सेकंड हॅट्रिक विकेट टेकर प्रज्वल कामत क्रीज आयला नवे बैटर जावन नॉन स्ट्राइकर जावन कार्तिक आदेश इज ऑन हैट्रिक हैट्रिक मिस जाला हांगा आदेश भट्टाक प्रज्वलान 1 रन काडून कार्तिकाक स्ट्राइक दिला ऑलरेडी 5 विकेट पडलेला सांगा किंग सर्कल नाइट राइडर्साक 14 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड कट केले कार्तिकान गल्ली रिजनांत आशिल्ले फिल्डर अर्चितान येवन बॉल फिल्डिंग केला बट ताणें फील्ड करून बॉल विकेट कीपर रिटर्न करचे फुडें दोन बॅटर्स मस्त फास्ट जावन 1 रन काडला प्रज्वल राइट टाइम क्रीज आयन पविलस सो कार्तिका मेळ्ळे 1 रन लेग बिफोर द विकेटा खातीर एक हॉर्ड एक अपील केले पुरा प्लेयर्सान बट खंयचे पुरस्कार मेळतना अंपायर नॉट आउट म्हणून मेळ्ळा सो नो डॅमेज डन वेरी गुड ओवर फ्रॉम द बॉलर आदेश भट
या एक ओव्हर ಅಂತ ಆದೇಶ್ ಭಟ್ಟನ ಖಾಲಿ 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಸೈಡ್ ಸೋನ್ ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್ दोन इंपॉर्टेंट विकेट ಕಳ್ಳ ಆದೇಶ್ ಭಟ್ಟನ ಸೊ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 completed 15 for the loss of 5 wickets King Circle Knight Riders. "39 more runs required in 3 overs." हॉड एक टार्गेट अंगा 18 बॉल्स अंतू 39 रन्स खर्च म्हणाले तिथल्या सुलभ नाही इथे म्हणे नवी मुंबई ईगल्स अंतू आणि काही लायक बॉलर्स असती 50-50 ओव्हर चॅलेंजिंग ओव्हर अंगा घेतला बॅटिंग टीमानं दारन एम करते असती या ओव्हर अंतू मस्त हाईट राहील बॉल कार्तिकानं अंपायर लगी नो बॉल वे म्हणून निमगिले बट इट्स ए फेयर डिलिव्हरी इज क्लीन बॉल अर्चितन गेला बॉल बॅट्समॅन कार्तिक कंप्लीटली मिस झालो खंयचे क्लू नाशिल्ले बॉल सीधा वचून ऑफ स्टंप लागला सो कार्तिक इज आउट and 6th wicket has gone down at the score of 15 runs for King Circle Knight Riders. King Circle Knight Riders are losing their wickets in the regular intervals and they are in deep trouble now. Chris Ail now batsman Dattesh Prabhu Dattesh and Ail first ball अंतूची ball सीधा बाहेर पेटायला and Dattesh is known for these kinds of hits. तबलची मॅच अंतू 2 जबरदस्त सिक्स मारला दत्तेश प्रभूनं लास्ट ओव्हर अंतू मॅच विन करून तेगेले मॅचाचे हिरो जावन आयलो मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड घेतिले वापस तसले एक शॉट बट ह्या पटी 1 बाउंस ओव्हर द बॉल रॉक्स फर्स्ट बॉल 6 रन काडले नेक्स्ट बॉल अंतू 4 रन सो ಒಟ್ಟು 10 runs have come ऑलरेडी दारन या ओव्हर ಅಂತ इलस चॅलेंजिंग 50-50 ओव्हर्स अंतू दारन करता म्हणून त्यांनी एम केलेला सो 10 रन्स आयला 5 बोनस पॉइंट्स विल बी गिवन टू द बॅटिंग साइड सो दत्तेश इज ऑन फायर नाउ फुल टॉस कन्वर्ट केले बट या पटी प्रोटेक्शन अस सो 1 रन मात्र मेळ्ळा Datteshak. So Dattesh is in an aggressive mood now, dominating right from the word go. Architan bowling and improvisation दाखव का जाता या पटी प्रज्वलान चूक केला ते फील्डर आशिल्लो जाल्यार फील्डर आशिल्लो जाग्यार मारला आदेश भट्टाक एक सिंपल कॅच मेळ्ळा सो प्रज्वल इज आउट विकेट नंबर 7 हैज गॉन डाउन
4 overs gone, 31 runs on the scoreboard. Now 23 runs required in 12 balls. दत्तेश है ना स्ट्राइक पे? 23 runs required in 2 overs. Sohan to Dattesh. First ball is a dot ball there by Sohan. Dattesh wanted to hammer the ball onto the onside but misses it completely. No runs taken, no addition to the total. Score remains on 31. The meantime, watch Sohan for the second time in this over. To Dattesh. Dattesh hammered the ball to the onside and it has gone over the roof of the pavilion for a huge 6. Second sixer from the bat of Dattesh. With those 6 valuable runs, the scorecard of King Circle Knight Riders now jumps up to 37 for the loss of 7 wickets. The equation is now 10 balls to go, 17 runs required. 17 more runs required in 10 balls for team King Circle Knight Riders. Dattesh, this man is showing all his caliber here. Wide ball. The bowler Sohan is under pressure now because the previous one was completely furnished by Dattesh. Dattesh is dominating right from the word go. He's batting on 17 runs after facing 5 balls with the help of 1 boundary and 2 sixes, and he's in a terrific form here. This time the ball is in the air, there is a fielder, will it be taken, and he's out. So Dattesh is out, and I think this is going to be a very big blow for King Circle Knight Riders. King Circle Knight Riders have lost a wicket of their team, the backbone of their team. Dattesh, the trump card, is moving back to the pavilion. Dattesh played brilliantly. He played an astonishing knock of 17 runs. Once again he wanted to go for a big hit, but this time that was not a fully controlled stroke. There was not much of power behind that shot. Hence Dattesh is out. So this is a big disappointment for team King Circle Knight Riders. The equation is now 16 runs of 9 balls. Well, they lost a wicket. Venkatesh Prabhu is run out. Nine wickets down for King Circle Knight Riders. Score is 39 after 4.4 overs. 8 balls to go, 15 runs required. Last wicket is in hand and Lakshmish Baliga will be the last man in. This was a very important game for the team Navi Mumbai Eagles because they had lost their first match yesterday in the very first match, and everything is good going for the team. They are in a driver's seat. Only 1 wicket what they have to look for now. Just 1 wicket will give them a victory here in this match. Lakshmish gets a single. Score moves on to 40. Last ball to go of this over. 7 balls to go. 14 runs required.
So dot ball to end the over. So last एक ओवर बाकीस लास्ट ओवर अंत 14 रन जाऊका किंग सर्कल नाइट राइडर्स टीमाक match has already slipped away from the hands of King Circle Knight Riders here. They had defeated one of the hot favorite team Shivaji Park Tigers in the very first match, and now they are playing against Navi Mumbai Eagles. Navi Mumbai Eagles is in a very good position here. They are in a driver's seat. Everything is good going for the team. They are just will have to look for one last wicket, and I think Vignesh Bhatt is going to bowl the final over of the innings. 14 runs required for King Circle Knight Riders. Vignesh is an all-rounder player. He excels not only in the batting but also in the bowling department, and is a brilliant wicket keeper too. And he will bowl the final over. He is a left-handed batter, whereas left-arm medium pace bowler. So first ball is a dot delivery. Pundalik Pai is doing his job as the wicket keeper now, because Vignesh is bowling. So far Vignesh was doing the wicket keeper's job. Now he has taken the responsibility of to bowl the final over. The meantime which Vignesh for the second time in this over to Lakshmi Shah. Lakshmi Shah goes for a big one. There is a fielder underneath it, and the ball has gone directly into the crowd for a sixer. Score moves on to 46. 4 balls remaining. 8 runs required. For in the remaining 4 balls for King Circle Knight Riders. Now one more big hit will change the whole complexion of the game. 8 runs required. 4 balls remaining. This is a very good delivery there by Vignesh. Bit of variation. He's trying to experiment different things here. Now Lakshmi Shah will have to look for one more big hit here. Can he go for a big hit? Can he go for a maximum? This is going to be very interesting now. Once again similar delivery and similar result here. What a great comeback by Vignesh after that sixer. 2 balls to go, 8 runs required. Just one dot ball will give victory for the team. Dot delivery there by Vignesh. So match is now slipping away from the hands of King Circle Knight Riders. Navi Mumbai's are slowly marching towards the victory. Well, he goes for a big one, and that is gone straight to the dugout. 6 more runs will be added to the total. So King Circle Knight Riders wanted 8 runs in that last ball, and they were able to get a sixer. So they lost this match against Navi Mumbai Eagles by 1 run. What an amazing victory for Navi Mumbai Eagles. This was a must-win game for the team, and Navi Mumbai Eagles are very happy now. Their batters played very well, especially Vignesh and Archit played an astonishing knock which helped them to reach a respectable target, and after that their bowlers have also done excellent job. Their fielders were very smart. With the help of that, Navi Mumbai have won this match, and they have opened points in their points table
and unfortunately Knight Riders, King Circle Knight Riders have lost this game. So that's the story of this match between Navi Mumbai and King Circle. Now at another interesting match will be played between Shivaji Park Tigers versus DB Strikers. We need the 12th man of both the teams in the commentary box. Shivaji Park Tigers, can you send your 12th man to the commentators box? Umpires, please wait. We need the 12th man of Shivaji Park Tigers. Without having the 12th man of Shivaji Park Tigers, we will not be able to start the match. Shivaji Park Tigers, 12th man, please come to the commentators box. Can we have the batsman name, please? Ninad Borkar is at the non-striker side. Daivik Naik is the opener, left-hander. Shivaji Park Tigers, please come to the commentators box, 12th man. Chitranjan is the bowler for DB Strikers. DB Strikers had won their first match yesterday, and now Shivaji Park Tigers had lost their match against King Circle Knight Riders.
So this is a very important match for Shivaji Park Tigers to be there in this contest, to get 2 points in their points table. Shivaji Park Tigers is one of the hot favorite team of this tournament. As we all know, they were the champions of MCL Mumbai Champions League Season 2. They had defeated Shirsi Super Kings. DB Strikers had defeated Navi Mumbai Eagles in the first match. We need the 12th man of Shivaji Park Tigers, please. Well, he's out. The batsman is run out. King Circle Knight Riders, please send your 12th man to the commentators box. Sharad Prabhu has come to the crease now. One of the proudest player of Shivaji Park Tigers, Sharad Prabhu. Down the leg side, wide has been signalled. Ninad Borkar and Sharad Prabhu will have to take the full responsibility of this game on their shoulder. They can't afford to lose any more wickets. They must keep their wicket intact here. Let's see what kind of knock they are going to play here in this match. Very important match for their team. Ninad Borkar missed the line of the ball. So first over completed. 3 runs from that first over. DB Strikers opted to field first here in this match. Now Shivaji Park Tigers have scored 3 runs with 1 wicket down. Daivik Naik was the man out for 1. Ninad Borkar is batting on 1. Sharad Prabhu is yet to open his account and he is on strike now.
That's a bad start for this over. He starts off with the wide delivery. Ball was going down the leg side, and umpire has no hesitation whatsoever in stretching his arm, turning around and giving a wide signal here. Crashed over nicely to the covers. Ball is rushing towards the boundary ropes here. But finally the fielder was able to cut it off. Otherwise the ball could have gone through the boundary ropes. So 2 runs will be added to the total here. Sharath gets 2 runs. That was a lovely cover drive. Handsome looking cover drive. Crashed away nicely in between the pointed covers. And Sharath gets 2 runs and he is off the mark. He opened his account. That was a very risky run. Finally, no damage done here. Shivaji Park Tigers players got 1 more run here in that ball. Single to Sharath. Mahesh will bow to Ninad Borkar now. One of the hard hitter of the ball, Ninad Borkar. Ball is in the air. There is a fielder and very good catch taken in the deep. The mid-wicket fielder made no mistake. So Ninad is out. Wicket number 2 has gone down for team Shivaji Park Tigers. 7 for the loss of 2 wickets in the second over. Kaustubh, the fielder who was standing in the mid-wicket region, caught it beautifully. So dangerous batsman Ninad Borkar is out. 7 for the loss of 2 wickets. Shivaji Park Tigers after putting into bat first. Sunit is a new man in. Sunit pulled away nicely onto the onside. Couple of bounce over the boundary rope for 4 runs. In the very first ball, Sunit picked up a boundary here. So 4 valuable runs will be added to the total of Shivaji Park Tigers. With that boundary, their score now moves on to 11. 1-1 for the loss of 2 wickets. Shivaji Park Tigers after putting into bat first. Sunit Shenoy and Sharath Prabhu are the 2 batters in the middle now. That was a very, very fine delivery there by the bowler. The batsman not getting the line of the ball. On that occasion, wicket-keeper collects the ball neatly. So no runs taken, no addition to the total score. Remains on 11 with 2 wickets down. Last ball of the over. Ball is in the air. There is a fielder. Ball is straight in the throats of the fielder. And Sandeep Kamath, who was standing in the long on, makes no mistake. Caught it beautifully. As a result, the batsman Sunit Shenoy is out.
Sunit Shenoy scored 4 runs in his individual account, and Shivaji Park Tigers have lost their third wicket here at the score of 11 runs. 2 overs completed. They're having a run rate of exactly 5.5 per over. Now Shivam will be the newcomer. Kaustubh will bowl the third over of the innings. He has been brought into attack. He has been introduced here to bowl the third over of the innings. Shivam at the non-striker bench. Sharath Prabhu will take the strike. Lot of responsibility on the shoulder of Sharath Prabhu now. An all-rounder cricketer, very popular player, proudest player of King Circle Knight Riders. Sharath Prabhu was the captain of Vadalanke Fighters Mulki, and his team has crowned the GPL trophy recently in the month of February in Mangalore. Now he has to play a sheet anchor role for his team Shivaji Park Tigers here. Well, umpire's finger goes up. Shivam is out. Prashant Prabhu, the wicketkeeper, takes a simple catch. As a result, Shivam is out and wicket number 4 is down. Score still remains on 12. Over number 3 is in progress. 12 for the loss of 4 wickets. Shivaji Park Tigers is playing against DB Strikers. Pawan Telang will be the newcomer now. So another wicket has gone down here. Pawan Telang is out without making any score. Pawan Telang is moving back to the pavilion. So Sandeep takes a very good catch in the deep, in the long on. As a result, the batsman Pawan Telang is now moving back to the pavilion. You are watching the match between DB Strikers versus Shivaji Park Tigers. DB Strikers, after winning the toss, they had decided to field first, and his captain has made his intention clear in the he decided to field first, and his bowlers have done an excellent job. At the same time, their fielders are also very smart, and Shivaji Park Tigers are very frustrated now because they lost 4 important wickets early in their innings. This is going to be a big frustration for Shivaji Park Tigers. Not a good start. Turned away nicely onto the onside. Vinayak picks up a single, and Sharath Prabhu will take the strike now.
Sharath goes for a big one, and this is the favorite shot of Sharath Prabhu. He is very well known for these kinds of hits. Sharath Prabhu, as I mentioned earlier, excels not only in the batting, he's a very good bowler as well, and is a brilliant wicket keeper. Now Sharath Prabhu will have to play his natural game. Only that will give victory for Shivaji Park Tigers. There could be a chance of run out. We'll have to wait for umpire decision, and I think that's all over for the batsman here. Well, they have gone for a review, so the square leg umpire wants to check with the third umpire in the television screen whether it's out or not. The decision from the square leg umpire was out. It was a run out. He had given a run out, but meanwhile the player of the batsman was thinking that he was inside the crease, so he has gone for a review. So in the television screen, in the display LED screen, you are able to view the exactly what has happened there in the middle. Have a look at the replay. The batsman is still not there in the picture. Still not come. Well, it's a very close one. The ball looks like the bat is on the line, and third umpire says he's out. Very close decision it was. Square leg umpire was very confident that the batsman is out, but still, since the batting side has gone for a review, third umpire finally says the decision from the square leg umpire is the right one. So Sharath is still there, and he has to play his natural game. Only then they will survive here. Let's see how many runs Sharath will be able to score in the remaining innings. Gently pushing the ball to the onside. Will they go for the second run? Will they be able to go for it? He has to be hurry here. Very good running between the wicket. Outstanding, brilliant piece of running between the wicket here. Sharath was very quick in taking that single. First run he taken as very quickly, and after that he was very fast in completing that second run also. So 2 runs for his team. Couple of runs have been added to the total of Shivaji Park Tigers, and now their score now moves on to 21 for the loss of 6 wickets. Wanted to go for a switch hit, attempted for a switch shot, reverse shot, but he found complete failure in playing that one. Ball is not coming onto the bat, and wicketkeeper corrects the ball behind the stumps. Down the leg side, that should be a wide. This is the second over of Chittaranjan. Pretty good over so far. Only 5 runs he has given in 1.5 overs. Crashed over nicely to the covers, in between the point and covers, but there is a protection. So single has been taken there by Sharath. 1 run has been added to the total. Left-hander Mehul Kamath is on strike. Chittaranjan for the 5th time in this over to Mehul.
That ball pitching right in the block hole, and Mehu just played a forward defensive stroke, gently pushing the ball to the offside, just giving the touch and going for a cheeky single. That was a very risky run. Fortunately, Sharath survives here. No damage done. Single has been taken in the last ball of the over to keep it in the strike. Over number 4 completed. After 4 overs, 25 for 6. So 5th over will be challenging over. 10 runs they are going to aim in this challenging 50-50 over. Sharath is still there. Sharath is batting on 14 runs after facing 13 balls with the help of 1 sixer. His strike rate is 107. Rohan Nayak is going to bowl the challenging 50-50 over. Let's see who will win this contest. Well, that's the first ball is a wide ball. Bad start for this over from Rohan Nayak. Extra run has come to the, will be added to the total. Again, 2 consecutive wide balls here. Rohan Nayak will have to improvise his bowling now. Direct and accurate bowling is very much required in the limited overs matches, because not only the runs are added, but also they should bowl one more extra delivery here. Sharath wanted to go for a switch hit, but found complete failure in playing that one. Ball is not coming onto the bat. Dot delivery there by Rohan Nayak. The meantime was Rohan Nayak. For the second time it's over to Sharath. That was a handsome looking cover drive. Played the shot all around the carpet, but Sharath Prabhu will have to just satisfy with only a single here. Sharath is playing sensibly because he knows how important is his knock. This is a must-win match. Very important and crucial match for Shivaji Park Tigers to be there in this contest. Converted that into full toss. The ball was directly going to the fielder. Even though the ball was going to the fielder, Sharath was very quick in completing that single. And Mehul is doing right job at the moment. He is trying to give as much strike as possible to Sharath because he is the set batsman, playing with full sensible innings here. Well, he goes for a big one, but this time there is a fielder. No, the ball has crossed the boundary ropes. Fielder was not able to judge the ball, and it has gone one bounce over the boundary for 4 runs. IGCL boundary from the bat of Sharath. Eight runs have come so far in this over in 4 balls. This is a sensible cricket, very intelligent cricket there by Sharath, and he is very quick in completing that. Oh, the decision has gone to the 3rd umpire here. The non-striker was rushing towards the danger range. Meanwhile, there was a very, very close one, close call, and hence the umpire didn't want to take any risk. He has referred it to the 3rd umpire. It has gone to the upstairs. Now 3rd umpire will check in the television screen. Have a look at the replay in the LED display.
it's recorded to play. So the technician is field umpire. What is your soft signal? So on-field umpire decision is not out. So it is a not out decision from the third umpire as well. बॉल बाकी है So last ball to go now. So very intelligent cricket there by Sharat Prabhu. He picks up a single in the last ball of the over. That was a challenging over for their team, and they had aimed to get score 10 runs in that over, and they have scored also. So altogether score is now 41. 5 overs completed, 41 runs for the loss of 6 wickets. Sharat is playing a brilliant knock here. 21 runs, batting on 21 after facing 17 balls. 1 boundary and 1 sixer for Sharat. Now slowly Shivaji Park Tigers are back on track. Even though they were losing wickets in the regular intervals, this man Sharat kept his cool and scored 22 valuable runs for his team, and he's still there. Last over to go now. Let's see how many runs will come in this final over. 41 runs for the loss of 6 wickets now. Shivaji Park Tigers. Sandeep will bowl the final over. Sandeep to Sharat. Sharat pulled away nicely onto the fine leg region. There is a fielder, long chase for the fielder there. Will have to wait for umpire decision, and it is a boundary signal from the umpire. Welcome boundary for Shivaji Park Tigers. 4 valuable runs from the bat of Sharat Prabhu, and Sharat Prabhu is now batting on 26. Total score at the moment is 45. And this is another one, but straight to the fielder. Unfortunately, Sharat is out. He was looking for a big hit, but not a fully controlled stroke, not from the middle of the bat. He has lost his complete rhythm there, and Rohan, the fielder, made a no mistake in taking that catch. So 5 innings from Sharat Prabhu. The young man has come to an end here. He played brilliantly, astonishing knock of 26 runs, contributed valuable 26 runs for Shivaji Park Tigers, his team, and now he is moving back to the pavilion here. Six runs. Score jumps up to 51 for Shivaji Park Tigers.
And this is another one. Back to back two sixers, consecutive two sixers. Vignesh has already scored 12 runs in just 2 balls. "57 runs on the scoreboard now for Shivaji Park Tigers." Score is now 57. Last over is in progress. So 58 is a target now for DB Strikers to win this match against Shivaji Park Tigers. Shivaji Park Tigers have set a huge target against their opposition side. At one stage they were losing their wickets, but after that Sharad Prabhu played brilliantly, which has helped their team to reach a respectable target here.
Hello. So welcome back once again after the innings break. दोन्ही ओपनर्स मस्त कॉन्फिडन्स जाऊन आयली ती या एक मॅच विन जाऊ का म्हणू. रोहन नायक आणि कौस्तुभ ओपनर्स जाऊन आदर्श भट ओपनर बॉलर. Play is the call. लॉंग ऑन तो ड्राइव केले बट थंय शरद प्रभू फिल्डर आशिल्ल्या 1 रन मात्र मेळ्ळा. फर्स्ट बॉल अंतू 1 रन मेळ्ळा. DB स्ट्रायकर्साचे अकाउंट ओपन जाला. 58 टार्गेट. लायक एक फिल्डिंग ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन लागी 2 रन सेव केला फिल्डरान. सो 2 रन ऍड जाल्ले. DB स्ट्रायकर्साचे वोट स्कोर 3. ऑल अराउंड द कार्पेट केलेलो असो लॉंग ऑफक वापस फिल्डर शरद प्रभून बॉल फील्ड केले. DB स्ट्रायकर्साक मेळ्ळे 1 रन. कौस्तुभ नेक्स्ट बॉल फेस करता आदर्शाले. विकेट कीपर जावन टीमाच कॅप्टन निनाद बोरकर काम करतस. मस्ट विन गेम शिवाजी पार्क टायगर्साक. किंग सर्कल नाइट रायडर्स हैदराबाद तांगेल फर्स्ट मैच तांणी लॉस्ट करून घेतिले बट ए मैच अंतू विन जाऊ का म्हणाले एक सिच्युएशन आयला DB स्ट्रायकर्स हैदराक. या पटी लायक एक कैच शरद सॉरी अथर्व पैन बारी लायक कैच धरला. मिड ऑफ रब्बिल बॉल मिड ऑफ रब्बिल फील्डर अथर्व पै बॉल ऑलमोस्ट ओवर द हेड ऑफ द फील्डर बत्तशिले बट ऑलमोस्ट फ्लाइंग लायक ए बर्ड जंप करून ते कैच डाइव घालून तागेले राइट साइड डाइव घालून कैच केलेलो आसा. सो फर्स्ट विकेट लॉस्ट बाय टीम DB स्ट्रायकर्स. बैट्समैन आउट जाला at the score of 4 runs. Like a brilliant piece of fielding, brilliant catch, and I would say that is the catch of the match. In fact, it's a catch of the tournament. So what a stunning catch it was. DB Strikers tangela first wicket anga palla. Wapas successful bowler Adarsh but continue करते सर last ball. वापस कैच जो चांसेस असा बट या पटी फील्डर आल माता वेर दोकून उबारला. लॉंग ऑफ दोकून शरद प्रभून धावणीवन चेस करून बॉल स्टॉप केले. अज्जी मध्ये फील्ड बॅट्समॅनान 2 रन धावन कंप्लीट केलेलो आसा. सो 2 रन ऍड जाल्ले ह्या ओव्हरांतू. फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट जाला. आदर्श भटान घालेले फर्स्ट ओव्हरांतू ಒಟ್ಟು 6 रन आयला for team DB Strikers. That means 52 more runs required. Varlala 30 balls antu.
मॅच नंबर 9 अंधेरी सुपरनॅचरल्स थाने टायटन्स दोन्ही टीमाच कॅप्टन्सा का टॉसा का तेरा आमगे ट्रॉफी सेक्शन अलग पे तरस अंधेरी सुपरनॅचरल्स थाने टायटन्स दोन्ही टीमाच कॅप्टन्सान येऊ का टॉसा का तेरा बट मम ओवर टू यू सेकंड ओवर गलुक बौलर पवन तेलंग इंट्रोड्यूस केला पडवे एम ओवर अंतू पवन तेलंग कसन करता म्हणून फील्डिंग अंतू चेंजेस करतस विकेट कीपर निनाद बोरकर तशींची बौलर पवन तेलंग सो पवन तेलंग इज ऑल सेट टू बॉल द सेकंड ओवर bowling from the stadium end like ball almost yorker and delivery म्हणत पाया लागेल बॉल एक रन धावन कंप्लीट केलेलो नेक्स्ट मैच अंतू थाने टाइटन्स विल प्ले अगेंस्ट अंधेरी सुपरनॅचरल्स यापेटी उबर मारला बॉल बाहेर वतकी पडो का I think it is a boundary. पवन तेलंगण गेलेले बॉल चिकी शॉर्ट जावन आशिल्ले लायक कोण पिक केले मुखार येवन लायक कोण रीड कोण लॉंग ऑन पेटयले वन बाउंस जावन बॉल बाउंड्री गेला 4 इंपॉर्टंट रन्स वैल्युएबल रन्स डीबी स्ट्राइकर्साक मेळ्ळा सो द स्कोर इज नाउ 11-1. नेक्स्ट मॅच खातीर टॉस जतस थाने टायटन्स आणि अंधेरी सुपरनॅचरल्स मध्ये दोन कॅप्टन्स आमगेल्या ऑर्गनायझर्स अलॉट आसती यापटी खंडित एक इजी कॅच आशिल्ले दोन फिल्डर्साची मागशी आशिल्ली ती बट फिल्डरान ड्रॉप केला सेकंड फिल्डर थंय स्लिप जालो तशें जावन एक लायक एक आसानसो मौका हांगा लॉस्ट जाला टीमाक 2 रन ऍड जातस डीबी स्ट्राइकर्स टीमाक सो थाने टायटन्स आणि अंधेरी नॅचरल्स मध्ये टॉस जातस ऑर्गनायझर तर्फेन जयेश तशींची मंदार हांनी टॉस करतस ती थाने टायटन्स आर गोइंग टू बॅट फर्स्ट सो दोन टीमांचे रेडी आसुका हे मॅच जातर कूडले नेक्स्ट मॅच स्टार्ट जाता सो एक डिस्कशन जाता सांगा शिवाजी पार्क टायगर्स टीमाच प्लेयर्स मध्ये या एक मस्त इंपॉर्टंट मॅच शिवाजी पार्क टायगर्स कहते काली फर्स्ट मॅच सुरवे राउंडात त्यांनी डिफीट जालेला तांगेले ऑपोजिशन किंग सर्कल नाइट रायडर्स जावन आशिल्ले लायक एक मॅच पळोवचें मेळ्ळा तांतू बट लास्ट मोमेंटांतू शिवाजी पार्क टायगर्स लॉस्ट जाले त्या मॅच सो ह्या मॅच डीबी स्ट्राइकर्स येद्र खेळतस लायक स्कोर आयला 58 रन्स टार्गेट दिला 26 रन्स शरद प्रभून स्कोर करून तांगे टीमाक एक लायक कॉन्ट्रिब्यूशन दिलेलें आसा सो 58 रन्स टार्गेट चेस करपाक हांगा डीबी स्ट्राइकर्सान दोन्ही ओव्हरांत 16 रन आयला
That means 42 more runs required in 24 balls. 24 balls to go, 42 runs required for DB strikers. Still they have got plenty of wickets in hand. खाली एक विकेट मात्र पडलास. आता नवे बॉलर रेडी जल्ला बॉलिंग गलुक थर्ड ओवर गलुक. दैविक नायक बॉलिंग गलता थर्ड ओवर from the Palava Stadium end. Pavilion end तकून गेल्यार बॉल वाऱ्यार आसा. भायर व चान्सेस आसा. शरद प्रभून लायक एक फिल्डिंग केलेलें आसा. बाउंड्री सिग्नल फ्रॉम द अंपायर. बहुशा बाउंड्री लायना भायर फील्ड केल्ले. तशें 4 रन मेळ्ळा हांगा. फर्स्ट बॉलांतू एक बाउंड्री आयला DB स्ट्रायकर्साक. लायक स्टार्ट म्हणून येता ह्या ओव्हरांतू. दैविक नायकान तागेल बॉलिंगांत इम्प्रोवायझेशन दाखोवपाक जाता. दीपेश शेणाय आणि रोहन नायक दोग जण मिडल ऑफ द क्रीज आसा ती. कौस्तुभ ओपनर बॅट्समॅन आउट जालोलो. बॅट्समॅन 3 बॉल फेस करून खाली 1 रन मात्र केलेला. दीपेश शेणाय लायक कोण खेळतस 6 बॉलांतू 14 रन ताण काडलेलो आसा. रोहन नायक 4 बॉल फेस करून 5 रन काडला. वापस ऑल अराउंड द कार्पेट खेळला. खंयची रिस्क घेनी. ट्रीट्स द बॉल ऑन मेरिट्स. हुगुर सिंगल काणो. स्ट्राइक रोटेट करतस ती. स्कोर बोर्ड मूव जातस. 20 runs jalla. Third over is in progress. 58 is the target. Like ball, flighted delivery. एक uneven bounce म्हणून येतं. बॅट्समॅनाक ताण एक्सपेक्ट केला म्हणजे बॉल येणी मस्त स्पीड आणि फास्ट राहील बॉल. सो बीट जाल्लो. बॉल विकेट कीपराला गेला. खंयची रन ना. स्कोर रिमेन्स ऑन 21. वापस एक लायक बॉलिंग दैविक नायकाला. 5 बॉलांत 5 रन दिला दैविक नायकाने ह्या ओव्हरांतू. So 37 more runs required in 19 balls. Target is becoming tougher and tougher. एक रन धावली ती 2 रन मारत की पळोवक ना. खाली 1 रन लायक फिल्डिंग थंय डीप स्क्वेअर लेग आशिल्ल फिल्डरान ओवर कंप्लीट जाला. सो आफ्टर 3 overs it is 22 on the board. हाजी नेक्स्ट मैच थाने टाइटन्स वर्सेस अंधेरी सुपरनॅचरल. थाने टाइटन्स टॉस विन जावन बैटिंग तांणी घेतिल्लो आसा. आनी पुरा जणाल खातीर हें अनाउन्समेंट. मुखावयली 4 मॅच 4 ओवराचे. कित्याक म्हळ्यार आमगेला की आतां वी आर रियली शॉर्ट ऑफ टाइम. 4 overs each side. No power play. 4 bowlers compulsory. आणि second and third over 50-50. 4 overs, no power play. 4 bowlers compulsory. Second and third over 50-50. But ma'am, over to you. So thank you Jayesh. Next match 4 overs जावन आसता. जयेशन ऑलरेडी सांगिल्लें म्हणजे प्रति एक बॉलराक 1 ओवर मात्र घालचे अवकाश आसता. तशींची 3rd and 4th over can be, I beg your pardon, 2nd and 3rd over can be 50-50 over and there will not be power play. Like shot like एक start over अंतु आयिल्स.
आदर्शाला फर्स्ट बॉलान तो चेक सिक्स आयलांग रोहनाल बॅटान आउच बॅट बॉला लागला तशींची नाथ बोरकर विकेट कीपरान कॅच धरला सो डीबी स्ट्रायकर्साच्या सेकंड विकेट इज डाउन विघ्नेश भाई बैट्समैन 16 बॉलांतू 30 रन्स जावकांग डीबी स्ट्रायकर्साक Deepesh Shana is still there batting on 15 in 8 balls. Chitranjan Prabhu आयला कई सारी आदर्श पटेल third ball of his quota. This is the second over of his spell and the third over of the innings. In fact, it's a fourth over of the innings. That was a very fine delivery there. The batsman played it defensively forward, giving full respect to the delivery, not for runs. He played almost a test cricket forward defensive stroke there. So no runs resulted, no runs taken. Score remains on 28 with 2 wickets down after 3.3 overs. Yeah, Patel like a shot, boundary. वापस एक तसले शॉट बॉल सीधा into the crowd 6 runs score 38 jalla equation is 20 runs required in 13 balls Hogura DB strikers they are coming back on track to come back into this game. 13 balls remaining, 20 runs required. एक एक्सपेन्सिव ओवर म्हणून येतांगा ऑफ स्टंप मस्त भायर आशिल्ल्या बॅट्समॅनान सोडून दिल्ल्या खंयचे मारचे प्रयत्न करनी बॉल भायर आशिल्ले मित्र अंपायरान वाईड म्हणून म्हणला एक एक्स्ट्रा रन ऍड जाल्ला सो आतां 13 balls onto 19 runs required. Okay, review of the Kelanga fielding side achana whether to check whether it's wide or not. Wide declared by the third umpire. Last 2 over back is 18 runs required.
ಖಾಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಳ್ಳಾಂಗ DB ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಖಾಲಿ 18 more runs required. Dhoni overs Sanikai. So must take hard target Manus. Ninad Borkar, captain himself, has come to bowl now. 10 runs they are going to aim batting side in this 50-50 over. 10 runs Kalli Monjalari Tangal score Pandu Jatta as per the rule of challenging 50-50 over. Misfield Jala ball square leg ashila fielder ala give shila but field koro jaini 1 run without any problem complete kela Dhoni batsman ana tashjavnu at equation jalla 17 more runs in 11 balls. Ninad Borkar will have to try something different now. Let's see what he's going to do. Sharat Prabhu is doing his job as a wicket keeper there. Full toss and it has gone out of the park. Score 48 जल है. Boundary and I think that's the end of the match, isn't it? एक रन जाओ का scores are level, just 1 run required. And that's the winning shot. So DB Strikers have won the match against Shivaji Park Tigers. Unfortunately, Shivaji Park Tigers have lost both the matches which they played in this tournament, and DB Strikers have won both the matches. दोन्ही टीमाक विनंती जलतीतली बग्गी ग्राउंड क्लियर करू जत जलारी आणि नेक्स्ट मॅच अंधेरी थाने दोन्ही टीमाचे कॅप्टन्सांक विनंती जलतीतली बग्गी फील्ड सेट करचे आणि तुमगेल बॅट्समॅन पेटोवचे खातीर.
सकट टीम कॅप्टनसांक विनंती तुमगेल सहकार जावका. फर्स्ट सेट ऑफ 4 मॅच 7 ओवरात जाल्ले मागीर आता आमकां 5 करना अशी 4 करपा पडटा असं जाल तितली बगी आमगेले पुरा क्वॉलिफाईंग राउंड्स पुरा क्वॉलिफाईंग मॅचेस आमकां आजी कंप्लीट करका. तशें जावन पुरा कॅप्टन जालां की हांव तुमगेल सहकार निमगून घेता. जाल तितली बगी तुमी फील्ड सेट कर न्हू मॅच स्टार्ट करका म्हणून. अंधेरी सुपर नेचुरल के एक्स्ट्रा प्लेयर प्लीज डगआउट में आ जाएं.